professor at University School of Management Studies, Guru Indraprastha University, Delhi. Professor Khatri is an alumnus of Kurukshetra University and has a PhD degree in organizational behavior and higher education from Guru Jamreshwar University of Science and Technology, Hisar. She is a trained and certified behavior analyst with specialization in psychometric profiling. She is an expert in the area of research methodology, scale development and validation, and TLS modeling. She is well versed with various software packages like Smart TLS4, R, MOS, SPSS, etc. She has been awarded as Best Professor in Organizational Behavior by ET Now in December 2019. She has also featured as Most Inspirational Women in August 2019 in the Inspirational Women category Academia by We Are the City. She has been conducting workshops in the area of research methodology, scale development and validation, higher order structural equation modeling, data analytics, self-assessment, personality assessment, behavior profiling in institutions of repute like NIT Kurukshetra, FMS DU, University of Kashmir, IITA, Punjab University, IMS, etc. She is also a recurrent resource person for psychometric testing with organizations like Indian Oil, Indian Army, and UGC HRDC. In her rich 23 years of experience in academia, teaching and research, she has published more than 150 research papers, many of which are published by Emmanuel Taylor and Francis and other national and international journals indexed in Scopus, Web of Science, and AGDC listing. Presented over 70 research papers in conferences and universities of Egypt. To name a few: Cambridge University, University of Melbourne, University of Scotland, University of Valencia, Zurich University, etc. She has, to her credit, 5 completed doctorate projects and 6 are in progress. Additionally, she has authored 6 books in the area of personality assessment, mind and management, and positivity. Thank you, ma'am, for your gracious presence. I request HOD Economics Department, Dr. Gaurav Agarwal, and HOD Computer Applications and Mahua, Ms. Sarita Bansalkar, to felicitate Professor Khatri with a sapling. With a sapling and a memento. Please come forward. Thank you so much for the kind words. I know Sumitha now more than a decade, and I am happy to share with you that multiple projects we've done together, apart from the PhD, of course. But I know MAIMS through her because she's my eye to MAIMS. And knowing her, I know that all of you are very, very keen on research because I see that keenness in her all the time. I mean, it's been quite a few years to her PhD, and yet she's always motivated, let's do something new, let's do something innovative, and we've together as a team progressed. So I understand taking from there that I'm sure all of you also are keen on research. And as far as I'm concerned, I thrive on research. I don't know, in most of the private colleges they give you options. So they give you options of teaching, research and administration and a combination. So the university doesn't. If they were to give me this option, I would definitely go in for 100% research. Initially, when I started with research, I was as skeptical as new scholars because I also didn't know anything. And thanks to my mentors, I have
been very blessed. I think I have the best teachers in the world, so gratitude is due to them. I always start my session by saying a thank you to God that I'm sitting here in front of you. Thank you, Mames, for having me over. Thank you, Sumedha, for always standing by. And thank you, Dr. Neeraj Kaushik, my mentor, my guide, my guru in every possible way. Whatever I know of today is because of him. And thank you, Dr. Atul Shiva. PLSM was introduced by him to me, and we were a team together with Dr. Neeraj Kaushik when we started our journey of research teaching. So, thanks to all the participants here also, despite the rain, despite all your, I know the university started admissions and everything, keeping in mind you're still here, I'm really, really thankful to each one of you. So, I believe this is the fourth day of FDP. So, the good part is that I believe that you're okay with Hindi, English both? Great. So, I know 5 languages, but yeah, Hindi, English is comfortable mostly. With the 4th day commencing today for research, I'm very sure you are clear on concepts, constructs, items, variables, yes? Okay, so my question to you, what is a concept and how is it different from a construct? To ease it out, क्योंकि volunteering हमारे देश में है ही नहीं, हम पे जब तक सर पे ना पड़े हम करते नहीं काम. So ये आपकी बात नहीं, कल्चर की बात है. इसमें everybody has to answer. So we're going to start, and the questions have to be answered everywhere. So each one of you has to answer. So let's be ready with our answers, right or wrong, whatever it is. I must tell you that there is no base answer, or there is no correct answer, or there is no shoddy answer. Everything that you say has a meaning, and when you say it, we can rectify it and put it under the bracket of what is right in terms of research. So बोलने की कोशिश जरूर कीजिए. गलत सही, I know no one to judge, and neither is anybody here judging you. So गलत बोलिए, no problem. As a teacher, we should all learn to speak. And even if it is wrong, it is fine. Let's learn together. And it will be a learning that I will also be doing with you. So let's start, ma'am. Can we start with you? What is a concept? Concept are in general. Like I take something in general is satisfaction, job satisfaction. Job satisfaction is a concept? Concept means say for example we take a topic. Topic is a concept. अब क्या होता है कि कई बार चीजें समझ आ जाती है, मुझे पता है आपको आता है, मगर उसे बोलना और उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है. So let me see who can differentiate and tell me what is the difference between a concept and a construct. Yes. A concept is a broad topic or a base, whereas a topic is specific. Concept is general and topic is specific. Yes. It can be a generalized phenomena, and on the contrary, a construct may be how you Take an example. What is a generalized phenomenon? Satisfaction is a subjective term. It is a phenomena as well. It's not a subjective term, but yes, it is a phenomenon. It is a phenomena, but when we say customer satisfaction, because we are formulating it, we are trying to calculate how it is being, how you derive. So concepts can't be calculated, can't be calculated, isn't it? Ma'am, I don't think so. Okay. That. Yes or no? Can concepts be calculated? Yes. Okay. Concept can be calculated? Yes, Everybody with me? Everybody with that? Concepts can be calculated. You can predict the phenomena. You can predict the phenomena. It is not actually. You can predict a phenomena? This statement is incorrect. We can never predict a phenomena. By observing, by understanding the experiences. I think चौथी workshop में यहीं से start करते हैं. What is the difference between a concept and a construct? Sumita is not supposed to speak. Okay, so go ahead. Concept is too abstract. Yes. Something like commitment. And when we try to measure it, we boil it down. Can it be measured? No, we can't do it. Very good. Then why do we study? Because Measure तो हो ही नहीं सकता. we go measure it. No. We
can't measure the concept. I tell you. Let's start. The online participants, I hope I am visible, my slides are visible. Concept doesn't become a construct. No, we are too much confused. Let's come up. अच्छा, आपको लग रहा है concept becomes a construct? एक ने बोला concept becomes a construct, एक ने बोला concept can be calculated. We can't break the concept. It is a abstract terminology which has infinity terms within it. Infinity. So I don't know how you're supposed to measure it. Okay, so let's start. Let's understand. Let's take an example. How many of you from OBHR? Just raise your hands. Quite a few. Finance. Okay, and IT and other fields. IT. Okay, 3 or 4. Okay, so I'll try and take basic examples so that it is understandable to everybody. But in case you find it difficult, you can ask me. I will talk in your language. That's okay. We can talk in IT. We can talk in finance. आप लोग इधर आ जाइए तो मेरा गर्दन उधर मिल जाएगी. अच्छा तरीके. Okay, charging point. No problem. Okay, so let's start with. हम सबको communication समझ आता है? Everybody understands what is communication? Okay, for all the intelligent ones in the class who said that we start with the concept, right? So communication, is it a concept or is it a construct? Concept. Okay, so when we study communication, we have multiple things that we can study under the umbrella of communication. So you may have communication process, you may have mass communication, you may have verbal communication, you may have communication skill, you may also have social media communication, you may have digital communication, and the umbrella line goes on. Are you there with me? Is everybody with me? So what we've just talked about is a very abstract term. It's just a term. It's not a topic. It is not measurable. It is not something that I can calculate. It is just a term which is giving me the umbrella term to club all the things that are related to communication, so that all the aspects related to communication can be clubbed together. Are we there? So whether you want to talk about process, you want to talk about mass communication, verbal, non-verbal, skills, you may anything under the word communication, anything under the umbrella of communication will be included in this. Now, how many of you are doctorates already? Please raise your hands. अच्छी तरह थोड़ा. Okay, so everybody is a doctorate here, almost. So all the doctors sitting here, when your research scholar comes to you and says, "मैम मुझे ना communication में PhD करनी है," तो आप उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात. Communication is broader term, where there could be so many topics, there could be so many things which comes under. Perfect. We already said that there is an umbrella term which is encapsulating multiple things. Suppose what would you tell the research scholar कि क्या करे? She got the guide and she comes up to you and she says, "Ma'am, I would like to work under the purview of communication." So what would you tell her? What is the first thing that comes to your mind that you go and do? Again, area is OBHR. आपने कभी ध्यान दिया है कि okay, let me share my experience with you as a guide. The first thing that people come to me and say is, "Ma'am, you are an OBHR professor." एक तो OBHR इकट्ठे नहीं होता, OB अलग, HR अलग, ठीक है? But कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में बहुत चीजें ब्लर है. तो OB and HR professor, and we would like to do PhD with you. And I asked them which area, so they said, "Ma'am, OBHR." OB की अपनी किताबें हैं, HR की अपनी किताबें हैं. OB में 15 चैप्टर है, बेसिक रॉबिन्स की बात करें तो. HR के टेस्लर में 15 चैप्टर है, बेसिक की बात करें, just the basic book, the basics of HR. So I
I tell my students as to, okay, so we've selected an area here and the area is OB or the area is HR. So since we're talking about communication, let's talk about OB. So she came up and she said, okay ma'am, we're going to do work on OB. Now what do? I said, go and pick up a book on OB and see which concept of OB would you like to work on? Are you there with me? So all the chapters that are included in the subject OB are called as concepts of OB? Yes or no? The syllabus is made up of concepts, isn't it? So you do the COPO mapping. That's the conceptual mapping. All of us have been doing it. So there is where you get the concepts from. Okay, fine. So she comes up and says, ma'am, communication chapter is very interesting. I would go with communication. So we come on the concept of communication. OB has motivation also. OB has leadership also. OB has many other aspects also, isn't it? So we may talk about group dynamics, team building. There are multiple aspects that OB would have. She picked up a concept from the subject area of OB, which was communication. Now, so she said, okay, I said, okay, fine, go and read the chapter on communication and come back again. So she said, communication is so vast. So the entire chapter is about 20-25 pages and it talks about process, it talks about verbal, it talks about types, it talks about barriers, it talks about semantics, it talks about so many things. Now what do I do? So I said, okay, fine, go to the newspapers, magazines, go to conference alerts and find out communication से related problem क्या चल रही है. Let's understand problem क्या चल रही है. इस area से related problem क्या चल रही है. So when we did our work, so she came up and she said, ma'am, the problem is that students are not getting placed because they are lacking communication skill. There are too many articles in the newspapers which are saying that today even the professional students of MBA BTech are not employable because they are lacking communication skill. So I asked her, so do we talk about the process or we talk about the verbal, non-verbal, or we talk about the skill? She said, no ma'am, I'm very confused, they are all interlinked. Now what do I do? I said, okay, now you go to Google Scholar to start with. Of course, break it up to Scopus and Web of Science. We step up. So first चीज is Google Scholar, let's not negate it. So Google Scholar में जाके डाल के देखिए कि क्या काम communication skill पे already हो गया है. Now what she's done is she's come up and chosen a specific area which is less in abstraction and maybe measured in a hidden way. Communication I can't measure, but communication skill I can still measure, not directly, but probably I would need other variables, other support systems to measure my communication skill. So she went back to Google Scholar, WS and Scopus and she says, yes ma'am, lot of work needs to be done in the area of communication skills. We are getting very few papers, especially in the professional setup. So why am I repeating professional setup? Because there is where you would get your sample also from. So your sample and your topic go hand in hand. You don't select the construct and then you decide the sample. The problem area is a tie between the sample and the construct. So that is where you would pick up your the ideology that you would start your work with. So she said, ma'am, fine, I would like to work at the communication skill. I've got my idea. That process में बहुत काम है. Social media communication of course is new. We can work on it. But the problem area is that students in the professional setup are not having the requisite skills, and we should work on it. Since I'm a teacher and I would like to work on the skill sets of my students also. NEP 2020 had come that time. So NEP says skill-oriented courses, skill enhancement techniques. So again, the reason, the gap, that no work has been done in the skill set, and that is where from the concept of communication I will select my construct depending on what is the gap area in the market, what is the problem area in the public domain, and also what is the research gap in terms of what people have done in that area. So when you are targeting all these three areas, now you come up with your construct, which is your communication skill. So now we come up to a new word which is called as a construct. Now who's going to tell me what is a construct? Let's understand what is a construct. So I asked her, the story goes on, I asked her, okay fine, you are
you've got your communication skill, now what? She said, ma'am, I don't know what to do. Now, I said, you need to identify the entire family and the set of variables that are related that we need to study communication skills. I repeat my statement. We need to understand the entire family of variables and other constructs that we need to study to understand communication skills. Also, the second point objective should be how should we define our communication skill? What has the research talked about in communication skill? Yeah. So when we are talking about the construct, we said we are talking about two things. We are talking about two things. One is the entire family of variables, constructs, whatever you may say, that may be linked to communication skill, because I want to study communication skill in totality, so I need to know everything that is in the family of communication skill, plus how do I define communication skill. Are you there with me? Now when I talk about the construct of communication skill, who's going to tell me what is an antecedent? Communication skill के antecedents क्या हो सकते हैं? Literacy level. Literacy level may be your literacy level तो नहीं, skill. Literacy तो आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी सेम है, skill सबकी फर्क है. Maybe stage exposure or Okay, that may not be a very important construct variable, but चलिए, I'll help you. Teacher effectiveness. Will it impact communication skill? अगर हम English communication की बात कर रहे हैं तो newspaper reading. Will it impact communication skill? Seeing electronic media in English as a medium of language. Will it impact communication skill? Does that define communication skill? So हमने क्या बोला? Teacher effectiveness. और क्या बोला हमने? Reading newspapers and watching serials which are in English would impact the communication skill of any student. So we've already just come to 3 constructs. I told you we have a 2-point objective. 1, to get the family of constructs together, and second, to define what is our main construct, right? So we just got this family. If there is good communication skill, what is going to happen? What is going to happen if the students in your class have good communication skills? Employability. Very good. So employability is first. What else? Personality, develop personality, obviously. Communication skill has nothing to do with leadership skills, but okay, fine, because we've all studied leadership, isn't it? They are trait theory, behavior theory, blah 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 theory. So I'm not getting into that Pandora's box. Let's talk about what is the exact thing that comes to my mind when I talk about communication skill. Personality, good personality is one thing. Second is employability, because we're talking about students. What else? Confidence, very good. So confidence. Are you there with me? But does that define communication skill? Convincing people. Okay, now she's talking on a different, absolutely different tangent. Convincing people should be an outcome of good communication skill. Yes or no? Yes. It should be an outcome. तो ठीक है, हम यहीं पे बात कर लेते हैं. Convincing people should be the outcome of communication skill. But what is communication skill? Does all of this define communication skill? तो हमने पहला ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर लिया, which is, of course, this is partially giving the paucity of time. We are going only by this. आपने जब रिसर्च करनी है तो टोटल करना है. हमने क्या किया? We got to know the antecedents and the outcomes. आपको बनाया होगा SLR में ADO framework. Yes or no? Have you read the ADO framework? Any of you? No. So your faces speak louder than words. पढ़ा है आपने? अच्छा चलो बताओ. Okay, what is the difference between A, D and O? Ma'am, A stands for antecedents, O is the outcome, and D is the process in between this. I am not getting No. that exact word. No. ADO is antecedent,
Decision and problem. अच्छा ठीक है, decision. That's the terminology used. Antecedent, decision and outcome. क्या होता है decision? Decision is the process that takes place in between. प्रोसेस तो ये नहीं, प्रोसेस तो मैंने अभी आपको बताई, प्रोसेस तो इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, यस और नो? प्रोसेस तो ये हुई, इसका मतलब प्रोसेस तो सेम हुई, पाथ मॉडलिंग हुई ना, पाथ की बात कर रहे हो आप प्रोसेस में, यहां से शुरू हुए इनपुट प्रोसेस एंड आउटकम, दैट मींस प्रोसेस इज सेम लेवल, पाथ लेवल, हम प्रोसेस की बात नहीं कर रहे। डी में क्या होता है, व्हाट इज डी? Is it relationship? रिलेशनशिप तो अच्छा चलिए रिलेशनशिप बना ले पहले, तो ये कहानी क्लियर करें। Is it something like should we wait now because आपका ऑनलाइन भी बंद हो गया होगा? अच्छा अब आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी तो मैं कैसे बताती हूँ? ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्लैरिटी ये है। is it something like I don't know बोर्ड पे कर ले। हाँ Do we have a black pen? It's there. So उठना with all these tasks is such a task. I don't know how your online participants are going to match up to it. चल रहा है? What do they want me to do? They want me to lose weight. I'm trying desperately, and that is what James wants me to do. Okay, I'll just try here. Okay, we just talked about A, D, and O, right? So antecedents, or better known as IDVs. What is an antecedent? No, that leads to that is ये चौका दिया ना चौका। that is आप antecedent बताओ ना, मुझे ये नहीं चलता, हम नहीं मान रहे। इसकी वजह से occurrence हो रही है। ये पहले आ रहे हैं बाद में आ रहे हैं, क्या हो? पहले पहले आ रहे हैं, इतना समझ आ रहा है हमें कि ये पहले आ रहे हैं। पहले आ रहे हैं वाला मतलब क्या है? अपने आप में अकेले खड़े हैं, पहले आ गए हैं तो अपने आप में अकेले खड़े हैं, इन पे हम डिपेंडेंट हैं। Are you there? So whenever you are talking about all the IDVs put together, we are talking about antecedents, right? So when we were talking about communication skills, we said teacher effectiveness is an antecedent. Greater the teacher effectiveness, greater will be the communication skill. So what was our model here? The model was teacher effectiveness, newspaper reading, and watching serials, movie serials, whatever. Is everybody with me? ठीक है? Antecedent is a IDV जिससे एरो निकल रही है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और उससे जा रही है किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जिस पे हम स्टडी करें, अननेम्ड वेरिएबल अंडरस्टैंडिंग। Now one thing that I must tell you is whenever you start your research, you are married to your dependent variable. You have to get married to your dependent variable because that's where the entire theory, entire the entire story is going to revolve. So you should be very clear on your dependent variable. Whenever you're talking about your PhD, आपसे सेकंड चीज लोग यही पूछेंगे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था। सो जो मेन वेरिएबल है पूरे मॉडल का, दैट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? सो वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल एंड व्हाट इज द आउटकम? सो द आउटकम्स वर, व्हाट वर द आउटकम्स? वी सेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वी सेड एम्प्लॉयबिलिटी एंड वी सेड कॉन्फिडेंस। अभी के लिए यही रह दो फॉर ईज पर्पसेस, और भी बहुत सारे होंगे, अभी हम ईज के लिए फॉर एग्जाम्पलिफिकेशन वी आर टेकिंग दिस। सो इफ आई टॉक अबाउट द IDVs, these are the IDVs? Yes or no? Yes. What is the outcome? PD is an outcome, employability is an outcome, confidence is an outcome. One of our friends here said this is decisions. What is decisions? Process. Process तो ये पूरी है। it is not a process. It can be explained like antecedents are the stimulus of something. Decision is something that goes in my mind, like cognition, or I learn the communication and then I have got an No, outcome. then again it becomes a path. Cognition to communication is a path. Cognition is an independent variable of communication skill. The better I comprehend the language, the better I will be able to improvise on my communication skill. तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या है ये? आप simply इसको technically research methodology calls it decision. We will call it definitions. Are you there with me? For each purposes. Now, how can I define communication skill? If my vocabulary is good, I have good communication skill. If my grammar is
Have you got it? So what are we talking about? Now the story goes that the student said, ma'am, these are the antecedents, these are the things which are prelude to communication skill. Then there are certain outcomes which come after communication skill, and these are, some people are also talking about what is communication skill. So there are three things. What leads to communication skill? If there is communication skill, what will follow? And third is, what is communication skill? Are you there with me? While formulating a project or a model or a thesis or whatever we are doing in terms of research, we are basically talking about these three things. These three things are mandatory. So when we are talking about definitions, I said okay fine, हमारे को जो ल्योर रहती है वो ये रहती है कि जल्दी से क्वेश्चनर बन जाए और डेटा कलेक्ट हो जाए। यस और नो? बस क्वेश्चनर बना दो किसी तरह। क्वेश्चनर किसका बना दो? किस चीज़ का क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन पूछें? तो हम कुछ भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे कि if I as a student have to answer, my communication skills will help me gain employability. My communication skills यहाँ से राइट देखो ना So we were talking about antecedents, teacher effectiveness, RN and WS, and all these were outcomes. Now we came to definitions. Now definition में I asked her, you want to work on communication skill, but what is communication skill? Go and find out what people have to talk about when they say communication skill. So she went up and researched all the papers that were defining communication skill as. Some authors said if there is good vocabulary, we can say that communication skill of that person is fine. If there is better syntax, if they are grammatically very good, if the grammar के marks अच्छे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी communication अच्छी है. If we talk about whether the spellings are good, that is where we can say that the communication skills of this particular student is very good. So I said, what should we do? There are different authors talking about different directions. What should we do? She said, ma'am, maximum of the authors are talking about three things, that is vocabulary, syntax and spelling. And I have also found out a paper which says that if you are covering vocabulary, syntax and spelling, we are able to 80% identify with what is communication. So fair enough? Going by that citation is our savior. आप ट्रम्प कार्ड है रिसर्च में citation, तो जब citation मिल जाए उसके बाद दुनिया जो मर्जी बोल लो, कोई फर्क नहीं. Citation and logic. You have to support it with logic. So we said fine, we are going to go with vocabulary, syntax and spelling. What is vocabulary, syntax and spelling? These are the directions under which communication skill was defined. Are you there with me? Directions under which communication skill was defined. So we talked about vocabulary, syntax and spelling. But are these measurable? No, they're still not measurable. What do we do to measure them? Again, go up to your first instinct, make up the questionnaire. So we go with, say, 3 questions that are pertaining to vocabulary, 3 questions that are pertaining to syntax. I'm just using an example, okay? So this is not exact. We're just taking an example, and we take another set of 3 questions which are talking about spellings. Are we there? So now what are these questions called as? These questions, anybody? They are called as? Height. Can they be called as variables? No. What? Yes, it can vary. It can vary. You can say something else, she can say something else, she can say something else. रिसर्च में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि नामकरण ठीक से नहीं हुआ और हर चीज़ का एक ही नाम है. तो हम अपनी डिस्टिंक्शन बना रहे हैं आज ताकि आपको कभी भी परेशानी ना हो. They are variables, but what kind of variables are they? They are called as observed variables. What is it called as? These are observed variables. Do you understand why are we calling them observed variables? Because on a scale of 1, 2, 3, 4, 5. On a scale of 1, 2, 3, 4, 5,
Likert scale. When the scale is an anchor point to measure an observed variable, it is called a scale to measure the question, only the question. बट हमें तो कांस्टेंट भी मेजर करना है, जिसके लिए हम स्केल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल टर्नओवर इन टेंशन का स्केल और लिकर्ट का भी स्केल है. तो ये क्या है दोनों चीजें? लिकर्ट हैज गिवन यू एंकर पॉइंट्स टू मेजर observations on the basis of your questions that you ask in your question. Are you there with me? Similarly, semantic differential is a scale which gives you anchor points. Pooja Khatri's session, good, bad, opposites you put together and put a scale 1 to 7 in between. People can answer differently. Are you there with me? So it is again giving you an anchor point. Pooja Khatri's session was good. Yes, no. That is where you're giving again an anchor point to measure the observed item. Are we there? So that is whenever you're talking about this 1, 2, 3, 4, 5 is just an anchor point. So whether we're talking about Likert, whether we're talking about Gutman, whether we're talking about semantic differential, whether we're talking about dichotomous, yes, no, whether we're talking about an open-ended scale. Open-ended क्या होता है कि आपने कोई भी 1, 2, 3 anchor point नहीं दिया, आपने सिर्फ पूछ लिया कि how was the session, and each one of you writes in a paragraph, and what Sumedha does is she clubs all that paragraph. तब परसों ही हुआ है qualitative, उसकी transcript बनाओ and Vivo पे डालो, मजे से themes निकालो and you got one paper done. So word frequency से पता चल जाएगा कि actually क्या था वर्कशॉप के सेशन का आउटकम और कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा फील हुआ वो आपका हाईलाइट होके आ जाएगा. Everything in just a diagram, and of course you can do cluster analysis, you can do thematic perceptions, multiple things that you can do with qualitative research. So that's where you may have an open scale. Open scale is where you are just asking, where you're going in for qualitative research. But we are into descriptive. हमें cross section से बहुत प्यार है क्योंकि हमें smart PLS run करना है बस किसी तरह. ये एक प्रॉब्लम है हमारी, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे से सेपरेट नहीं हो रहा है ये बात. तो इसलिए हम तो एंकर पॉइंट लेना पड़ेगा हमें तो एंकर पॉइंट हम कुछ भी ले सकते हैं. येस, नो, 1 to 5, 1 to 7, 1 to 9 और प्रॉबेबली सिमेंटिक डिफरेंशियल और प्रॉबेबली व्हाटएवर वी टॉक अबाउट. ये मैं इसकी डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ. नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है ना, ये आप कर चुकी हो 2 बार क्योंकि डॉक्टर अतुल शिवा इज माय गुरु अगेन. आई टोल्ड यू दैट, सो आई नो दैट ही वाज देयर yesterday, so he वो रखा है, so I'm not touching that. So now we said these are called as observed variables. If you talk about the smart PLS thing, they are also called as indicators. In smart PLS literature, you will find that people use the word indicator. Are you there? So indicator, observed variable, items, questions, all one and the same. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सब एक ही चीज है, ठीक है. Now suppose I have these 8 questions and you are in the class and I give this questionnaire to each one of you and you mark something or the other depending on your perceptions of the workshop or about communication skills that you had. And now I have got some data, right? Now on the basis of that data, whatever people have answered on question 1, question 2, question 3 for vocabulary, can I get an average value for vocabulary? Can I speak something about vocabulary? For example, somebody marked here 4, somebody marked here 3, somebody marked here 4. This was one respondent and there are 100 respondents. ठीक है? तो इनकी एवरेज से पता चल जाएगा पूरी क्लास का क्या है vocabulary का सेटअप in terms of their perception. पता चल जाएगा? So the easiest way to get one value, numeric value, क्योंकि हमें तो generalize करना है ना, हमारी PhD generalizable होनी चाहिए. तो one value निकालने के लिए, the value I say is x1. Can I calculate x1 on the basis of what are the values of question 1, question 2, question 3? Can I do it? All you people, the simplest is take an average, question 1, 2, 3, add and divide by 3. That's the preliminary method. But Smart PLS, Amos and most of these robust softwares, what do? They run algorithms, mathematical algorithms and give us a value on the basis of some more robust calculations over and above the mean value. Mean value is not very descriptive. We come up to algorithmic values which will help us to get values for x1, similarly for syntax x2 and similarly for spelling which is x3. Are you there with me everyone? Are we in sync? Now that we said, me and my scholar decided along with the focus
focus group. What is a focus group? हम जब कोई बात कहते हैं तो कोई नहीं मानता. माने भी क्यों? एक जने की बात क्यों माननी चाहिए हमें? मगर अगर 5-6 दिग्गज एक बात कहते हैं तो सब मानते हैं. Yes or no? That's how the society moves. So you take expert groups, 4 or 5 people, ask them. That is also to check your robustness and validity, that whatever you're doing is correct. So you ask them whether we should measure communication skill through vocabulary, syntax and spelling, and they said yes, these 3 are sufficient to start with. Later people can take any kind of definitions, but we will go with this definition. So on the basis of the focus group, me and my scholar decided to call it that we will say communication skill is measured under 3 directions. Why do we call it directions? Because these were given to us by literature review. Authors have given this. I have not coined it. Some other persons have talked about it. These directions in technical methodology terms are also known as dimensions. Are you there with me? Also they may be called as factors. अब रिसर्च की एक और प्रॉब्लम आपको बताती हूँ. एंटीसीडेंट को भी फैक्टर्स कहते हैं. बट एक छोटा सा चीज डिफरेंस है यहाँ पे, वो क्रिटिकल फैक्टर्स लीडिंग टू होता है और यहाँ पे फैक्टर्स डिफाइनिंग होता है. आर यू देयर? सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टीचर इफेक्टिवनेस एंड न्यूज़पेपर रीडिंग एंड सीरियल वॉचिंग, they are critical factors leading to communication skill. When I am talking about vocabulary, syntax and spelling, factors defining communication skill. So one is coming from the D and the first one is, the former one is coming from the A. Does that distinction sound clear? So but what do? We fixate ourselves to the word factors and get confused and ruin our projects to the max extent. So we're not going to ruin it, we're going to see the work behind it. If they are leading to, then they are antecedents. If they are defining or they are constituting or they are dimensionality, the word dimensionality, there we would take up as constituent factors which are defining communication skill. Is everybody with me? So now I have a value for dimensions. x1, x2, x3 हमारी value आ गई है. Is there any query till here? x1, x2, x3 value आ गई है. Now this value, on the basis of value of x1, x2 and x3, is this a direct value or it is a hidden value that is dependent on question 1, question 2, question 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9? It's a hidden value. Why do I say hidden? Because there is some algorithm that is going behind the software and it is giving me a value. I don't know how it is coming, and it's a hidden value which is hidden behind the mathematical operations of the software. So this hidden value, hidden का एक और synonym होता है latent. Yes or no? So I would also call this particular. Is this a variable? Vocabulary, syntax and spelling? Yes or no? Yes. थोड़ी strong वाली yes or no चाहिए. Yes. Yes? ठीक है. अब इस वेरिएबल को क्या करेंगे? ये भी वेरिएबल था, क्वेश्चन 1 भी वेरिएबल था, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इस वेरिएबल को कहेंगे latent variable. Why? Because it's a hidden variable which is coming from somewhere else, from the observed value. So I would also call it latent variables. Are we there? Now this was step 1. This was step 1 of calculation. And now I want to go to step 2. What is step 2? Ultimately, my main काम was communication skill. So now, my question to you is, just as we calculated x1, x2, x3 with the help of values that we obtained, observed values directly from the respondent, that is why they called as observed, can I use x1, x2, x3 to get a value x for communication skill? Is it possible? Yes or no? Yes. Yeah. You have to answer. You can be wrong. Is it possible to get a value x? Yes. Great. So this value is step 2 latent variable value. अब ये तो बहुत मुश्किल है. Step 1, step 2. इनका नाम ही रख देते हैं. हम इसको कह देते हैं ये step 1 पे है, lower order पे है, वो higher order पे है. Order is second. It is on a higher order. Are we there? Are you everybody there with me? So what does this become? It becomes higher order construct, higher order latent value. Have you got the logic behind it? And what is this? It is
third order construct. Why? Because step 1 पे हमने x1, x2, x3 calculate किया था, and on that basis we went up to the higher order. So can I calculate communication skill of the class? Now my question to you is, you have a query? Yeah. For communication skill. Similarly, now let me. I got a question. You're talking about PE, NR, and WS also. They will also have their own latent variables. क्योंकि आपने PE को कैलकुलेट करने के लिए 5 क्वेश्चन पूछे होंगे. उन क्वेश्चन से बना PE की वैल्यू, फिर बना NR की वैल्यू, फिर बना WS की वैल्यू, अपने अपने सेट ऑफ क्वेश्चन से. लेटेंट वेरिएबल पूरे मॉडल में बनते हैं, हर कॉन्स्ट्रक्ट में बनते हैं. अब आप मुझे बताओ, इस वाले मॉडल को कंप्लीट करते हैं पहले. ये देखिए, लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस मॉडल. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दीज बीइंग एंटीसीडेंट. ये टीवी है, ठीक है Ma'am, I need some more clarification on higher order and lower order. we'll just come to it. Let me just tell her as to what is happening so that we understand what is actually behind the scene क्या चल रहा है. Smart PLS works on a system where all the variables are calculated simultaneously. It is not कि आप TE पहले कैलकुलेट करते हो, फिर WS कैलकुलेट करते हो, फिर CS. नहीं, सारे इकट्ठे एल्गोरिथम उसमें चल जाएंगे. Are you there with me? Suppose TE को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए आपने 3 क्वेश्चन पूछे थे. Whenever we are talking about SEM, the boxes represent items. So question 1 will come in box. Arrows represent relationship and Ola represents construct. Whether at the lower order or the higher order. I'll come to your question of lower and higher order. अभी यहाँ तक clear है? So when you're talking about this, I have just made, these are 3 questions that I will ask, 4 questions that I will ask for TE. Similarly, for RN I will ask some questions. I have no space, so I'm not drawing the dabbas, but these arrows indicate that they are leading to some questions. Similarly, there are 2 questions for WS, 2 questions for CP, 2 questions for employability, 2 questions for PT, 2 questions for confidence. Are you there with me? Now, when I run this on my software, will I be getting a latent variable for each of the constructs? Yes or no? Communication skill was actually a function of 3 other smaller constructs, which in turn had their own 3 questions each. So, in the model that is displayed on the board, we have one higher order construct, that is communication skill, and all others, since they are measured directly from the observed variables, they are lower order construct. Remember this? Remember lower order construct? Why was vocabulary, syntax and spelling a lower order construct? Because it was measured directly through variables. So in my model here, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lower order construct plus 3 of communication skill. So 9 lower order construct and only 1 higher order construct, that is communication skill. Now ma'am, when we are running the model, all the latent variable scores you will get on the screen in one go. So all the latent variable scores are getting calculated, and all the later processes, just as you defined, processes and relationships and the hypothesis are going to happen once we have the latent variable scores. Now then we will compare how does one latent variable score impact on the other latent variable score. But that should be between ADO. The arrows between ADO is going to decide the hypothesis. Is it clear till here? Coming back to your question, yes, you wanted to ask something? Actually, what I've gathered from all this is that the terms which actually define the latent variable, they constitute your lower order construct. Am I right? Am I understanding in the right direction? Latent variable is calculated at 2 stages. At stage 1, step 1, when we are measuring directly through the questions. Observed variable से जब calculate होता है तो हम उसे कहते हैं lower order construct और latent variable step 1. Are you there? जब dimension से आप बड़े order पे जाते हो, step 2 पे जाते हो तो उसे कहते हैं higher order construct, which is again you will calculate the latent variable score using x1, x2, x3 to get x. Is that okay? So there is a difference in lower order construct and there is a difference
example and then you will answer all the questions. I'm going to draw something on the board and you will answer all these questions so that it is clear to you. So, Excuse me, sorry to interrupt. Yeah, no problem. Ma'am, between the lower order and the higher order, there are first order and second order and third order as well. I told you research has confused us tremendously because they have given their names. Whatever a country feels is correct, वो अपना नाम दे देते हैं. You go to the German literature, they will say LOC, HOC. You go to the American literature, they will say first order, second order. You go to the Australian literature, they will use both. And Indians are most confused हम बीच में हैं क्योंकि हम सबको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि वो क्या है. इसीलिए मैंने आपको स्टेप 1, स्टेप 2 बताया. अमेरिकन कॉन्सेप्ट, स्टेप 1 इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. आर यू देयर? और ये जो आइटम्स कैलकुलेट हो रहे हैं वो जीरो ऑर्डर. Zero. समझ आ गई? तो जीरो ऑर्डर में तो आइटम की वैल्यू आई, फर्स्ट ऑर्डर में एलओसी की वैल्यू आई और एचओसी की वैल्यू आई सेकंड ऑर्डर. सो कम्युनिकेशन स्किल अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लिंगो इज a second order higher order construct. Are we there? Is that okay? So 0, 1, 2 is similar to LOC, HOC, item, LOC, HOC, observed variable, latent variable 1, latent variable 2. They're all the same. Is this clear? Till here? Any query? ये base है. अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आप सॉफ्टवेयर पे you will it will take me 10 minutes to take you to the software. One more thing. हाँ, एग्जाम्पल I'm giving. एक आप टेंशन ही ना लीजिए. This was a basic example. I'm going to go on a bigger example. For each one of you, I must put it. So it's 11:11. Make a wish. I am in love with numbers. I'm in love with mathematics, and I'm in love with numerology. So 11:11. Make a wish. You are going to do great in life. Be happy. So when we're talking about these constructs, whether lower order or higher order, we should please keep in mind that the calculations are happening simultaneously. Are we there? All the calculations are happening simultaneously. एक के बाद दूसरा नहीं हो रहा कि IDV पहले हो रहे हैं, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा है, फिर आउटकम वेरिएबल हो रहा है. ऐसा नहीं हो रहा. सब कुछ इकट्ठे चल रहा है. So ये दिमाग में बात आप स्मार्ट PLS के लिए जरूर रखिएगा. Another thing that we need to take up from this slide is questions in boxes. Arrows जहाँ पे भी है, it is talking about relationship, and बोले जहाँ पे भी है, it is talking about construct. Construct कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, LOC and HOC. अभी there? अब मुझे ये बताइए, इस सारी कहानी में कॉन्सेप्ट का क्या रोल है? क्यों हम स्टार्ट हुए कम्युनिकेशन? What is the role of the concept? And I'll tell you another problem. The biggest problem that we face when we are sending our papers is, what is the theoretical underpinning? Yes or no? Now who knows what is the theoretical underpinning? But your book will tell you, go back to the basics. The subject has a book has a chapter, each chapter has theories. Yes or no? कम्युनिकेशन के चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज है, मोटिवेशन के चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज है, लीडरशिप के चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज है, फॉर पीपल इन ओबी. सिमिलरली इन्वेस्टर परसेप्शन की बहुत सारी थ्योरीज है, ओवर कॉन्फिडेंस की बहुत सारी, बायस की बहुत सारी थ्योरीज है. और कुछ नहीं समझ आ रहा तो स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स मॉडल तो समझ सभी को आता है, SOR. Yes or no? So if you're talking about any process that is there on the path model, you are having a stimulus, then there is some process that is going on on the organism level, that is the respondent level, and there is an outcome which is the response of the respondent if he understood that perception one. So all this theory, the theory is vested and residing here. This is where you will get your theoretical underpinning. Are we there? So we start with motivation. Motivation can be studied on different platforms. Student motivation or employee motivation के लिए थ्योरी तो मोटिवेशन की ही लगेगी. Yes or no? तो वो थ्योरी स्टूडेंट मोटिवेशन के पेपर से नहीं मिलेगी, आपको वो मोटिवेशन से मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट से मिलेगी. इसीलिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कॉन्सेप्ट और कॉन्स्ट्रक्ट का डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है. Whenever something is proven construct wise in terms of the nomological network. Now I must also introduce this term to you. ये जो हमने अभी कहानी बोली कि कम्युनिकेशन स्किल के एंटीसीडेंट्स ये है और आउटकम्स ये है और ये डिफाइनिंग वेरिएबल्स हैं. What is this signifying? I told you we had 2 objectives. One is to define the construct and second was to find the network of variables which are going to have an interplay wherever there is this construct. So the network of variables wherever there is this construct formulate in technical jargon
they are called as the nomological network. For namesake, this comes before, this comes after, this is the definition. So most of the papers, they will ask you what is the nomological network, how have you selected your different IDVs, does your IDV belong to the nomo network? The review is going to ask you this. So we don't know what is a nomo network, and we don't know what is an IDV, and we don't know how we have come up to the IDV. So the ADO framework will help you to answer this query. Say that we had done the literature review systematically in such a manner that this is the nomological network. The antecedents are coined by this author, citations accomplished alongside, and these are the outcome variables and these are the defining variables. So we've done our study completely. We have highlighted our nomological network and we have done our defining network. So that's going to help you to say that why a particular variable was taken as an IDV. And second thing that you can choose is, now that your list of IDVs is ready with you, what you need to do is go back to the theory and see which of the IDVs are going to interact with each other. Are you there with me? I'll take it through an example. ये आप मुझे बस remind करा दीजिएगा कि how to do the theoretical underpinning for the model. So you just remind me once I complete this. We will come back to this. How to give the theoretical base, how to understand, do theoretical modeling. We'll come to it. So for now, are we all clear on this? So the theory is coming from the concept. Concept is the abstract term. Let's go to the slides. I usually am very bad with the slides. I am. Ma'am, there is a concept called the CS communication skills. Just a second, ma'am. Communication skill, is it measurable? Is it measurable? Yes or no? Latently or observably, is it measurable? Yes. So can it be a concept? I'll tell you why. Let's do this. चलिए मेरे पास communication skill की value है. किसी और ने research की है, बाकी values भी है. क्या मैं communication की value निकाल सकती हूँ? आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए. क्या मैं कम्युनिकेशन की वैल्यू निकाल सकती हूँ? क्यों? Why can't I say that there is a value of communication? Why can't I say? No, communication skill is an equally general term, ma'am. It is an abstract term. So, but I can get a value for communication skill. Why can't I get with the help of x1, x2, x3, I was able to get x. Yes. Right? Can I get a value y of communication? This is not where the answer lies. Antecedent से इसका कोई लेना देना नहीं है. आप बहुत सारे वर्ड एक साथ बोल रहे हो. आप construct, factor सब एक साथ बोल रहे हो. ये सब अलग अलग बातें हैं. Let's talk about constructs. इसके ये बहुत सारे constructs हैं. क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ? कम्युनिकेशन की वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती. क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये तो बहुत सारे हैं ना, और हर दूसरे दिन कुछ नया निकल रहा है. It is endless. It's infinity. So how can I say? That is the reason when you are writing your implications, the communication of this class was amazing. No, you can't say that. You cannot generalize it. Implications गलत हो गई. आप खाली communication skill की बात कर सकते हो. आप खाली सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की बात कर सकते हो. आप खाली वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर सकते हो, नॉन वर्बल की बात कर सकते हो. आप कम्युनिकेशन की बात नहीं कर सकते. Communication is only giving you theory. Are you there? It's a concept it's an umbrella term which is having all these put under it. So I cannot, if I were to calculate communication की value, I must have values for all this that is under the umbrella, that is at the rim of the umbrella. But can I get a value? No, because just limit yourself to how many that we will have to do. It is not possible. So I cannot get a value of concept. Let's go here. A concept is generally accepted collection of meanings or characteristics associated with certain events. We're talking about events here. We're talking about a phenomena. We're talking about theory. We're talking about theoretical interpretation. A construct is an abstract concept. Again, it's again abstract. मगर हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. Let's understand how. What is a dimension? Dimension कौन बताएगा मुझे? क्या था dimension communication में?
कम्युनिकेशन स्किल वाले हमारे एग्जाम्पल में व्हाट वाज द डायमेंशंस? vocabulary and spelling. Vocabulary, syntax, spelling. We called it direction, dimension, LOC. Are you there with me? We also would like to call it factors constituting communication skill, not leading to but constituting. What is a variable? Everything is a variable. That varies is a variable. Variable at the item level is called as an observed variable. Variable at the LOC level it's called as a lower order latent variable. Variable at the communication skill level is called as a higher order latent variable. Everything is a variable. Now does that exemplify everything? Now let's go back to ma'am's question. Ma'am, here is where your answer lies. Conceptual variable. What is a conceptual? What is communication? It's also variable because it is varying with different components. But it is a conceptual variable. Are you there? It is just a concept. It's just a phenomena. It's talking about theoretical theory. Theory की बात हो रही है. Practically नहीं टेस्ट किया हमने. बहुत बार bits and pieces में practice टेस्ट करके तब theory करनी. Are we there? So it's a theoretical variable. Level of abstraction is holistic. This is Bagosi's model. Please note here the level of abstraction is highest. So at the concept level of abstraction is highest. That is the reason I can't calculate y. Construct level of abstraction is medium. And at the item level or the observed variable level of abstraction is negligible. There is no abstraction, clear-cut value है, so there is no abstraction. So what's going to happen? All your calculation is happening at the observed variable level. इसीलिए कहते हैं डेटा अच्छा कलेक्ट कराओ, क्योंकि सारा कहानी is what people are answering. Why? Because on the basis of the observed variable, will I calculate x1, x2, x3? Will I calculate x and all the x's of different constructs in the model? And then there is how I'm going to get my R square, my hypothesis, my betas, everything is going to come from these observed variables. So all the mathematical operations are happening at the lower order, observed variables. So data अच्छा collect कराइए, question अच्छे बनाइए. क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाने हैं. पूजा खत्री इज हेल्पफुल एंड सपोर्टिव. हो सकता है हेल्पफुल हो, सपोर्ट नहीं कर रही. अब कहाँ मांग करेंगे? या सपोर्ट कर रही हूँ मगर हेल्प नहीं कर रही. आर यू गेटिंग इट? यू आर हैप्पी एंड कंटेंटेड? नो, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. So people may be happy but they are not contented. So people on the road who are living a difficult life are happy. You see the children, playing in the rains much better than you and me play, but they are not contented. Similarly, if you talk about, we may be contented with whatever we have. हमारे पास बहुत अच्छा है, भगवान ने बहुत दिया. All of us say this, right? But we are not happy. जितना दिया उसमें भी हम खुश नहीं. So happy and contented. Again, you can't take it on the same. Make the question, item analysis, item generation, item evaluation, content validity, face validity. These are the important terms which I'm going to be introducing to you when we are making our questionnaires, when we are making our skills, and that is the reason they are important, because all the mathematical operations are happening at the lowest order. Are we there? Ma'am, does that explain now that we will not be able to do anything with the conceptual variable? Can you see this question mark? Now there is too much of ambiguity because no matter how big a researcher I am and no matter how much scaled operation I may get into, I may not be able to say in totality about communication. I will only be able to say something about the constructs, but I will not be able to give any feeler about the conceptual variable. I may only give the theory behind it, how the other variables are leading to that construct, and so because it is happening over a period of time, it has become theory. That is fine. So in order to read the conceptual variable, you may get theories, but you cannot measure it. Is that okay with everyone? Concept, construct, item, LOC, HOC, सबको सब समझ आ गया? पक्का कि आप वही कर रहे हो मेरे साथ जो बाकियों के साथ किया है आपने? नहीं, ठीक है, मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ. अब मैं आपको एक अब टेस्ट होगा. ठीक है? I'm going to be one more thing. I have given you a data set on annulum giving करके है, वो corrupted है, उसको मत यूज कीजिएगा क्योंकि उसके बाद आप मेरे को कॉल करके बोलोगे मैम जो आपने सिखाया था वो तो चल नहीं रहा, तो उसको छोड़ दीजिए. I have sent another data set smart city, वो हम यूज करेंगे. That is corrupted. उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ हम डेटा सेट्स खराब भी
उसको मत रन करिएगा, वो गलती से चला जाए. Ma'am, can we bring for tea? You want to break for tea? That's fine. Can I just draw the model and just check it here and then we can break for tea? Or Yeah, do you want to break for tea? I leave it to the respondent. Can I draw the model? They're okay. Good enough. Okay, fine. I am so thankful you are with me. Okay guys, so now the research was, I wanted to work on, my main core area is happiness and well-being and खुशी, ये सब पे मैं काम करती हूँ बहुत ज़्यादा. So, and leadership of course in consonance with it. But there was one time when one of my scholars was an alumnus of IB University and she said, ma'am, alumni की बड़ी गलत फहमी है और मेरे को ना alumni पे काम करना है. So I said, okay fine. So what do you want to work on alumni? She said, ma'am, I'm going to work on alumni giving behavior. I said, we had a great discussion. I said, alumni never give back to the institution. You know, they just go out and then we have to call them up, please aajo, alumni meet है, please aajo. Matlab, why can't they come back and give to the institution? What is the problem that they are facing? So she said, ma'am, let's do PhD on it. We said, fine. So we tried to figure out what is alumni giving behavior. And we found out that India में alumni giving behavior के बड़े मायने थे, बहुत सारे मायने थे. So we started with the construct, the basic construct that was my core construct that I was married to. My dependent variable was alumni giving behavior. That's the basic theme behind my research. Now she said alumni giving behavior is actually measured in India. In Western countries it was measured through financial and social giving behavior. These were the only two variables. But in India हम बहुत complicated है, मगर beauty है कि हमारे culture में बहुत सारे options हैं. तो पहला option था charitable giving behavior. मैं दान जरूर करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को कुछ पता नहीं मैंने कितने पाप किए हैं, दान से शायद कट जाए. So charitable giving behavior was one. Then second was professional giving behavior. I am an expert in taxation, so I want to come back and teach my students, my juniors about it. Then there is social giving behavior. Society क्या कहेगी अगर मैंने वापस नहीं दिया तो ठीक है, social giving behavior. And the last was financial giving behavior. So these were the four sub-constructs, dimensions, directions, whatever you may call them. Each was measured through 3 items. मैं सिर्फ इसको exemplify कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए. Okay, now every arrow is ending on a. Why? Because this is the question. Is it okay if I don't draw all the doubles? ताकि आपकी चाय ना ठंडी हो जाए, ठीक है? So we were having 3 questions each for this. Now when I did, we were married to this alumni giving behavior, so we went in for an exhaustive SLR, structured, systematic literature review. We're going to come up to it what it is. I'm sure you have been taught about it. तो मैं आप ही से पूछूंगी क्या होता है. और systematic literature review जब हमने किया तो हमें पता चला कि alumni giving behavior होता है तो outcome में तो word of mouth है, ठीक है? लोग अच्छा बोलने लगते हैं ना अपने institution के बारे में. मगर बनता किससे है? They said there is something which is called as alumni citizenship behavior and alumni satisfaction. So there was something which is called as alumni satisfaction. This was measured through alma mater experience and career assistance. So what level of career assistance the student gets is going to be measuring the alumni satisfaction, and this was again measured through 3 items. ये सारा इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि स्मार्टनेस में साइमल्टेनियसली रन होगा, हमें साइमल्टेनियसली बनाना है. और इसका मीडिएटर, कल अतुल सर ने आपको सिखाया था. व्हाट इज अ मीडिएटर? हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज अ मीडिएटर? हाँ जी, मीडिएटर क्या होता है? व्हाट इज अ मीडिएटर? A mediator is a variable that is both an IDV and DV. Are you there with me? इसका सीधी से लर्न करने का क्या तरीका है? DV होता है हस्बैंड. लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यू आर मैरिड टू योर हस्बैंड, isn't it? So DV is the husband. We are married to the husband. हस्बैंड बेचारे पे सारे तीर आ गए. Dependent variable will always be an endogenous variable, जहाँ पे end हो रहा है. Another terminology, endogenous variable. तो जितने तीर लग रहे हैं, चाहे वो मम्मी के लग रहे हैं, चाहे वो वाइफ के लग रहे हैं, चाहे वो बहन के लग रहे हैं, वो सारे तीर जो है वो बेचारा आदमी खेल रहा है, इसीलिए वो है डिपेंडेंट वेरिएबल.
इंडिपेंडेंट वेरिएबल मम्मी पहले से थी और बीवी बीच में आ गई, तो उसके बाद आपका अब आपने क्या है, आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है इन दोनों की प्रेजेंस में। मेरी इफेक्टिवनेस कितनी है इफ एज अ हस्बैंड इज गोइंग टू बी योर आर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हैप्पीनेस ऑफ हस्बैंड इज डिपेंडेंट ऑन द मम्मी एंड द वाइफ। इज दैट ओके? वाइफ मम्मी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तो फैमिली की वो है, तो उनसे तो कोई मतलब नहीं है। मगर वाइफ का इम्पैक्ट मम्मी से बहुत ज्यादा होगा। वाइफ की खुशी का इम्पैक्ट मम्मी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, यस और नो? और वाइफ की खुशी का इम्पैक्ट से हस्बैंड पे डिपेंडेंट है। Are you there? So there is a direct relationship and there is a mediated relationship. ऐसा नहीं है, सास के लिए इतना सिंपल नहीं है। सास का भी एक रिलेशनशिप बीवी के थ्रू जा रहा है। Have you seen people say तू अपनी बीवी की सुनता है, तो तेरी बीवी को ही बता देना चाहिए तभी ठीक होगा। कोई काम कराना हो तो तेरी बीवी को बता देना चाहिए। Both independent and dependent is the mediator. एरो से लर्न करने की कोशिश करेंगे, जिसको एरो लग रही है बेचारा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ACB alumni citizenship behavior is a mediator here. Why? Because it is serving as a dependent variable for ASAT and an independent variable for AGB. Are you there with me? That is why it is a mediator. Now mediator may be in serial, in parallel, in maybe there are 94 models given by his, more than that now. I think 200 something now in the latest book. So mediation is going to go to a great extent. आप सोच भी नहीं सकते कहाँ पर। अब मजे की बात ये है, ये जो रिलेशनशिप है पति पत्नी का इज मॉडरेटेड बाय कंट्री कल्चर। अगर आप यही पति पत्नी का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो यूएस में और वही रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो इंडिया में, विल कल्चर बी अ कंट्रोल वेरिएबल? व्हाट इज अ कंट्रोल वेरिएबल? हु इज गोइंग टू टेल मी दिस? ये कल कवर हुआ है, मुझे पता है। व्हाट इज अ कंट्रोल वेरिएबल? जिसकी प्रेजेंस से अगर मेरा मॉडल इम्पैक्ट नहीं मैम, इम्पैक्ट तो करेगा ही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सपोज चलिए यहाँ पे देखते हैं कल्चर, ये वाले वर्ड्स जो है ना इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, हम इनको थोड़ा सा हटाएंगे क्योंकि ये जो दे क्रिएट मिसनोमर perceptions in our minds. Let's get the correct word. Okay, what is a control variable? Condition. What is a control variable? Suppose I'm thinking about, just taking an example, AI appropriation, ChatGPT appropriation. Everybody knows about ChatGPT. We are saying how we can imbibe ChatGPT into the education system. Suppose that's our study. So ChatGPT appropriation in Poland, ChatGPT appropriation in India. ChatGPT appropriation in India will be controlled by, the theory told me, the literature told me, will be controlled by technology acceptance culture. इंडिया में कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं किया था, चैट जीपीटी को आप भूल जाओ। Yes or no? When computers came to India, people were not accepting. People said हम तो मैन्युअली ही करेंगे। आज भी हमें बड़ी खुशी होती है हमने मैन्युअली अनोवा कैलकुलेट किया। कर देता है स्पेसेस, नहीं मगर मैंने मैन्युअली, मुझे मैन्युअली आता है। That's what it gives us the high. So that's where it's not required. You have a, just as the calculator eases it for you, the computer system eases it for you. The software eases it for you. That's perfectly fine. But what the acceptance, technology acceptance की हमारी अभी इतनी viability नहीं है. So when iPhones, if you ask an Android user shift to iPhone नहीं मुझे नहीं समझ आएगा, मैं तो इसी में खुश हूँ. Try changing an Android user to an iPhone user, you will face a difficult task. Apple versus Samsung बहुत बार हुआ है, you know, they've been studies on it. Why? Because our technology acceptance culture is not that pronounced. Go to the Western world, technology accepts like this, you know, innovation is too good. Why? Because the technology acceptance level is very high. So a variable which is not that important to become an independent variable, but is definitely correlated with the entire model, that is the IDVs and DVs, in such a manner that the correlation is low yet significant, is called as a control variable. तीन चार बातें बोलिए, ध्यान से सुनिए। जिसके रहने से पूरा का पूरा मॉडल अलग ऑपरेट करेगा। Are you there? If I use technology acceptance culture in US, or if I'm doing the study of ChatGPT appropriation in US, technology acceptance culture is going to have a different impact. Can I say that people are going to respond the same way as they would respond in India? No. Are we there? या अगर हमें marriages की बात करनी हो, acceptance of
कल्चर का इम्पैक्ट अलग होगा। इसका मतलब कल्चर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इट इज अंडर द पैराफर्नेलिया ऑफ कल्चर दैट द एंटायर मॉडल इज रनिंग। आर यू देयर विद मी? Why? What do we mean by it? It is controlling the phenomena, the entire phenomena. This particular IDV-DV model, this framework is getting controlled for this particular variable. Now, why do we think that this variable is important? When either it is related to any of these, तभी तो control कर पाएगा. Yes or no? Appropriation का culture पे relationship है, मगर इतना बड़ा relationship नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके आता है। तो क्या चीज से पता चलेगा इतना बड़ा रिलेशनशिप नहीं है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट 2 3 है तो लो कोरिलेशन, 7 8 है तो हाई कोरिलेशन, -1 to 1 के बीच में होता है। यस और नो? तो अगर हाई कोरिलेशन है तो वो आइडियली बनेगा, अगर लो कोरिलेशन है मगर कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है तो और लिटरेचर सपोर्ट कर रही है तो वो बनेगा कंट्रोल। आर यू देयर विद मी? दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट इज किसी और एक आईडीवी से यही सिनेरियो एक्ट होना चाहिए, लो कोरिलेशन एंड सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, ओनली देन कैन यू कॉल इट एज अ कंट्रोल वेरिएबल। सो द पैराफर्नेलिया अंडर विच, within which the entire model will run differently. Have you got it? So we would usually किसी भी मॉडल का अगर आपको एरर रिड्यूस करना है उसमें कंट्रोल वेरिएबल्स ऐड कर दीजिए, आपका SRMR will go down whenever you add new control variables. So that's the key thing for the वो गिमिक वाली बात बता रही हूँ कि SRMR रेंज में नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। कंट्रोल वेरिएबल ढूंढिए, मजे से मिलेंगे आपको जब आप सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करेंगे। आई tell my scholars to get the list of control variables always, mediating variables, moderating variables and control variables, only then can we work on it, right? Now what is a moderating variable? Do we know what is a moderator? What is a moderator? That's theory. What is a moderator? Which alters the relationship between two variables. Alters the relationship. खाना बनाते हैं हम सब, नमक is the moderator, yes or no? So सावन में जब खाना बन रहा होता है उसका स्वाद अलग होता है मंडे वाले फास्ट का स्वाद या नवरात्रों के फास्ट का स्वाद, क्योंकि उसमें नमक चेंज हो गया है आपका। yes or no? सेंधा नमक का स्वाद अलग होता है और आपके नॉर्मल नमक का, आयोडाइज नमक का स्वाद अलग होता है। It is a catalyst which changes the taste of the final outcome. Are you there? Have you got it? So male and female. Men are from Mars and women are from Venus. We have to accept it. Okay, so that's the rule of the game. अब इसका क्या मतलब है? हर relationship को men will see differently, females will see differently. For example, if I put up gender here, first and foremost ये relationship को alter करता है, isn't it? Catalyst of the relationship. तो हमेशा arrow पे आएगा. Are you there? It will always come on the arrow. So this was gender. Of course, it is not visible. So the moderator variable is gender. It can be a construct. It can be a continuous variable. It can be a categorical variable. और मैं बिल्कुल नहीं समझा रही आपको कि categorical क्या हो रहा है और continuous क्या हो रहा है. बट क्योंकि आपकी समझ में की शक्ल से मुझे लग रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा, तो कैटेगोरिकल होता है जिसमें 1 2 3 में कैटेगराइज कर सकें मेल फीमेल, या फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल इज 1 2 3 4 5 एंकर पॉइंट्स, राइट, इजीली, ठीक है। तो दोनों के दोनों मैट्रिक है। मैट्रिक क्यों है? क्योंकि वैल्यू है। अभी देर नाम से के नहीं है, नॉमिनल नहीं है, इनकी वैल्यू है। क्वांटिटेटिव अगर वैल्यू होती है तो वो मैट्रिक होती है, बाकी सारे नॉन मैट्रिक। इज इट ओके? नाउ दिस इज माय मॉडल, ऑल ऑफ यू। आप ध्यान से देखिएगा क्या होता है। हाँ, वी टेक अ ब्रेक, बस इसमें आप बता दो मुझे, अब टेस्ट है ना। अच्छा, यू कांट सी द स्क्रीन, आई एम सॉरी। सो आई विल जस्ट पुट जेंडर हियर। चाहिए ना
Can you see the red boxes? Not yet. Sorry. Can you see this model? We have 3 red boxes. This is red box 1, this is red box 2 and this is red box 3. Yes or no? ये मॉडल है. इसमें कौन मुझे बताएगा IDV क्या है? जोर से बोल रहा है, मुझको सुनना है. ASAT. अच्छा, और ये AECA क्या है फिर? फर्स्ट ऑर्डर हो गए, ASAT की सेकंड प्रोसेस. अच्छा, अब ध्यान से सुनिए. हमारा मॉडल जो है वो रन कर रहा है between alumni satisfaction, citizenship behavior and giving behavior. These 3 red boxes are signifying how we are calculating ASAT, ACB and AG. Is that okay? That means I need to first measure. Measure what? ASAT. Second, measure second construct. कितने construct हैं इसमें? Construct, main construct. एक IDV कि 2 IDV? 2 IDV. कौन सा है दूसरा IDV? Very good. कितने mediator? एक mediator. कितना dependent variable? 2 dependent variable, but एक final endogenous state. Have you got it? इतना समझ आ रहा है? अब हमको ASAT को ACB और AGB का रिलेशनशिप चेक करना है. That means what I need to do is I need to work on what is the relationship between ASAT and ACB, what is the relationship between ACB and AGB, what is the relationship between ASAT and AGB. Are you there? Can you see the green arrows? Yes. Now, in order to, I don't have ASAT value, I don't have ACB value, I don't have AGB value. What values do I have? I have values for question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and probably 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yes? Are you there? So, what do I need to do? I need to get my values for ASAT, ACB and AGB to finally run my model. Yes or no? Yes. We just studied in the in the former part of the lecture that in order to calculate, अब इसमें से higher order कितने हैं? बताएगा कोई मुझे? कौन से हैं? Very good. ASAT and AGB. क्यों? क्योंकि पहले step 1 पे ये calculate हो रहा है. This is step 1 for ACB and this is step 2. Remember Amos? 0 order, first order, second order. Are you there? Similarly, this is step 1 and this is step 2. What about ACB? ACB it's a lower order. It's a lower order construct. Why? Directly order. Because we are directly measuring through the observed variables. खाली arrows दिख रही है हमें, मतलब of course they are looking at boxes, but that's how we are measuring it. Now, what we are going to do is, what the software is going to do is the entire model is going to run simultaneously. Are you there? What is our objective? Is to get 1 latent variable scores पहले for CGB. Yes or no? Yes. Step 1 रन होगा, पहले सारे का step 1 रन होगा. एक CGB का आएगा, PGB, SGB, FGB का स्कोर आएगा. उन सारे स्कोर से क्या बनेगा? Step 2 में. Are you there? यही तो कहा आपने, ये हायर ऑर्डर है, तो this is how it is going to function. बस आपको ये याद रखना है कि साइमल्टेनियस हो रहा है. प्रॉब्लम ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि साइमल्टेनियस हो रहा है, इसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस आते हैं. Just remember this is happening all together. Concurrently it's happening. Similarly ASAT में पहले AECA की वैल्यू कैलकुलेट होगी, फिर स्टेप 2 पे ASAT. क्योंकि हम इसे मेजर कर रहे हैं. What are we doing? We are measuring the, what are we measuring? Concept or construct, or what are we measuring? ASAT is a construct? Yes, ma'am. Is it a construct? Yes or no? Yes, ma'am.
So this particular model is called as measurement model. Why? Because it is measuring. With the help of step 1 and step 2, it is measuring ASAT. This particular model is called as measurement model 3 and this particular model is called as measurement model 1. Are you there with me? Now that I have a value for ASAT, ACB and AGB, I can run my hypotheses. Hypotheses कहाँ होंगे? Always on the arrows. Relationship. Inner model. Are you there with me? Measurement model of the red boxes are also called as outer model. This is called as the outer model. So we have one outer model for constructs के लिए होते हैं. ये ध्यान रखिए जितने construct उतने measurement model उतने ही scales. जब अगर मैं इस वाली PhD का क्वेश्चन बनाऊंगी तो क्या होगा? First set demographics, second scale ASAT. Yes or no? Yes, जिसमें क्वेश्चंस होंगे AE के 3 और CA के 3. Yes or no? सेकंड क्या होगा? स्केल ACB, जिसमें 4 क्वेश्चन जो ACB के होंगे. और थर्ड क्या होगा? स्केल जिसमें 3 क्वेश्चन CGB के, 3 PGB के, 3 FGB के और 3 SGB. As many constructs, as many scales. So which is bigger, questionnaire or scale? Questionnaire is bigger. So your PhD questionnaire is going to have multiple scales. Are you there with me? Your model is going to have multiple scales. As many constructs, as many scales. Right? Why do we need a scale? Scale is a measurement tool. Yes or no? So इसका मतलब जो ये box बन रहा है उसको measurement model कह सकते हैं because it is measuring with the help of the questions that we asked in the scale for AGB, for ASAT and for ACB, the 3 constructs in our model. The 3 constructs such that ASAT was IDB, ACB was IDB-DB both and AGB was final DB. Is that okay? Now who's going to tell me how many LOCs here? हम अभी कंट्रोल वेरिएबल को छोड़ देते हैं. 7. लीव कंट्रोल वेरिएबल एंड जेंडर द मॉडरेटिंग वेरिएबल. मॉडल की बात करें. कैसे हुए? 7 1. This is LOC1, this is LOC2, this is LOC3, this is LOC4 for AGB, right? Then we also have LOC5, LOC6 and ACB is also LOC. Very, very good. So 7. How many higher orders? 2. So we have higher order 1 and this is higher order 2. Now can I say, I have 17 queries in the chat box. Please just listen to them once we finish this. Can I say ASAT is a higher order construct which is measured in the dimensionality of AE and CA in a dash. ये dash करेंगे break के बाद. ठीक है? In a dash mode. ठीक है? AGB is a higher order construct measured in terms of dimensionality CGB, BGB, SGB, FGB in a dash mode. ये dash बाद में फिल करते हैं. ठीक है? ACB is a lower order construct measured by virtue of 5 items and it's a lower order construct. Is this clear till here? जितने भी लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर रेड बॉक्स के अंदर हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो वो गलत है. Hypothesis will always, this is the golden rule, please stick to it. Hypothesis हमेशा inner model में हो, construct के बीच में होती. सब constructs की hypothesis नहीं बनेगी. क्यों? क्योंकि सब constructs को तोड़ के आप नहीं measure कर सकते. स्केल जो हमारा 12 इंच का होता है उसमें इंच और सेंटीमीटर है. आप ये नहीं कह सकते ये लो आधा इसी से मेजर कर. इट्स नो मोर अ स्केल. आर यू देयर? सो एंटायर AGB इफ आई हैव टू मेजर आई हैव टू हैव ऑल दीस कॉन्स्टेंट्स. एक और गड़बड़ हम करते हैं. मेरे को सोशल गिविंग बिहेवियर के क्वेश्चंस चाहिए. मैं पूजा मैम का AGB का क्वेश्चन उठाती हूँ उसमें से खाली सोशल गिविंग को एलुमनाई गिविंग कह देती हूँ व्हिच इज रॉन्ग. आर यू देयर? बिकॉज इट्स अ पार्ट व्हिच इज गोइंग टू लीड टू एलुमनाई गिविंग. Are you there? So do not break scales. TOI का स्केल लेना है पूरा लीजिए और फिर से
रिसर्च गेट पे मेंशन कीजिए, परमिशन लीजिए, खूब यूज कीजिए. Everybody is, most of us tried that हमारे skills open domain में आ जाए. Where people are paying lakhs of rupees for open access. So everybody is trying to help you. In case it is not an open access, just write to the author, they will give it to you. But don't break the skill. So LOC, HOC clear? Yes. Thank you so much. Please break for tea and come back, and then we start with the next leg. So we break for tea and come back at tea. Okay, now let me see. Welcome back. We left on this model on our screens where we said we have an IDV, a mediator and a DV. A quick recap of what we did in the last session. We talked about concept. Concept is what helps us to get our theory. A construct is again abstract, yet it is definable, yet it is measurable on a latent methodology. And you also have dimensions or sub-constructs or lower order constructs or directions or factors, whatever you may call it, that define the construct. Whenever they are defining the construct, the factors which are defining the constructs are called as constituent factors. The factors that are leading to the construct, they are the IDs. So this is the distinction that we have to see. We just don't have to see the word factors. We have to see what is the adjoining verb with it. So if the verb is leads to, then definitely we are talking about antecedents. If it is constituents or define or refine, whatever the authors may use, that's where we are talking about the definition of the construct. So we also talked about the golden rule where we said that as many scales, as many constructs and as many measurement models. Now there was a query last time for CD-SEM. So please, all that I am teaching here is variance-based SEM. So it has nothing to do with covariance-based SEM. The methodology is absolutely different. The least square calculations, it is based out of the MLD method. Okay? So that's a maximum likelihood method. So that's a different method altogether. It is covariance-based. What we are working on is variance-based. So when we are talking about variance-based SEM, the calculations are different, the algorithm is different, everything is different. It's like there are different ways of calculating regression. This is one and that is the other. So there's no comparison, there's no overlap, right? But again, in that case also we measure the measurement models and we measure the structure model. SEM, PLS SEM through the smart PLS software is a little easier because it is graphic user interface in such a manner that your measurement models can be very identifiably created, and we are going to be talking about it. So we also talked about items, lower order construct, higher order construct, step 1, step 2, latent variables, and then there are observed variables, and we talked about higher order latent variables, and that was about it. So the clarity on all these has been sought, I presume, till now, and we go ahead now in terms of going back to our model. Now when you talk about this model, what is there any difference that you see in the model? Okay, let me just give you a brief recap of AGB and ACB and ASAT also, that we talked about them as the outer models. Yeah. When we talked about these three constructs, we are talking about these constructs in such a manner that the questionnaire for this particular project would have demographic variables and would have scale ASAT, then scale ACB, and then it will have scale AGB. Also it will have, now what will my questionnaire have? My questionnaire is going to have many things which will be incorporated by me for my PhD. So my questionnaire is going to be comprising of part A is going to be demographics, part B is going to be scale for first construct. So here it is ASAT. Then third is scale for the second construct, that is ACB. And this is scale 2, construct 2. And then we are coming to scale 3, which is AGB, sorry. Alumni giving the name. Is everybody there with me? Apart from these, we also have to include, I told you, very, very mandatory,
are the control variables. These are the variables under which, under the paraphernalia of which the entire model will work differently for different populations, for different samples. Are we there? So control variable, where will I get the control variable from? I will get the control variable from the same way as I do my systematic literature review. So how many people have taken what kind of control variables whenever they studied, say, giving behavior. So that is going to be where I am getting my control variable. So just as you make a list of A and B and O, you should also make a list of moderating variables, I, M, O. Input, moderator and outcome, that's another model that you must have already studied in your SLR, or you may do the TCCM approach, which is the theory, construct, characteristics and methodology. So these are the different methodologies of doing, frameworks for doing systematic literature review. I believe that systematic literature review has been taken in length, so I will not be touching upon systematic literature review at all. But what we usually do is, once we are formulated once we know of our DE, we start conducting a systematic literature review, which helps us to get our IDVs, mediators, moderators, control variables, everything But comes from generally research. demographic variables are being used as the control variables. I've seen That's where we believe that the demographics is going to control the learning, because that they are all cultural variables, isn't it? Yeah. So gender might have impact, but there are many studies where gender will not have impact. For example, if you talk about job satisfaction today, all the studies prior to say 2000 had gender as a control variable. But if you talk about today, it is not a control variable, because we are all the same now. That was the time when female gender was very less in terms of jobs. So yes, that time control variable हो सकता था, आज नहीं. So you may have to please go back to literature and do not take demographics blindly as a control variable. One very important logic of control variable is please take it from literature. And if you do not take it from literature, if you want to take it from logic, then you have to prove the 3 steps. First step is correlation with the DV, low and significant. Correlation with at least one of the IDVs should be established, low and significant. अगर ये दोनों चीजें establish हो जाए, take it as a control variable. So that is how we take up control variable, whether from the literature or whether not from the literature. Both the cases you have to check. And in case it is from literature, then also Yes, you have to check, because literature, the model that they may have used may have different IDVs. So it may be controlling for those IDVs, may not control for your IDV. Because antecedents की तो list बहुत लंबी होती है ना, हमें ये check करना है कि हमारे IDV पे भी control हो रहा है. हाँ जी. When you say that we have to choose control variables from the literature, so you mean that other studies conducted Yes. in similar contexts? Yes. So how do you control studies and control variables? Like जो आपने दिखाया वो लिखा होता है, वो मतलब similar exactly text correlation. हाँ, जैसे मैंने अभी काम किया है, one of my scholars did work on student well-being. So when we did work on student well-being, what we did was, I also promised you that I will do theoretical modeling and give you a feeler of theoretical modeling. So we'll just pick up another model. So one of my students did her work on student well-being, right? Student well-being was measured in terms of again 3 or 4 constructs. I think it was 4 constructs, and each of them had their own items. Are you there with me? So I'm not drawing everything here. This is again reflected. This is again. So student well-being, when we studied, we did a systematic literature review for student well-being. We got to know that perceived institutional support and self-leadership and perceived employability are very important antecedents. Were a few of the antecedents that we got in a list of antecedents. So I got a list of about 10 to 15 antecedents, and out of which why did I select? Now, the review is going to ask you, why only these 3? Why not something else? So what we did was, now you need the theory. Now you please tell me, in the student well-being, if I talk about only student well-being is a construct or a concept? Construct, right? Student well-being is a construct. So what can be the concept behind student well-being? So good. So you now understand it. So well-being से निकला employee well-being, student well-being, women well-being,
वेलबींग एनालिसिस, वेलबींग प्रोसेस, बहुत कुछ निकला, ठीक है. हमने लिया स्टूडेंट वेलबींग. आर यू देयर विद मी? सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट वेलबींग, द कॉन्सेप्ट वाज वेलबींग. तो किसकी थ्योरीज जब मैंने एनालिसिस किया लिटरेचर का, द टीचर बिफोर मी मस्ट हैव टोल्ड यू दैट वी समटाइम्स आल्सो अडॉप्ट द TCCM अप्रोच. हैव यू हर्ड ऑफ इट? TCCM क्या होता है? आपने सुना है ये बात? Theory? All the theories that have been talked about wherever there was the word student welfare. Are you there? All the theories that have been talked about. So you will make a list of all those theories. Are you there with me? I'm going to show you a paper where we did systematic literature review for student well-being and how we have written down those theories. I will just show it to you. Just give me 1 minute. So what is C? Context. किस context में ये काम हो रहा है? So countries, populations, samples, everything will be included in the context. Then is characteristics. What is characteristics? Who's going to tell me what is characteristics? थोड़ा सा लॉजिक लगा के बोलिएगा. What is characteristics? I think your first order or lower order, I think somebody from the online just answered. Who's it? Shweta? हाँ. No. Characteristics are not mediators. Characteristics are not outcome. Characteristics are defining constituents. Are you there with me? तो vocabulary sentence spelling जो हमें decision में ADO के decision का जो D है वो इधर का characteristic है. Are you there? These are attributes. Attributes कह लीजिए, definitions कह लीजिए, constituents कह लीजिए, defining variables कह लीजिए, dimensions कह लीजिए, directions कह लीजिए, they are the same. Have you got it? So you can put up characteristics and the last is methods. Methods में क्या होगा कि कौन सा gap है. For example, when we did student well-being, we got that methodology में बहुत सारे लोगों ने conceptually student well-being study किया हुआ है कि well-being होना चाहिए. Qualitatively सबसे पूछा गया, teachers से पूछा गया, students से पूछा गया, हाँ जी well-being होना चाहिए, suicide rates कम हो जाएंगे, burnout stress कम हो जाएगा. Fair enough. But well-being कैसे measure करें उसके लिए कुछ नहीं था. So there was a clear methodological gap where I picked up that we should prepare a scale to measure so that I can get a value for student well-being. Are you there with me? So there was no scale to measure student well-being. What they were measuring it with was that if there is less burnout, then there is student well-being. So somebody said this कि आप burnout के scale से measure कर लो, कम burnout है तो हम मान लेंगे कि well-being. किसी ने बोला happiness के scale से measure कर लो, well-being और happiness तो भाई बहन है. Well-being happiness measure कर लो तो student happiness is also equal to student well-being. But these were not correct, accurate measuring variables, and that is the reason we needed a scale which was appropriately measuring student well-being. Now that is where I talk about the knowledge gap or the methodological gap or the empirical gap. All three gaps highlighted. इससे क्या बनेगा मेरा पहला objective of research? What are the to identify and explore? क्यों explore? क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो. Now your research is exploratory plus descriptive. Why exploratory? हर research exploratory नहीं होती है. Exploratory तब होती है जब आप qualitative study से explore करते हो step 1, then go to descriptive step 2, then validate it to third descriptive, then validate it across samples, and only then can you make some generalizable statement. Are you there with me? So scale development is a process which will include both qualitative and quantitative methodologies. So that is the reason. जब हमने ये देखा कि मेथड में कहीं स्केल नहीं था तो हमने अपना फर्स्ट थीसिस का वो बनाया ऑब्जेक्टिव कि टू एक्सप्लोर एंड वैलिडेट द डायमेंशंस ऑफ स्टूडेंट वेलबींग एज अ कॉन्स्ट्रक्ट. हैव यू गॉट इट? और वो कहाँ से मिलेंगे डायमेंशंस? TCCM में से किसमें से मिलेंगे? डायमेंशंस कहाँ से मिलेंगे? Characteristics. Is that clear now? So it's neither mediator nor the outcome. It is just the constituent factors or the dimension. Are we there? So now, मैं actually भूल गई. मैंने ये क्यों draw किया था? Okay, yeah. Now I remember. So this was the model that we had, and these were the. This was how we put it up. Now I'll tell you what and how we put it up like this. So let me take you to the paper. Let me take you to
paper is this is SLR paper, has to be module 2. Okay, so I'm just showing to you, this is a paper published in an A category journal, and trust me, it was a very big deal that time. अब ऐसे आपको बहुत सारे papers मिल जाएंगे, total copy paste है, तो ये मैं आपको इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हमने बहुत great काम किया था, हमने बहुत मेहनत की थी, अब आप copy paste कर सकते हो. Follow the methodology and you will get your paper published for sure, I can assure you on this. So this is the paper which is running on many citations because people are following this methodology directly, blindly. So what did we do in this paper? We first talked about we combined the two frameworks. We said I'm very close to the ADO framework because it solves all the problems. So I took TCM and ADO. आपको guess कर सकते हो कि मैंने TCCM क्यों नहीं लिया? क्योंकि D और C तो सेम ही था, तो D में आ गया था वो, तो हमने TCM लिया. So we talked about theory, we talked about context, we talked about methods, we talked about antecedents, we talked about decisions, and we talked about outcomes. Are you there with me? So we followed this framework for doing our systematic literature review. We followed the SPAR4 SLR protocol. I'm not going into the details of the protocol because I've been told that you have been taught this. So how do you do this protocol? What is the journal selection criteria? What is the how do you screen out journals? What should be the database selection criteria? I'm sure you must be knowing it, so I'm just skipping it. It is a 3-step methodology where you are assembling, arranging, and assessing the research papers that you draw from Scopus or WS. I would suggest only Scopus and WS. Because these are, when you are publishing papers, they will ask you why you selected a database. So these are, profound databases which cover almost all papers. In fact, Scopus और WS में बहुत सारे replicated papers भी होंगे जो आपको उनमें से एक ही लेना होगा, right? So this is the SPAR4 protocol, and we talked about this entire set. Now this is what is important and you should see. Okay, can you see it here? Now what are we doing here? What we did was all the papers we made an Excel sheet. आप जब Scopus से डाउनलोड करते हो इसके ऊपर Excel sheet आती है जिसमें abstract आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, डिटेल्स हम सबसे पहले वो डाउनलोड करते हैं. सिमिलरली WS में भी बन जाती है. जो आपके पेपर्स एग्जैक्टली आपके टॉपिक से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वेलबींग में कुछ पेपर्स ऐसे भी थे जो वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स एज अ फ्रेज यूज कर रहे थे, या स्टूडेंट वेलबींग को एक आउटकम फ्रेज, जैसे all the teachers should think about student well. अगर खाली ये line लिखी है, तो that's not the relevant paper that I want. If it is talking about what constitutes student well, whether career resilience is a very important factor of student well, अगर ऐसा कोई पेपर मिल रहा है, तो वो मेरा preliminary paper है. वो हमारे SPAR4 SLR से हमने sieve out कर ली है. So उसमें हमने क्या किया? We categorized all the theories. Can you see all these theories here? Can you see the theories? So all the papers, 234 papers I think we read here, and self-determination theory, PERMA model, job demand resource theory, job demand control theory, SGT theory, Maslow need, job hierarchy, job characteristics. These were the multiple theories that were there in the 234 papers. Yes. These theories must be related to well-being. Yeah. Always particularly student well-being. You tell me why well-being? Because that is the concept. So बिल्कुल ठीक. तो वेलबींग से तो आएंगे थ्योरी. हमने यही तो बोला, कॉन्सेप्ट किस लिए यूज होता है? थ्योरी के लिए. स्टूडेंट वेलबींग के लिए नहीं, से नहीं आएगा. सर्च वर्ड्स क्या यूज किए गए? सर्च वर्ड्स जो आपको एसएलआर में कराए होंगे, बूलियन अलजेब्रा जो आप लगाते हो. ओके, एक सेकंड. दिस इज द WS. यस और नो? सो लेट्स गो टू एडवांस सर्च. अब देखिए यहाँ पे ये मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स कर चुकी हूँ, तो इसलिए ये आ रहा है. स्टूडेंट वेलबींग को ऐड टू क्वेरी करते हैं. दिस इज जस्ट अ क्वेरी बेस्ड, दिस इज अ डेटाबेस व्हिच इज हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. फॉर पीपल इन आईटी, यू मे अप्रिशिएट कि ये कैसे चल रहा है. सो आप एक क्वेरी डालते हो, इट्स अ क्वेश्चन दैट इज पोज्ड इन अ पर्टिकुलर सिंटैक्स, एंड नाउ द software is going to search the database and return back the relevant articles and papers that are there in the query. So once I've added my query, if I click on add query, आप ये देखोगे it has added this query. If I write only student well-being and I search,
721 articles from the core of Web of Science selection. आप ये देख रहे हो? परमा मॉडल फॉर स्टूडेंट वेलबींग थ्योरी पे ही एक पेपर है, पहला पेपर ही थ्योरी पे है, परमा मॉडल ऑन स्टूडेंट वेलबींग. एक जगह आएगा स्टूडेंट वेलबींग एंड एकेडमिक अचीवमेंट. स्टूडेंट वेलबींग लीड्स टू एकेडमिक अचीवमेंट. आपको आउटकम वेरिएबल मिल रहा है. दीज आर इंपॉर्टेंट पेपर्स दैट आर देयर. So you can read the abstracts and also make your coherent sense whether you would like to take this paper or not. This is giving you a scoping review. I hope you know what is a scoping review and how it is different from a bibliometric, traditional, narrative reviews and all that. That must be included in SLR. वो आपका I am presuming कि ये सब हो चुका है. Then through classroom intervention, promoting student well-being through classroom intervention. This was an experimental research that was done for student well-being. So they came up with what is the independent constituent variable जिस पे student well-being की बात हो रही है. उन्होंने स्केल नहीं बनाया, क्वालिटेटिव रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करके कुछ बातें बताई. तो ये तो थे 721 पेपर्स. इन नो कैपेसिटी एज अ ह्यूमन बीइंग कैन आई रीड 721 पेपर्स फॉर वन construct. And that too, there may be many which are just using student well-being as a phrase. So what do? I go back to my advanced search, and if you see here, there are three operators that are available to you: and, or, and, not. What is and? Include whatever I am putting up as a search operator, include both and return it. If it is or, either this should be there or this should be there. And में क्या होना चाहिए? दोनों essentially इकट्ठे होने चाहिए. और में या तो ये हो या ये. And not में जैसे हमने करा था student well-being on university students. We wanted to study student well-being of MBA and BTech professional courses. So student well-being of students at the school level is going to be very different. It's going to be entirely different. The lookout is going to be entirely different. So I needed to screen out papers, not include papers which is being done at the school level. Are you there? So these are the three. This is how you can use it. I'm just telling you why you need to use not. So here when we did student well-being and university. Now do you see that what I have done is I have put an asterisk within quotes का मतलब है exact आपका reference पे वो वापस देगा. Asterisk का क्या मतलब है? University, universities, university apostrophe s, by apostrophe s. University का सारी universities और university, particular university, सारी चीजें include करके. So we got this, and what we needed to do was you needed to delete this query, and we wanted to add this new query and search. We come to about 300-400 papers got deleted. Are you there with me? This is only the first step Boolean. What we actually applied was this big syntax because we wanted to include the sample, we wanted to include other things as well. So we actually came down to 243 papers that time. And then we selected all those through, we scanned all those 243, scopus से भी निकले, फिर उनके बाद उनके common papers हटा लिए, that is the Spark 4 SLR protocol, and then we got our final list. अब suppose मेरे पास finally कितने papers होने चाहिए कि मुझे लगे कि मेरा systematic literature review का paper लिखा जाएगा. So Sumedha has written a paper on 35, teacher as a servant leader, खाली 35 papers पे हमने SLR publish करा है. If the concept is very new, even 35 papers are enough. And it's a published paper. It's already there in the public domain. So you don't need to worry about how many papers. You need to worry about what we just said. You need to worry that all the papers that you have taken up should help you to fill these gaps, fill these the divisions, the boxes that we have just created. So theories, all the theories are listed down. Context. It was studied in USA context, China, Australia, Spain, on nursing students, on international students. Then it was also methods. There were different methods that were used. ANOVA, MANOVA, किसी ने multivariate regression भी लगाया हुआ है. खाली student well-being पे, one statement पे. हाँ जी. Ma'am, I read a paper therein the author was using TCCM plus EDO and plus some other framework as well, and he specifically categorized context differently and country differently. In the context, he was specifically taking the industry, hospitality or retail or supply chain in that ways. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. कॉन्टेक्स्ट अपने कंट्री नहीं कह रहे हैं, हम उसे कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं. He took
country separately. That's true. So context का literally English meaning क्या होता है? In what context do you want to study? If you want to study in the industrial context, it is fine. If you want to study in the global country context, then it is fine. We have the discretion to decide what is the context. We decided on domain and sample plus country. आप ये देखेंगे इसमें हमने 3 चीजें ली हैं. All the countries and population. हमारे लिए context was countries and population. आपके लिए context can be whatever you decide, depending on what is your style, right? So this is the discretion of the author. There is nothing wrong with it, and you can combine many of the frameworks. That's also appropriately identified. That's acceptable in this. Okay, then we come to antecedents, decisions, and outcomes. Are you there with me? So these were the multiple antecedents that came up, and this is the final paper. तो पहले ये divisions नहीं थी, cognitive, behavioral और environmental divisions नहीं थी. पहले ये खाली एक list थी, और ऐसे indicators की एक list थी, और outcomes की एक list थी. ठीक है? तो जैसे मुझे research paper से मिला, I just put it up in a table formula format, and then I decided now the biggest problem is how do I select and come back to this model. कैसे पता चलेगा कि यही 3 लेने हैं? कौन बताएगा कैसे पता चलेगा? Anybody who can take a guess? हाँ जी. One चीज saying it frequently जो टॉप हो रहा है, जिसने सबसे ज़्यादा बात की हो गई, ये most important. जैसे आपने स्टडीज पढ़ी हैं, स्टूडेंट वेलबींग के आर स्क्वायर इन पे डिपेंडेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा आर स्क्वायर है, जिसका सबसे ज़्यादा बीटा. मेटा एनालिसिस जब करते हैं, so वहाँ से आप निकाल सकते हो. That is one. What else? The correct way of doing it is, हमने we decided on, the first step is decide on which theory of well-being will you adopt. So we decided on the social cognitive theory. Social cognitive theory क्या कहती है? Environmental factors, behavioral factors and cognitive factors impact well-being. This is the most read theory, and this theory is backed up by multiple research papers. Multiple. So mostly well-being की जो theories हैं, they are basing out of the social cognitive. उनकी extensions है, reciprocity theory भी लगा रहे हैं और assistance theory भी लगा रहे हैं, उसी की extensions है. So हमने सोचा चलो हम ये उठा लेते हैं. अब हमारे पास antecedents सारे थे. The first tool was, let's see if you can classify the antecedents into environmental, behavioral and cognitive. Are you there with me? Where will you get it again? In the paper? It is an environmental antecedent, it is an IDV is environmental in nature, or cognition, it is impacting the cognition of the respondent. वो आपको पेपर में ही लिखा मिल जाएगा, तो आपने उससे classify कर लिया. Now I have the list as it appears in the paper, where I have highlighted certain antecedents to be cognitive, certain to be behavioral and some to be environmental. Is everybody with me on this? अब इसमें भी लिस्ट तो बहुत सारी है. अब इसमें से कौन सा लें और कितने लें? Now I conduct a focus group. The first qualitative research that I would like to. First qualitative कब की हमने? जब हमने keywords decide किए. Yes or no? क्योंकि कीवर्ड भी मैं अपने मन से नहीं लगा रही हूँ. मैंने एक्सपर्ट से पूछा कि कौन से कीवर्ड्स डालने चाहिए, क्योंकि इट्स द बेसिक थिंग इन द सर्च. सो कीवर्ड सिलेक्शन इज इंडक्टिव रिसर्च. कैसे पता चलेगा क्या कीवर्ड्स? स्टूडेंट वेलबींग क्या है आपको? व्हाट इज स्टूडेंट वेलबींग? So there is where I get my keywords. So student well-being and happiness, student well-being and career resilience, student well-being and whatever. जो भी लोगों ने बोला. Are you there with me? Then I decided on the sample. I said professional courses. तो मुझे समझ आ गया कि and university. क्योंकि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं. तो सैम्पल सिलेक्शन हुआ, वहीं पे आपका कीवर्ड सिलेक्शन जो बुलियन टेक्स्ट है वो चेंज हो गया. इसी तरह ये मल्टीपल चेंजेस मैंने आपको बताया, मैं आपको पूरा नहीं बता रही हूँ बिकॉज वी हैव पॉजिटिव ऑफ टाइम. आई वांट टू गो टू द रियल थिंग सून. आई एम जस्ट गोइंग बैक सो दैट आपका जो गैप्स है वो प्लग इन हो जाए. So that is where we decide on it. Now what we did was we conducted the second focus group where we asked them, this is a list and we want to follow the social cognitive theory. And according to the social cognitive theory, these are the cognitive, behavioral and environmental antecedents. Now you tell us, the entire focus group, you know the drill, isn't it? So you tell us rank. You can do the Delphi method, you can use the nominal group technique, you can use the simple focus group. इसमें से इनके लिए जो most important निकले, Are you there with me? तो हमारे आए 3 वेरिएबल जिससे बना ये मॉडल. अब फोकस ग्रुप ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का होता है. 10 लोगों के बेसिस पे मैं
अपना मॉडल बना दूँ PhD का? नहीं, अब मुझे बैक करना है इसको रिसर्च से. Now whatever she was saying was relationship, arrow. अभी तक तो सिर्फ गोले बने हैं. arrow कहाँ से कहाँ जाएगी? From PIS to SL जाएगी कि SL to PIS आएगी? ये कौन बताएगा? Are you there with me? Now you can go to the literature and create an Excel sheet which is talking about, you list down all these antecedents, SL, PIS, PE and SWB together. Similarly, you talk about SL, PIS, PE and SWB here. So we are making an Excel sheet. Is everybody with me? Right? Now what I do is, I categorize papers and see how many papers talk about SL to PIS. How many papers talk about this relationship? And how many talk about PIS to SL? Are you there? PIS to SL. So I will get the list of number of papers and with the citations. Now I can decide that which direction I would like to follow. Are you there with me? So most of the authors are saying SL to PIS to SL. So I also pick up my arrow from PIS to SL. That is how you do theoretical modeling. हवा में नहीं होती है आपका इसमें. अब इस मॉडल पे what is the theoretical underpinning? SGT theory. Are you there? Social cognitive theory, which is SCT, sorry. Social cognitive theory. Social cognitive theory talks about cognitive, behavioral and environmental. So this was environmental, this was cognitive and this was behavioral, antecedent to relevance. Have you got it? So now I have got my model which is based out of social cognitive theory. All my arrows are social cognitive theory भी आपको बताएगी कि cognitive leads to behavioral और behavioral leads to cognitive or whatever. Environmental leads to behavioral. वहाँ से भी आपको arrows की hint मिलेगी. But main hint आएगी हमारी इस Excel sheet से. This is basically called as what did we used to call it with the relationship name, not dimension table. This is relationship grid. Relationship grid is which construct is related to which construct on the basis of the citation. Yes. Ma'am, in case of theoretical underpinning that we are giving, how many theories should we mention? Can we mention more than one? See, for my SLR, I have mentioned all theories. Can you see all of these theories? So when I'm writing from my model, I can write multiple. You have to pick up one or maximum two theories. So I can pick up, like suppose the one you said that SOR is the theoretical underpinning that I can give for my model. Yeah. Supposedly I picked up that as my core theoretical model, on basis of which I prepared my model, and then one theory which talked about my stimulant, which was primarily my discussion. So I can pick one theory for it. Of course, it's very good if you pick one theory. Logically जब हम काम करते हैं तो एक ही theory निकलेगी. जब हम illogically काम करते हैं और हम theory से नहीं लेते और इधर उधर के papers हम खाली वो grid के basis पे बना लेते हैं, तब आपको जब reviewer पूछेगा कि what is the theory तो आपको समझ आएगा कि एक theory से तो encapsulate ही नहीं हो रहे. अब हमें दो theory की help चाहिए. तब आप दूसरी theory लेते हो usually. या फिर बहुत ही novel idea हो. For example, appropriation पे हम काम कर रहे थे, generative AI appropriation. उसमें एक थ्योरी ही नहीं है बिकॉज जनरेटिव एआई इज टू न्यू. इट्स टू न्यू. अभी थ्योरीज डेवलप हो रही हैं तो उसमें एक ही थ्योरी से सब कुछ नहीं निकल रहा बिकॉज इट इज नॉट अ फुल थ्योरी. आर यू देयर विद मी? सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर वर्क यू मे पिक अप वन मैक्सिमम टू थ्योरीज. हाँ, आई मेंशन्ड ऑल द थ्योरीज दैट पीपल हैव यूज्ड इन वेलबीइंग क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इज वेलबीइंग नॉट स्टूडेंट वेलबीइंग. No, constructs are based on the antecedents could be classified into social, cognitive and behavioral because I wanted to use SCT. हाँ, फिर उसमें से थ्योरी बेस्ट वाली देखी कि कौन सी मोस्ट इफेक्टिव थ्योरी है. फिर मैंने देखा कि एंटीसीडेंट्स को क्या मैं इस थ्योरी के हिसाब से आइडेंटिफाई कर पाऊंगी कि नहीं. हो सकता है मोस्ट इफेक्टिव थ्योरी से आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, आपको दो थ्योरीज चाहिए. Exactly. Yeah, almost all theories. So that is the reason when you are studying the abstract, आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि थ्योरी कौन सी इम्पोर्टेंट और कितनी बार रिपीट हो रही है. अब ऐसा तो नहीं है 234 पेपर्स में 234 थ्योरीज तो नहीं है यहाँ पर, 10 या 15 है खाली, तो रेपिटेशन है. कौन
And once you get this kind of a paper published, then you are safe. Because now the reviewers have accepted कि हाँ ये technique थी. पेपर का मैं आपको पेपर दे चुकी हूँ जी, मैं आपको ये पेपर्स दे चुकी हूँ जी हाँ. गूगल ड्राइव के लिंक में एक डेटा सेट है जो यूजलेस है, बस वो मेरी गलती रह गई, उसको हटा दीजिएगा. बाकी सारे पेपर्स आपके पास हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट. ओके, तो ये पेपर आपके पास है, बिल्कुल घबराए ना और इसी को बेस बना के काम करते जाए. सो आई हैव गॉट द एंटीसीडेंट्स. नाउ देयर इज व्हेन आई गॉट माय एंटीसीडेंट. डिसीजंस वर द, नाउ डिसीजंस हु विल टेल मी what were they for? Dimensions. Are you there? Dimensions. So what did I do for the dimensions? We are going to come back to this later because I missed on one particular question that we had in the last AGB model. I said I'm going to start with it, but somehow we started on a different line of discussion. Dash mode रह गया था, तो हम अब dash mode पे आते हैं. We're going to continue, once we are done with the dashboard, we're going to continue from here as to how you create dimensions and create items out of the dimensions. I mean, is it fair? If we include more diagrams in the literature, the chances increases. If you use concrete outcome for the reader, only then the literature review is published. आप ये देखें सर, अब again it will get me back to the, once you read this paper you will come to know that we have identified 7 gaps. Knowledge gap, population gap, methodology gap, empirical gap, empirical knowledge gap. So we have read in literature paper what the author who they cover the country wise, domain wise. हमने सब कर लिया ना, TCCA वीडियो में सब कवर हो गया. Country wise भी हो गया, domain wise भी हो गया ना सब कवर. जितनी अच्छा रिप्रेजेंटेशन आप दे पाओगे उतनी जल्दी पेपर छपेगा. जितना कंक्रीट आउटकम ये कभी होना चाहिए. Okay, now let's come back to our quiz. So we had these 3 constructs. We were talking about ASAT, ACB and AGB, right? ASAT measurement model 1 was AGB, measurement model 2 was ASAT and measurement model 3 was ACB. Who's going to tell me what is the difference between measurement of, अब ACB तो LOC है तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो directly from the variables है. What is the difference between ASAT and AGB? Can you identify the difference? हाँ जी. Type of arrows that are going from AE और CA की जो items में जा रही है वो तो same है, मगर ASAT to AE CA अलग है और AGB to CGB, PGB, FGB to AGB अलग है. Very good. Reflective and formatted. So one is the reflective, खाली reflective? reflective and that is reflective formatted. Which is reflective formatted? AGB is reflective formatted. अब आप मुझे बताएंगे formatted का मतलब क्या? What is formatted and what is reflective and how do I classify? मैंने क्यों ये दोनों scale मैंने बनाए हैं. We constructed these scales. Only ACB was taken from a standardized instrument. क्यों मैंने उसको रिफ्लेक्टिव बनाया और क्यों फॉर्मेटिव बनाया? मैम AGB जो है वो CGB, PGB, SGB, FGB से बन रहा है, फॉर्म हो रहा है. वो तो ठीक है, मगर आपको कैसे पता चला फॉर्म हो रहा है और रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा? मैम 2 तरीके से we can determine it. One is from very naturally the literature that we are reading. Second is in case. Literature will not tell you whether the dimension is reflective or formative. No particular concept can be dropped. It will change the entire meaning of the definition. How do you say before doing the research कि ये नहीं हो सकता? Ma'am, they cannot be interchanged. आप जो बातें कर रहे हो वो after the research की है. जब आपने analysis कर लिया है उसके बाद की बातें कहानी सुना रहे हो मुझे. According to the measurements I'm not talking. I am talking about the definition of meaning of the construct. Let's suppose a particular construct is made up of 4 things. Even if I drop one of that particular construct that is making it, that I mean the definition would change. If I do not take I am with you. Now you answer my question. If I do not take one thing, my definition would change. But in case of reflective, even if I drop one thing, then the definition would. That's okay, but how do you decide on reflective format at the first place? ये तो आप उनके characteristics बता रहे हो मुझे कि उसमें drop हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता. और आप मुझे आंसर करो, service
हाउ? तो एक में एंटीसीडेंट्स है, उसमें कॉन्सिक्वेंसेस है। एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस तो स्केल में आते ही नहीं। एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस तो इनर मॉडल का पार्ट है। स्केल में तो डायमेंशन आता है खाली। कोरिलेशन आप मुझे बताओ, सर्विस क्वालिटी पहले रिफ्लेक्टिव था, अब रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव क्यों है और कैसे है? आपके हिसाब से तो वहाँ कोरिलेशन और ये जो जितनी आपने कहानी बोली है, ये जो कहानी है वो गलत नहीं है, वो सही है, मगर ये एनालिसिस के बाद के चेक पॉइंट्स हैं। इनिशियली मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं रिफ्लेक्टिव बनाऊँ कि फॉर्मेटिव? सो फॉर दैट लेट्स डू अ लिटिल क्विकली, लेट्स डू अ लिटिल टेक अ लिटिल क्विज। स्किपिंग दिस, इसमें मैंने आपको सब करा दिया ना। आईडीपी टीवी मॉडरेटर कंट्रोल वेरिएबल, माँ का वेरिएबल रह गया, बस मुझे रिमाइंड कर देना। इनर मॉडल आउटर मॉडल सबको ये सारे पता है? ओके, सो दिस वी आर गोइंग टू स्किप। ओके, एक और कहानी, ASAT और AGB, इज इट अ यूनिडायमेंशनल स्केल और अ मल्टी डायमेंशनल स्केल? ASAT एंड AGB, ASAT एंड AGB, क्यों मल्टी कह रहे हो आप? एक तो ने एंटीसीडेंट्स कहना बंद कीजिए। एंटीसीडेंट्स आर IDVs. When we are talking about constituents, then they are not antecedents, right? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। They are understood in terms of dimensions. That means ASAT is understood in terms of AE and CA, that is 2 dimensions greater than 1, so multidimensional, and AGB is understood in terms of 4, identified with 4 dimensions, so it is again multidimensional. What about ACB? क्योंकि कोई डायमेंशन ही नहीं है, डायरेक्टली ऑब्जर्व वेरिएबल्स है, तो एक ही डायमेंशन है, जो भी सीबी की डायमेंशन है वही डायमेंशन हमने अडॉप्ट कर। सो अनदर थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज यूनिडायमेंशनल एंड मल्टीडायमेंशनल। चलिए, अब नाउ लेट्स गो बैक टू, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स, यूनिडायमेंशनल एंड मल्टीडायमेंशनल। Multidimensional will always have a higher order, unidimensional will always be on the lower order, just like our ACB. Okay, so in this particular scale, this is a TIS, turnover intention scale of root 2013. ये यूनिडायमेंशनल है, मल्टीडायमेंशनल है? It is measured through 6 items. यूनिडायमेंशनल। एंकर पॉइंट क्या यूज हो रहे हैं? लिकर्ट, सिमेंटिक, क्या यूज हो रहे हैं? नो, नेवर टू ऑलवेज है। ऑपोजिट्स नहीं है। सिमेंटिक डिफरेंशियल, ये पता होना चाहिए हमें। हम इसको लिमिट लिखेंगे तो रिव्यूअर उड़ा देगा हमें। Have you got it? So TIS is on a semantic differential. मगर मजे की बात क्या है? semantic differential भी यूज हो सकता है सब में। अब इसका मतलब मैं ACB को semantic differential पे यूज कर सकती हूँ, एंकर पॉइंट्स, और बाकी दोनों को लिकट पे भी ले सकती हूँ। क्यों ले सकती हूँ? क्यों ले सकती हूँ? कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी? क्यों ले सकती हूँ? Who's going to tell me? This is a very difficult question. I can take any kind of scales. Anchor points, अगर मेरे PhD में 3 construct है तो मैं तीनों construct के anchor points अलग ले सकती हूँ. You understand what are the anchor points, right? Likert, semantic differential or whatever. I can take the anchor points as differently. Why? You're trying right. Go ahead. Very good. We are computing latent variable scores which are on the number line. इससे फर्क ही नहीं पड़ता क्या 1 to 5 पे हो, 1 to 7 पे हो, 1 to 8 पे हो. Yes or no? क्योंकि वो तो सबको एक नंबर लाइन पे एक नंबर के साथ ले आएगा, स्टैंडर्ड स्कोर के साथ। Are you there with me? So क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इनिशियली रिसर्च कहती थी नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाती है। अब टू अवॉइड कॉमन मेथड बायस, व्हाट इज कॉमन मेथड बायस? जो रिसर्चर बायस है, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा 1 to 5 पे डाल दूँ और उसके बाद सब क्या करेंगे? 5 करके बिना पढ़े। अगर 1 to 5 पे है, सिमेंटिक डिफरेंशियल है, अलग अलग स्केलिंग टेक्निक्स है, एंकर पॉइंट्स है, तो बंदा रीड करके आंसर करेगा। Are you there? Researchers bias कम हो गई, respondents bias कम हो गई, and then of course bias का क्या मतलब है? Error. Lesser the error, more robust my model. I told you everything is operated on the questions. So you have to reduce the CMP to the least extent. और आज की डेट में कोई पेपर नहीं छपेगा जब तक आपने CMP के बारे में ना लिखा हो. So common method bias, how do you deal with it? You deal with it through a
It is obsolete and it is not used at all now. Sumedha is not supposed to answer questions. हाँ जी, हरमन सिंगल फैक्टर इज ऑब्सोलीट, अब नहीं यूज होता. I did it in PLS. PLS में कैसे? By making Okay, so we use a absolutely disjointed, unconnected variable which is called as a marker variable to avoid CMP. तो मेरे क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए? डेमोग्राफिक, स्केल फॉर ASAT, स्केल फॉर ACB, स्केल फॉर AGB, control variable plus marker variable. Are you there? So how do I select the marker variable? कहाँ से आएगा marker variable? Where will I get my marker variable? ये मैंने आपको फिर से उसमें दिया हुआ है. I have already given you in the database that you have. Where is the yeah. So I have given you this marker variable का paper. सिमरिन का marker variable इसमें मैंने आपके लिए हाईलाइट भी करके रखा हुआ है. पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये है marker variables. आपने जो marker variable select करना है, it should be absolutely unconnected, unrelated, there should be zero correlation with your research. And why do we use a marker variable? I am doing research on OB, happiness and all the OB areas. So I have used fashion consciousness as marker variable for most of my research papers. So what is fashion consciousness? 3 लेवल से भी कितने आप फैशन कॉन्शियस हो, तो भाई इससे स्टूडेंट वेलबींग का तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला. अभी देयर, सो दैट इज देयर. आई विल यूज 3 स्टेटमेंट्स ऑफ फैशन कॉन्शियसनेस एंड इंक्लूडेड इन माय क्वेश्चन. एंड लेटर व्हाट आई विल डू इज आई विल अटैच इट टू द मॉडल एंड सी कि उसका R स्क्वायर पे इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज R स्क्वायर? R स्क्वायर क्या होता है? क्या नहीं समझ आया? आया क्या समझ आया? चलो. मार्कर वेरिएबल्स को इसलिए स्पेसिफिकली लिया जाता है सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि उसका कोई रिलेशन तो नहीं है. जो हमारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो ठीक है. अगर रिलेशनशिप आ जाता है 0.1 डेल्टा 0.1 से 10% से ऊपर R स्क्वायर चेंज हो जाता है, तो क्या मतलब है इस बात? हम डेटा खराब है. हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. डेटा खराब है क्योंकि डेटा में सबने मार्कर वेरिएबल को फैशन कॉन्शियसनेस डिपेंडेंट वेरिएबल बन गई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है. मतलब फैशन कॉन्शियस मैं कितनी हूँ विल डिफाइन माय टीचिंग इफेक्टिवनेस. It won't. It should not. Logic does not prevail in this. Are you there with me? So marker variable should always be included. Check, attach it to R square to the final TV. पहले विदाउट मार्कर वेरिएबल रन कीजिए, फिर मार्कर वेरिएबल के साथ रन कीजिए. डिफरेंस डेल्टा R स्क्वायर निकालिए. अगर 10% से लेस है, you are good to go. You are free from common method bias. So अब हरमन सिंगल फैक्टर को भूल जाइए. अब हमें करना है मार्कर वेरिएबल, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द स्केल. अगर कोई फैशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, फैशन कॉन्शियसनेस से निफ्ट में काम कर रहा है, तो कैन फैशन कॉन्शियसनेस बी अ मार्कर वेरिएबल? Why? Because it is a related. You have to pick up those variables which are unrelated to your study. ये आपको दे दिए मैंने लिस्ट. मैम एवरीथिंग कम्स फ्रॉम लिटरेचर. ये आपको मैंने लिस्ट दे दी है. सिमरिन के पेपर के पीछे रेफरेंसेस है सारे. किसने कब कब ये वाले वेरिएबल्स मार्कर वेरिएबल की तरह यूज किए. गो बैक टू दैट पेपर. वहाँ पे उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको. अगर आपसे रिलेटेड है, जैसे फॉर अस नरेश के मल्होत्रा हैज यूज्ड फैशन कॉन्शियसनेस एज अ मार्कर वेरिएबल इन वन ऑफ दिस पेपर्स व्हिच वाज द रेफरेंस इन दिस पेपर. So we picked up that paper, we picked up the questions from that paper, attached it to our question. काम खत्म. Right? So now we are done with the marker variable. Now let's go back to our discussion of the arrows. And we were on. Where is my PPT? Can anybody see my PPT? Yeah, there it is. Hanji, so this is a unidimensional scale on semantic differential. CMP कम करने का एक तरीका होता है कि आप एंकर पॉइंट्स अलग ले लो, लोग पढ़ के आंसर करेंगे, और दूसरा तरीका होता है मोर रोबास्ट तरीका is marker variable. So I have introduced marker variable to you because it has to be a part of the question.
Are we there? Okay, now let's go ahead. This is a questionnaire that has been, just a second. This is a questionnaire developed by Sumedha only, and it has, okay, now is this a unidimensional construct or a multidimensional construct? Positive organizational behavior. Unidimensional or multidimensional? Is it visible? Multi or uni? जोर से बोलिए. Multidimensional. Why multidimensional? Clear? इसमें इतनी डिफिकल्टी है ही नहीं. 2 डायमेंशन है, इसमें मल्टीडायमेंशनल है. पहला डायमेंशन 4 स्टेटमेंट से मेजर हुआ है और दूसरा डायमेंशन 3 स्टेटमेंट से मेजर है. अब आई रियल कहानी. रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव क्यों और कैसे? ठीक है, चलिए. Who's going to read this for me? Somebody has to read this for me. I have been talking since long, so please do read it for me. Who's going to take this plunge? आपको यहाँ आके पढ़ना पड़ेगा because we are on Zoom. So one of you may please take the plunge. आइए, कोई एक जना आप आ जाओ. मैंने बताया ना, इंडिया में वॉलंटियर नहीं करते हैं. Can you try answering that formatic and reflective one before you start with the explanation? May I please try? Yeah, go ahead. Ma'am, any change in the, the factors, when it is leading to, if there is any change in those 4, if it leads to a change in the main construct, then we'll call it as a formative one. No. Factors are latent. They are hidden. Change कहाँ होना चाहिए? Factors के change से कोई change का फर्क नहीं आएगा. Change कहाँ होना चाहिए? आप बहुत close हो सही आंसर के, मगर change कहाँ होना चाहिए वो आप मेरे को बताओगे. Factors पे change पे फर्क नहीं है. ठीक है? अब किस change पे फर्क आएगा? Once I explain this, आप ही से पूछूंगी मैं कि आपको समझ आएगा. ठीक है? Ma'am, can we start? People in the online mode, are we audible? We must be. चलिए. Read the question. Yes, please read the question on life satisfaction. Do you find them similar? Scale 1. Life satisfaction scale. First, in most ways, my life is close to my ideal. Second, The conditions of my life are excellent. Third, I am satisfied in my life. 4. So far, I have gotten the important things I want in life. 5th, if I could live my life over, I would change almost everything. अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना. Life satisfaction. I have got a scale. These are the 5 questions, and I have come to measure your life satisfaction along with mine. Life satisfaction अभी बनेगी कि पहले से है? कुछ लेवल सबका है कि नहीं है? है कि नहीं है? है. इसका मतलब जितना लेवल है, quantum of life satisfaction that you have in you right now. If I give you this questionnaire with 5 items, will I be able to map the reflection of how much life satisfaction do you have? Yes or no? So what pre-exists? Life satisfaction or the item? What is pre-existing? What are the items doing? They are mapping how much life satisfaction. Are you there? Similarly, अगर happiness है, happiness तो है, चाहे कम में चाहे ज़्यादा, जो भी है, कुछ happiness तो सबके पास है. कितनी happiness? On these 5 questions, if I measure, will I be able to give a reflection of how much happiness? Are you there? Is everybody with me? When the latent construct comes first, is pre-existing. It is called as a reflective scale. अभी पहली बात हुई है. जार्विस ने 4 golden rules दिए थे, चारों बातें करनी है, तब बताएंगे reflective. पहली बात समझ आ गई. लाइफ satisfaction पहले से थी, हमने मैप किया कितनी थी. So on the basis of the questions. So questions come later. Life satisfaction is pre-existing. Second, इन questions में से ये question similar है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा similar है? ज़्यादा similar नहीं है? I am satisfied with my life and in most ways my life is close to my ideal. Not the same thing? Almost the same thing. बहुत ही ज़्यादा similar है. Correlation high? Very high correlation? Are you there with me? High correlation. मान गए सब के सब? ठीक है. अब मेरे पास टाइम है कम और मैं 5th क्वेश्चन हटा रही हूँ और मैं 4 क्वेश्चन से मैप करने की कोशिश कर रही हूँ. आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन क्या मेजर हो जाएगी? क्या मेजर हो जाएगी?
ठीक है, सिमिलर तो हो ही जाएगी, 3 बार पूछो या 4 बार पूछ लो, घुमा घुमा के, इधर से नाक पकड़ो, इधर से नाक पकड़ो, हो ही जाएगी। Is everybody with me? Now last, क्या ये सारे सेटिस्फैक्शन की ही बात कर रहे हैं या किसी और चीज की बात कर रहे हैं? क्या ये एक ही चीज की बात कर रहे हैं? Are you there with me everyone? इसका मतलब they are all talking about satisfaction. Life satisfaction का जो concept है वो satisfaction से आ रहा है, हर कुछ satisfaction से आ रहा है। Yes or no? The domain that it is being derived from is one. It's a common domain. Would you agree or not? इतना याद रखेंगे और नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं और फिर उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन क्लियर करेंगे। चलिए मैम, अब क्या हो रहा है कि मैम ने, मोनिका मैम ने मेरे आने से पहले आपको दे दिए फीडबैक फॉर्म, अब आप भर दो जी फीडबैक। तो आप क्या बोलोगे मोनिका मैम को? हमें क्या पता कैसे बनना है फीडबैक? आप पढ़ाने तो दो, लेट द फिनोमिना हैपन, फिर जब वो पढ़ा लेंगी उसके बाद हम मैप करेंगे। दैट मीन्स माय फीडबैक विल बी formulated after the phenomena. Are you there with me? It does not pre-exist. Is everybody with me on it? तो फीडबैक जो है पहले नहीं ले सकते आप कहोगे कि आप पढ़ा लो और उसके बाद हम फीडबैक लेंगे। No, no, it's okay. It's अब आप मेरे को ये बाकी के पढ़ दो। अच्छा, तो ये हमारा यूनिडायमेंशनल स्केल था, हमने 7-8 क्वेश्चन पूछे, अब मैम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस, आप ध्यान से सुनिए। हाँ जी मैम। Question is about faculty feedback. First is my teacher has good communication skills. And my teacher has a good knowledge base. Third, my teacher is able to understand me. My teacher is always well dressed. My teacher is punctual. My teacher is innovative. My teacher is motivated. ठीक है, अब पहली चीज, इनमें से क्या ये कोरिलेटेड है आपस में आइटम्स? क्या ये जरूरी है किसी की गुड कम्युनिकेशन स्किल हो तो उसका नॉलेज बेस भी अच्छा है? कई लोग स्मार्ट होते हैं, वो बोलने की खाते हैं, आए कुछ नहीं आए गोल गोल घुमा के क्लास ले ली जाती है, कोई टेंशन नहीं है, क्लास पूरी पक्की है अपनी, टेक अवे है कि नहीं है वो नहीं पता हमें, नॉलेज बेस की कोई गारंटी नहीं है, मगर हाँ कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आर दे कोरिलेटेड? मिनिमल। देखिए थोड़ी बहुत कोरिलेशन तो इंडिया में कौवा बैठता है और गेस्ट आ जाती है, इसकी भी है, लोही गिरी और गेस्ट आ गए, इसकी भी है। तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज स्पूरियस कोरिलेशन, हमारे कल्चर में दी है ये कोरिलेशन। तो आज भी मम्मी ये मानती है कि अगर कौवा बैठेगा और काय काय करेगा तो गेस्ट पक्का आ रहे हैं, नहीं ऐसा होता है। सो दीज आर सर्टेन परसेप्चुअल बायसेस एंड एरर्स व्हिच आर इनबिल्ट इन द सिस्टम, इसकी वजह से कुछ कोरिलेशन तो आएगा ही आएगा, यू हैव टू बी श्योर ऑफ इट। दिस इज कॉल्ड एज स्पूरियस कोरिलेशन, उसको छोड़ देते हैं। बट क्या इनमें हाई कोरिलेशन है? टीचर इज पंक्चुअल का मतलब है टीचर इज इनोवेटिव, फॉरगिविंग है, मतलब ये सारे डिफरेंट है। नाउ कैन आई रिड्यूस एनी वन ऑफ देम एंड थिंक कि मेरा फीडबैक कंप्लीट हो जाएगा? कैन आई डू दैट? कैन आई ऐड एनीथिंग? थिंक ऑफ एडिंग समथिंग टू द फीडबैक, थिंक ऑफ एडिंग बियॉन्ड दिस। Answers the query is good communication skill, no? Able to understand me में भी आ गया, good communication skill में भी आ गया। Able to understand me? Helpful टीचर का कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है सर, हेल्पफुल नहीं होना टीचर को, Teacher helps to अप्रोचेबल, अप्रोचेबल, अप्रोचेबल का क्या मतलब कह रहे हैं आप? Able to understand me भी नहीं है। availability after your class. ये अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्लास ना इंडियन सेटअप में प्राइवेट कॉलेजेस का सेटअप है। My teacher give me notes. हाँ जी प्रियंका, प्रियंका कैन बी आंसर, वी हैव वन ऑनलाइन पार्टिसिपेंट। प्रियंका सलूजा, either switch off the mic or talk what you have to. प्रियंका सलूजा, can you hear me? या तो गलती से हो जाओगा, no worries। हाँ जी हम यहाँ पे थे, तो आप बेसिकली जो भी ऐड करोगे वो इसमें इंगल्फ हो ही जाएगा किसी ना किसी तरह, ठीक है? इसका मतलब कुछ और ऐड करने की क्षमता नहीं। मैम टीचर प्रोवाइडिंग नोट्स अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। यार ये ना ये हिंदुस्तानी टीचर वाली बातें नहीं करनी है आपने। सबसे बड़ा अंडरस्टैंड नहीं आएगा। Understand is big thing. I may have notes, I may
tech savvy, teacher should be tech savvy. टीचर शुड बी टेक सेवी की कितनी एआई अप्रोप्रिएशन भी आ जाएगा. आप बताओ क्या चीज रह जाएगी? सब कुछ आ गया. यस और नो? दैट मीन्स एज ऑफ नाउ गिवन द सर्कमस्टांसेस आई कैन नॉट ऐड एनीथिंग. लेटर हो सकता है कुछ ऐड हो जाए, नेक्स्ट फ्यू इयर्स टू कम कुछ ऐड हो जाए, तो नोट्स का नहीं मैं कह सकती. एज ऑफ नाउ नथिंग कैन बी एडेड. नाउ my teacher has good communication skills is coming from communication. The concept of communication. Ma'am, आप आराम से बैठो. It's okay. So my teacher has a good knowledge base is coming from wisdom, domain of wisdom or knowledge or technical base. My teacher is able to understand me is coming from philosophy or probably psychology. Are you there? My teacher is well dressed is coming from fashion technology. My teacher is punctual is coming from time management. My teacher is innovative is coming from creativity and innovation. My teacher is forgiving is coming from philosophy and psychology. Nothing is coming from the same domain. In other words, can I say for this scale the nomological network भाई बंधुओं का नेटवर्क होता है ना, जैसे हमारी फैमिली है, चाचा मामा दादा सब लोग कनेक्टेड है, ऐसे ही कंस्ट्रक्ट का भी अपना एक नोमोलॉजिकल नेटवर्क होता है. कौन कौन सी डोमेन से निकला है? इनकी सबकी डोमेन्स अलग हैं. डिफरेंट नोमोलॉजिकल नेटवर्क irrespective of go to life satisfaction. Same nomological network all coming under the purview of satisfaction. Are you there with me? So coming down to the golden rule of Jarvis, let's encapsulate quickly as to what we meant by the reflective and the formative scale. First and foremost, we are talking about two types of scales. We are talking about reflective and we are talking about formative. The seminal papers that you should be consulting for these reflective formative is Marco Sarstedt et al. For type of scales. Then you should also be talking about Diamantopoulos 2013. Again talks about reflective formative. Jarvis et al. 2013 reflective formative. सारे पेपर आपको दिए हुए हैं, हाईलाइट करके दिए हुए हैं कि कितना पढ़ना है उसमें. तो वो आप बिल्कुल हाईलाइट वाला पोर्शन साइड करिए, हाईलाइट वाला ही पोर्शन पढ़ लीजिए, आपका काम हो गया. So what is the first thing? Construct pre-exist. Yes or no? यही बोला था हमने. Latent construct is pre-existing. और यहाँ पे क्या था? Latent construct is formulated. Form. बाद में after the phenomena. Is everybody with me? Yes. Second, Jarvis rule. How are the items related to the construct? Items are a reflection of the construct. Why? Because the construct exists first. ऐसे चल रहा है रिग्रेशन. समझ आ रही है आपको? कोरिलेशन ऐसे हो रही है. Yes or no? इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू है, उसका क्वांटम हम मेजर कर रहे हैं थ्रू द आइटम, राइट? और इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है आइटम्स आर फॉर्म. इट इज फॉर्मिंग. उसकी वैल्यू से मेरी एक वैल्यू बनी. Have you got this here? Third is correlation and covariance. They will be correlated, highly correlated, and they will also covary. Your correlation is negligible or very low. ठीक है? Almost negligible or low. Fourth, same nomological network. And यहाँ पे बात हो रही है different nomo network. Are you there? Have you got it? अब आपको मुझसे पूछना चाहिए कि मैम बट ये तो नहीं बताता ना कि सर्विस क्वालिटी पहले रिफ्लेक्टिव था और अब फॉर्मेटिव कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? ये चार चीजें समझ आई आपको? लेट मी शो यू द पेपर ऑल्सो, जिससे आपको थोड़ी सी कंफर्ट वैल्यू लेवल आएगी. लेट्स सी. जार्विस का पेपर ये है. ओके, जार्विस रूल दिखाता हूँ. ये जार्विस का पेपर है, जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, ए स्टार पेपर. बस इतना पढ़ना है. फॉर्मेटिव, रिफ्लेक्टिव. डायरेक्शन ऑफ कॉजालिटी फ्रॉम कंस्ट्रक्ट टू मेजर्स द कंसेप्चुअल डेफिनेशन, राइट? जो मैंने वो 4 पॉइंट लिखे थे वही है, थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में जो हमें समझ नहीं आती. ठीक है, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझा दिया कि हम क्या बात कर रहे हैं. यही 4 चीजें वो बात कर रहे हैं. नोमोलॉजिकल सेट और नेट ऑफ इंडिकेटर्स कैसे हैं, कोवेरिएशन कोरिलेशन कैसी है, कैसे वो आप दिखाओगे पिक्टोरिकली, और इसका क्या मीनिंग है. सो दिस इज जार्विस प्रिंसिपल. ऑल्सो when you are dealing with a unidimensional scale, then so it is fine. For example, ACB reflective scale है, मगर जब हम
बात करते हैं तो हमारे को ये बात दोनों लेवल पे करनी पड़ेगी, यस और नो, एंड वी ऑलवेज गो फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, ऑलवेज रीड आउटवर्ड टू इनवर्ड। क्यों? क्योंकि पहले तो आइटम था, आइटम से लेटेंट वेरिएबल स्कोर और लेटेंट वेरिएबल स्कोर से बड़ा स्कोर। सो स्टेप 1, दिस इज, टेल मी, इज इट मेजर्ड रिफ्लेक्टिवली और फॉर्मेटिवली? स्टेप 1 ऑफ AGB, step 1 of AGB, is it reflective? Step 2 of AGB, are you there with me? So this is a multi-dimensional higher order reflective formative mode. Have you got it? Let's come here. Step 1 is reflective. Step 1 reflective. Step 2. So can I say ASAT is a multi-dimensional higher order construct measured in reflective mode. फिल हो गया हमारा गैप। ऐसे टाइपोलॉजी के 4 टाइपोलॉजीज होते हैं जो यूजुअली एक्सेप्टेबल है। मार्को सार्स्ट्रिट का पेपर इज योर रेफरेंस सेमिनल पेपर फॉर द टाइपोलॉजीज। LOC ये भी मैंने आपको दिया हुआ है पेपर, हाईलाइट करके दिया हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला डायग्राम है, ये देखिए हाईलाइटेड है। All you need to do is understand. Formative, first is reflective. Can you see here it is reflective and here it is reflective. बाहर से अंदर आने की कोशिश करेंगे, reflective. This is reflective formative. Reflective here, formative here, just like our AGB, right? The third typology is formative reflective. तो पहले फॉर्म हुआ और फिर रिफ्लेक्ट हुआ, और सिमिलरली यहाँ पे है formative. These are the 4 options of scales that you can have whenever you are having a higher order multi-dimensional scale. Is that okay till here? कोई query आपके दिमाग में? Anything that comes to your mind that we need to solve before we go to why service quality initially was reflective and now measured in reflective formative? She tried to answer the question where she said that factors are leading to the construct differently, isn't it? Yeah. Is any change in the factors is going to change the value of the main constant? हमें ये ध्यान रखना है कि factors latent हैं, तो उनका change किस पे dependent है? तो किस में change होगा जिससे reflective formative बनेगा? किस में change होगा? Items में. Are you there with me? हर measurement यहाँ हो गया. Now you answered correctly. Have you got it? Because latent variable तो item से बन रहा है, तो कहाँ change होगा जो change आएगा? चलिए अब देखते हैं ये कैसे. Okay, this is an example. We measured service quality of a restaurant or a hotel through 3 questions. First, reflective measurement model में क्या था? I appreciate this hotel. I am looking forward to staying in this hotel. I recommend this hotel to others. More or less the same thing. Items कैसे formulated है? एक ही बात कर रहे हैं, correlated है, एक जैसी बात को घुमा रहे हैं. Reflective mode में है. सेकंड वाले ऑप्शन में अगर मैं क्वेश्चन इससे पूछूं, आइटम इस तरह चेंज कर दूं, आइटम चेंज कर दूं, द की इज आइटम चेंज करना है, तब सर्विस इज गुड, पर्सनल इज फ्रेंडली, रूम्स आर क्लीन, आर दे कोरिलेटेड? वी आर मेजरिंग द सेम थिंग वंस रिफ्लेक्टिवली. Same thing can be measured in a reflective format or in a formative. Are you there with me? Depending on how you put up the question. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरिलेशन है, ये डिलीट हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये बात की कहानी है. How you have asked your items is going to, and is there anything left which you have not defined, especially in case of formative scale, that you have to keep in mind. So your literature review is going to be very, very robust. I have spent about 8 to 10 years in writing scale papers. Trust me, we have been able to make only 2 formative scales. 10 साल की मेहनत के बाद भी 2 ही फॉर्मेटिव निकले, बाकी सारे रिफ्लेक्टिव बन जाते हैं, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है कि हम सिमिलर डोमेन्स एंड डायरेक्शन से डायमेंशन निकालते हैं. इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी स्केल के लिए क्या चीज़ है? आइटम. That's how you ask is going to talk about different kinds of calculations that might be there for the items. So going back to the story, going back to D of ADO or TCC, the second C of TCCM, dimensions and characteristics have to be very, very carefully dealt with, because every question
in a scale is going to come from the dimension. Are you there with me? Let's now go to the, I don't know how much time we have. Do we have time before lunch? Because this is going to be a new thing. न्यू कॉन्सेप्ट आफ्टर लंच, ठीक है. तो हम इसका खाना खाए बिना तो वैसे भी दिमाग भी नहीं चलता, तो हम इसके बाद करेंगे कि कैसे हमने डायमेंशंस बनाए. आई हैव वेरी लेस टाइम गाइस, प्लीज कम सून बिकॉज आई वांट यू टू स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर. तो हम रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव मेजरमेंट मॉडलिंग करा के जाना चाहती हूँ, CFA करा के जाना चाहती हूँ, तो आप आ जाइएगा टाइम से, ठीक है. थैंक यू, हैव अ गुड लंच एंड कम बैक. द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में ऑल्सो ग्रेट फॉर. और मॉड्यूल 3 में SLR के सारे पेपर्स मॉड्यूल 2 में है और मॉड्यूल 3 में CFA के सारे पेपर. तो आपको तीनों चाहिए. आप तीनों लिंक्स को सेव कर. लिंक आपका हमेशा एक्टिव रहेगा सो दैट लिंक इज विद यू. आई बिलोंग टू डॉक्टर नीरज कौशिक्स philosophy of teaching and learning. We should disseminate. It is not mine. It is always sharing. So ये link हमेशा active रहेगा. By chance कोई technical glitch हो, I am there. You can just shoot a mail. I will send back whatever you want. Even beyond, if I know something which is updated, I will send that. Don't worry about that. You are safe in terms of everything. हाँ, कुछ गलत मत आप जो गलत वाला डेटा सेट है फिर उससे आप घबरा जाओगे, इसमें उसको डिलीट कर देना. स्मार्ट सिटी वाला डेटा सेट वी विल बी डूइंग हैंड्स ऑन. हैव यू डाउनलोडेड द स्मार्ट PLS सॉफ्टवेयर, each one trial version? So we are going to be working on the software now. But before we work on the software, I'll give you a quick recap of what we have done so far. So we talked about theoretical modeling. We talked about how theoretical theory, TCM and ADO approaches will help you to identify with the theory, how to select your independent variables in the model, how to select your outcome variables in the model, how to define your construct through the defining variables. And now that we have defined the construct, now what happens is, I would want you to look at my screen. Is it visible? Oh. For online participants, is my screen visible? Oh. I think every time you guys log in, स्मार्ट सिटी करके होगा, स्मार्ट सिटी डेटा. Okay, so okay, so we were talking about theoretical modeling, we talked about reflective and formative scales, we talked about unidimensional, multidimensional scales. We also talked about how we would decide whether, how we formulate our question, we decide whether our scale goes for a reflective or a formative construct. Also, the nature of the construct will decide whether it will go for a reflective or a formative construct. So, nature comes from the literature review, बाकी जो आप questions बनाओगे उसके हिसाब से decide. Okay, one more thing that I want you all to know, which I could sense that there were few queries in terms of scale. What do we mean by adopted, adapted, and scale development? When you talk about a scale, the first category is called as adopted scale. Adopted scale is I have a standardized scale with me and I take it as is.
Are you there with me? So you are adopting it completely. That means आपने कुछ भी change नहीं किया, not even a statement, not even a anchor point, nothing. You have changed nothing. As is, you have taken the scale. That is called as adoption of the scale. Then the second thing that we can do is for standardized scales is there is something which is called as adaptation. Adaptation is basically when you adapt the scale to suit your sample or your population or your profile. Now, how far can you adapt and what is adaptation? So, adaptation is when you are making a change such that the soul of the question is not lost. For example, if I am asking a question on well-being, if there is a standardized scale on well-being and I want to adapt it to employee well-being, then instead of, and suppose the well-being is that of nurses, so I want to adapt it to IT employees, then instead of nurses, I change it to IT employees. That's it. So the essence of the question should be maintained. The essence should not be lost. Now, in many cases, the systematized scales or the standardized scales, there are two types of standardized scales, culture-free and culture-fair. Culture-free scales are those scales which are not dependent on the culture and you can use it as is. Is that clear? So, service quality, performance, email and Berry is a culture-free scale. So, whichever culture you belong to, whether it is US, whether it is Japan, whether it is Southeast Asian nations, any of the nations, you can use the circle scale as is, right? But when you're talking about, we very recently created a scale for generative AI appropriation. Now, in that case, what we were doing was, what we had to do was, we had to check the generalizability. You understand what is the generalizability? Generalizability is checking whether it is culture free or culture fair. Are you there? So we tested it on different cultures. For example, we tested it on India, we tested it on Poland and we tested it on Italy. So 3 countries we took and we collected data from 3 countries and we decided whether we tried to analyze whether the results were similar and we created invariance testing. You understand what is invariance testing? Variance तो नहीं है कुछ. अगर इधर के लोगों से रन हुआ तो कितना आया और इधर के लोगों से रन हुआ तो कितना आया, कि कोई ड्रॉप तो नहीं हुआ आइटम, कोई मतलब चेंज तो नहीं आया, आर स्क्वायर में चेंज हो या जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनमें कोई चेंज हो. तो वो we tested it for 3 countries only to come to a conclusion that our scale did not work well for Italy. And it worked perfectly well for Poland and India. So we were very perturbed as to now neither can we call it a generalized scale nor can we call it a culture free scale. Now what to do? So we understood and we had to go into the literature. As per the reviewer, we had to go and search the literature so hard to come to the conclusion as to what was common between Poland and India. What are the cultural dimensions that are common to Poland and India to identify this factor which came to our cognizance, where we could very clearly identify that Poland and India are near to collectivist cultures of the cultural theory, Hofstede's cultural theory. Are you there? So they said that Poland and India in the recent times they are under collectivist cultures, whereas Italy was an individualistic culture, clearly. So the next step that we did was we checked all the papers that were talking about Italy and appropriation, and we came to know that people felt that Italy was an individualistic culture. So we had an entire citation. This took a lot of time, just with one review comment that how can you generalize? And the reviewer was very sharp. Just with one statement and its factor loading, he could judge that there is something wrong with the Italian data. So he sent it to us that you please check. I don't think the ethical appropriation will not be valid for Italy. And he was an Italian himself. So he read through the questions, answered the question and said, no, we are, it's a difference in opinion. And then we had to recheck and we found out that Italy was working differently and Poland and India were working differently. So we had to say this in our paper, that the scale is valid for collectivist cultures like India and Poland who are near to cultures of India and Poland. And for individualistic cultures, please make or remake your scale. You cannot take our scale and apply it because you won't get the right results. So culture fair scale is the one which is fair for few cultures.
Just as in our case it was Poland and India, it was fair for collectivist cultures, but it was not culture free. But there are many scales like turnover intention scale. It is culture free scale. Service quality scale. It is culture free. Commitment, Allen and Meyer. That is culture free scale. There are multiple scales that are available that are culture free also. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जब हम स्केल बना रहे होते हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि हमें जनरलाइजेबिलिटी में चेक करना होगा. And the authors themselves declare that it's a culture-free scale. Yeah, because no, what in the scale development process, the last step is generalizability. So you have to apply to different contexts, different industries, different countries. Now again, context is individual specific. तो हमने इसको कंट्री वाइज किया था बिकॉज अप्रोप्रिएशन इज हैपनिंग कंट्री वाइज, ग्लोबली हो रही है अप्रोप्रिएशन ऑफ जनरेटिव एआई. तो हम इसको वी हैड अ वेरी big objective of calling it a culture free scale, but it did not work. Well, what didn't work. But that's how, that was the right methodology of calling it a culture fair scale. Are you there? Hanji. There is a resilience scale, resilience among nurses by Connor Davidson, I suppose, 2003, and it's from UK specifically. All the dimensions of resilience among nurses, if you use it on an Indian population, it will capture every dimension. But only few items in that particular scale were such that they were not suiting our hospital environment here, because here we do not have that kind of IT support that UK people have there. So only deleting few items from a scale, only deleting few items, but as it is taking it, No, you should not delete even a single item. I repeat, do not delete even a single item. If it is not pertaining to your culture, it will drop. जब आप वैलिडेट करते हो CFA में तो अपने आप ड्रॉप हो जाएगा. आप नहीं डिलीट करो. Not to your cognizance, because you feel that IT सपोर्ट इतना नहीं है. मगर अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भरवाओगे वो डेटा तो IT सपोर्ट है, जबरदस्त IT सपोर्ट है. आप समझ रहे हो? अगर वही चीज आप 2 3 सिटीज में कराओगे तो नहीं आएगी सपोर्ट. तो आप सिटी वाइज तो नहीं क्लेम करोगे ना प्रोजेक्ट, आप तो इंडिया के लिए बात करोगे. So do not delete items. Never delete items. There's one more point. Sometimes we are using proxy skills. Like अभी आप What's a proxy skill for the first time? मैम we use it as a proxy. जैसे डिनर का स्केल है, मैम आपने लाइफ सेटिस्फैक्शन का स्केल दिखाया ना हाँ. डिनर. It is used as a proxy for quality of life also. Okay. Now I tell you what. हाँ तो वो क्या केस? हाँ वो मैं बताती हूँ. वो केस है जहाँ पे स्केल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत है और आप अपना बना दीजिए. That is a methodological gap. Yeah. What is a proxy scale? Now I understand. Proxy scale is अगर हम happiness को measure कर रहे हैं job satisfaction से. Now when I did work on happiness at work of faculty of private colleges. Now happiness at work all over the world is measured only with one statement. Are you happy? Okay, so that is the statement. Scale 5 to 1 to 5, 1 to 7, 1 to 9, semantic differential, and the points were different. But only one item, are you happy? And it was working robustly with everything. Okay, even your happiness index that you calculate country-wise is only asking you this question: are you happy? How do you think you are? What is the quantum of happiness do you think you have in your life? That's about it, nothing else. So when we read the happiness literature, they said that happiness is a function of job satisfaction. Happiness at work. There were 2 types of happiness. Happiness, internal happiness and happiness at work. So if you are talking about happiness at work, then we are skipping internal happiness totally. Totally. तो हम खाली work happiness की बात कर रहे हैं. Work happiness में भी उन्होंने बोला job satisfaction is a proxy scale. You call it a proxy scale. I have not heard the term, but whatever you doing was job satisfaction was used for happiness. क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर जॉब में satisfied तो happy ही होगा वर्क में. Are you there? But then there was lot of literature which says job satisfaction can only be a component of happiness, may not be complete happiness. Why? Because complete happiness is also dependent on what is the civility behavior in the organization. अब मैं satisfied हूँ अपनी जॉब से, बहुत अच्छी चल रही है, मैं अपने काम में निपुण हूँ, मगर मेरी बनती किसी से नहीं है, मेरे को मन ही नहीं करता जाने का, तो आप happy तो नहीं करता. You may be satisfied at job, but if you measure job satisfaction as happiness, it will be a bias that your research will have. मैम एक कैटेगरी में पेपर्स जैसे एक कैटेगरी को it's always good to cater to एक कैटेगरी, but ध्यान रखिएगा कि logic prevails everything else.
ठीक है, आई गो बाय लॉजिक, लॉजिक हैज टू सैटिस्फाई। तो जैसे एक टाइम था जब जॉब सेटिस्फैक्शन से ही हैप्पीनेस होती थी। आर यू देयर? क्योंकि हम एक कल्चर में थे जहाँ सब लोग इकट्ठे रहते थे। जॉइंट फैमिली में आपस में क्या रिलेशंस हैं वो फैक्टर ही नहीं था, क्योंकि वो तो सभी के अच्छे होते थे। तो तब तो वो हैप्पीनेस का कंपोनेंट नहीं था। आज की डेट में जॉइंट फैमिली में आपस में कैसे रिलेशंस है, हैप्पीनेस का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू नॉट इन अ जॉइंट फैमिली, you live in different families, but yet the family relationship, civility behavior is a very big factor of happiness. If you ask your forefathers, उनके लिए पॉइंट ही नहीं था, उनके लिए उनका कल्चर ही ये था कि सब भाई बहनों को साथ लेके चलना है, there is no doubt about it. आज की डेट में कौन सा भाई बहन के साथ चल रहे हैं और साथ लेके चलना है तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। पहले अपना देखो फिर दूसरे का देखो, ये तो वो ना पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ, ये तो हमारे आई गया है दिमागों में, तो कल्चर ही चेंज हो गया। तो कभी जॉब सेटिस्फैक्शन बिल्कुल सही था हैप्पीनेस के लिए, आज नहीं। दैट इज वेयर योर गैप इज, मेक अ न्यू स्केल। आर यू गेटिंग इट? देयर इज अ चेंज इन द कल्चर। सो यू से दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज अडॉप्टेड। सो जो उन्होंने लिखा है वो भी गलत नहीं है। Probably that may be a very that may not be a recent paper. मैम 2021 का पेपर है, आप चेक करना 2021 के बाद 20 हमारा जो काम है 2023 में सबमिटेड है। बहुत सारे हैप्पीनेस के स्केल पेपर आ गए, बहुत सारे, जिसमें जॉब सेटिस्फैक्शन एक पार्ट है। इन इवन माय पेपर, इन माय स्केल जॉब सेटिस्फैक्शन इज अ पार्ट, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन हैप्पीनेस सेक्टर। सो इट्स वन ऑफ द डायमेंशंस. इट मे बी टॉक्ड अबाउट मेनी ऑथर्स, बट यू कैन नॉट स्किप द अदर डायमेंशन. So that's where the gap is. So we were talking about adaptation. Hani. Adaptation, we can change the question language only. Sorry? We can only change the language of the question. Apart You so such that the meaning is not lost. apart from that, we cannot do anything else. No, nothing. You're just adapting somebody's scale. If it is 1/5 scale, can it be 1/7? Yeah. We can do now because. Can you tell me why? Because हमने तो latent variable बनाने का ही फर्क पड़ता है. आप क्यों ही करना चाहोगे सर्विस से? Formalities achieved through this. Sometimes. LST is a standardized score. Standardized scores are on normal curves. Yes or no? आप ऑटोमेटिकली नॉर्मलिटी अचीव कर रहे हो, क्यों करोगे ये कहानी? आप स्टैंडर्डाइज स्कोर ही तो बना रहे हो, x माइनस एक्स बार ओवर मीन। LST इज अ स्टैंडर्डाइज स्कोर। तो आपको कोई कहानी करने की जरूरत नहीं है, आराम से वही वाला स्केल उठाइए, काम कीजिए। We are working on LST, we are working on latent variable scores. Also the difference होगा from one company to another company. Yes. तो आपका skill ये है, तो यहाँ पर adaptation. हाँ, adaptation. और अगर मान लीजिए कोई intelligence test है, जैसे साइमन ने वो adopt कर सकते हैं। Depending on what is the construct, you may decide. जैसे intelligence है, intelligence तो cross country same है ना? वो आप इसको adopt बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब उसको एज इट इज ले सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो जो चीज कल्चर से इम्पैक्ट हो रही है उधर अडैप्टेशन ज्यादा जरूरी है, बाकी जगह यू कैन टेक इट आउट। हाँ जी। मैम जैसे आपने बताया यू डेवलप द कल्चर फेयर स्केल, सो हाउ डिड यू गो अबाउट कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम इंडिया इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री एंड व्हाट अबाउट We were doing a project with one of the universities of Poland. So when I decided to do this work, we were approached by one of the faculty members of Waterloo University, where they said that we have read your papers on scale development and we would want you to develop a scale for generative AI. So that is how we started this project, and there they said we will collect Poland data. Then he had an Italian friend who said I'm going to collect Italy data, please include me in the project. And we were here in different cities. We were 2 to 3 of us who were in different cities. We said, okay, we are going to collect India data. So that is how we collected the data. We were on 234 India data, 671 Poland data, and 222 Italy data. So that's how we did it. But the main scale is for Poland. It's not for India because it was his project. So he got it from the European Union. So that is how we got all the data. इतना easy नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है। एक दो अच्छे पेपर आ जाए फिर easy हो जाता है। So just try and hit the bullseye and then you will get into the right collaborations. Collaborate करके पेपर लिखिए, that is very 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 important. The more minds to it, the better it is going to be. तो अब अपनी ना नेक्सस बढ़ाइए, नेटवर्किंग बढ़ाइए, मीट मोर पीपल, विजिट कॉन्फ्रेंसेस, गो टू ऑल gala dinners that are possible, and just don't dress up on the gala dinner, talk there, talk about
about your work, talk about other people. So I remember me and Sumedha going to many gala dinners, just dressing up and having fun and coming back. Only very recently we realized that gala dinners are networking dinners and we can do wonders in it. So yes, please use these networking areas to work with different faculty across the globe, attend as many international conferences as you can. So हाँ पहनना क्या है हमारा अलग रहता है, बट सच में बता रही हूँ मैं आपको, हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वहीं से बने हैं. सो आई हैव रिटन अ पेपर विद वन ऑफ द प्रोफेसर्स इन ज्यूरिख. Again, I met him in the gala dinner and he said that I want to work with you, and it just clicked. And he was from IT. He was from the IT department, so we actually created a game for selection of subjects after 10th. So I did the scaling for it and he prepared the app. So that paper is again in the A category journal for theatre and pharmacy. That's how you work. It's perfectly, you should know just your bit of work. बाकी लोग करेंगे अपना अपना काम, आप टेंशन ना लें. So you just should know your bit of work. Okay guys, so let's come back. Adoption, adaptation and scale construction. Scale construction is going to give you lot of inputs. ये जो बाकी लोग आके आपके साथ पेपर लिखना चाहते हैं वो इसलिए है क्योंकि आपका नाम scale construction के साथ जुड़ गया. What is scale construction? You are contributing to the body of knowledge. You are actually giving a theoretical input. जितनी भी PhDs हमारी हुई हैं उसमें अगर हमने स्केल बनाया है तो हमने एक्चुअली कंट्रीब्यूट किया है टू थ्योरी. So that is where you become a name. Over a period of time, people will start realizing that you are a name in that area, and then they start collaborating with you. So please get into scale construction. Trust me, next 10 years is going to be only scale construction. Empirical research will also see its light very soon. जब सभी लोग उस पे काम करने लगेंगे. So get into scale construction as soon as you can, because that's where you're creating something novel. So we are now talking about adoption, adaptation and scale construction. Now going back to where we were, we said we are going to do the ADO, antecedents, decisions and outcomes, TCCM, C was characteristics. Now we are going to be focusing only on the C part of TCCM and D part of ADO. ठीक है, एंटीसीडेंट से हमने मॉडल बना लिया, वो काम खत्म हो गया हमारा, आउटकम बना लिया, वो काम खत्म हो गया. अब हमने स्केल की बात करनी है, तो हमने नए क्वेश्चंस बनाने हैं. आई एम गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज स्केल कंस्ट्रक्शन. So now we start again from the literature review. I told you from the methodology you will come to know that there is no scale available in the area. So when we were doing our student wellbeing research, we came to know that there is no particular scale at the postgraduate level that is available for the area. In fact, graduate level, school level पे भी नहीं. तो आप में से कोई अगर करना चाहे, you can very well do at the school level. Now, when we started our work, we started putting up, preparing a Excel sheet wherein we started writing down our dimensions. You remember I showed you a paper on scale development where I showed you the ADO framework जिसमें D की भी dimensions थी, जैसे A की थी वैसे D की भी थी. तो हमने लिस्ट बना ली उन 234 पेपर से कि स्टूडेंट वेलबींग को लोगों ने डिफाइन कैसे किया. सो किसी ने सब्जेक्टिव वेलबींग से डिफाइन किया है, किसी ने इमोशनल वेलबींग से डिफाइन किया है, किसी ने एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस से डिफाइन किया है, किसी ने प्रेजेंस ऑफ हैप्पीनेस से डिफाइन किया है, किसी ने नो मंडे ब्लूज से डिफाइन किया है, किसी ने अटेंडेंस से डिफाइन किया है. हाँ जी मैम, अगर डिफाइन ही नहीं किया किसी ने, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर चीज डिफाइन है. एक नहीं मैम है ऐसे एक दो अच्छा आप एग्जाम्पल लो. है मेरे पास एक वेरिएबल. बताओ. बताना पड़ेगा उसको. ऑफ कोर्स. मैम एक वेरिएबल है डिजिटल फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, जो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है मैम वो ढंग से. डिजिटल फाइनेंशियल कैपेबिलिटी डिफाइन नहीं होगा, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तो डिफाइन है. आप डिजिटली तो लगा रहे हो उस पे. आप डिजिटल लगा रहे तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी किन चीजों से बनती है, उसी से डिजिटल भी बनेगी प्लस समथिंग एल्स. तो है नहीं डिफाइन. अच्छा, तो इसको मतलब ऐसे भी ले सकते हैं. ऐसे ही लेना है, ऐसे ही लेना है, ऐसे ही लेना है. हमने एक वो पढ़ा था, फॉर्च्यून 500 कंपनी का कोई एक CEO था जिसने एक बुक लिखी और उसने बोला कि वर्क लाइफ बैलेंस पे काम बहुत हो गया, अब बात होगी वर्क लाइफ फुलफिलमेंट की. जस्ट अ लाइन इन दैट बुक, एंड आई हैव अ PhD टुडे ऑन वर्क लाइफ फुलफिलमेंट. एंड यू कैन बिगिन टू इमेजिन कि हमारे को उसकी डायमेंशंस फिलॉसफी से मिली है, क्योंकि फुलफिलमेंट स्टडीज, फुलफिलमेंट थ्योरीज और वर्क लाइफ की HR से. And it was an interdisciplinary research where we picked up our
created this entire dimension, the entire model for the world. But today it exists. So you have to be just careful as to how you have to pick up your dimensions. Which are the domains that you would like to pick up your dimensions from? I already told you that you can have more than one domain. Today the world is looking at interdisciplinary research. So please go ahead and do it. There is no denying the fact that more interdisciplinary it is, more it is going to have the acceptability. So that's how we came up to the D part of the story, where we listed down all our inputs in terms of the dimensions. Now, what we did was, I told my scholar to make this kind of a table. This table is more commonly known as a dimension table. तो ये हमारा एक template है Excel का, जो हम बनाते हैं अपने सारे skill development वाले कामों के लिए. First Excel sheet is of dimensions. So what we have done is, on the columns, can you see the rows here? The rows are talking about the dimensions. Okay, so let's read here. With different papers, 234 papers that we read, wherever people define student well-being in whatever terms, we listed down every word. Are you there with me? Every adjective that defines student well-being was listed down. So we got these many adjectives from 234 papers, right? Some were repetitive and rest we left. Now, what we needed to do was, we had our list of authors and we gave them a unique code. Unique code is, for example, अब यहाँ पे मैं पूरा author का नाम लिखूँगी तो ये Excel sheet पता नहीं कहाँ चली जाएगी, it will not be readable. So 1 represented one author, 4 represented author number 4, 6 represented author number 6, and so on and so on. So what we did was, we mapped the author to the dimension. For example, perceived stress as a part of student well-being defined in terms of perceived stress was talked about by author number 6, author number 10, author number 13, author number 14, author number 15, author number 18. Can you see? So what we did was, we gave 1 mark each to every author who talked about this particular dimension. So आप ये देखिए, ये total इतने authors ने perceived stress की बात की. Are you there? Have you got it? So we did it for each and every dimension. Now when we were doing it for each and every dimension, we also saw that the literature is clubbing certain dimensions. For example, they said that all this is included under emotional well-being. The pink is these peach ones are included under psychological well-being. For example, purpose in life was not emotional well-being. So they clubbed as purpose in life and psychological well-being. So from literature only, we clubbed these dimensions put together as literature had put together. So we did 2 things. One was, we created the dimensions per se as it is, adjective उठा लिए, फिर उन adjectives में commonality निकाली on the basis of literature only. And we had what is called as a major dimension and we called as the author's dimension. Are you there with me? हाँ जी. एक है word stress, एक है perceived stress. Can we club them together? Stress and perceived stress are 2 different things. Sometimes perceived stress is no stress. हम मुझे घबराने की आदत है, तो मैं घबरा रही हूँ, perceived stress है. मगर stress कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, मगर मेरे को perceived stress है. People who are negative thinkers, उनकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा हो मगर perceived stress. So yes, stress and perceived stress are different. You can or you may not. Depending on, we may or we may not, depending on how many people are talking about it. So that's really your counsel. Yeah. So for example, I did not. Depression and anxiety हमें अलग ही है. देखिए आप, next ही depression and anxiety आ गया. हमने perceived stress में उसे club नहीं किया है. अच्छा, stress और depression और anxiety 3 continuums है, अलग-अलग gradation है, तो हमने उसको भी club नहीं किया. ठीक है? Life satisfaction, happiness, university satisfaction, course satisfaction, ये सारी बातों को एक साथ कर दिया. फिर mastery, purpose in life, autonomy, self-worth, self-esteem, personal growth, self-actualization, ये psychology में किया. Social में social acceptance, relationship with colleagues, relationship with classmates, social engagement, social coherence, इन सबको इकट्ठे social well-being में किया. Similarly, physical well-being and career well-being. Also we did spiritual well-being, mindfulness. इंडिया में तो mindfulness के बिना कोई काम ही नहीं होता, तो mindfulness का हमारा एक अलग वेरिएबल बना और engagement
principle आया कि engagement leads, student engagement leads to student well-being. The antecedent में भी आया. Now please note, student engagement was a part of the antecedent and it was a part of the decision also. We decided to take it under decision and not as an antecedent. Again through focus group. We decided on this particular and put it under the dimension field because our focus group said नहीं engagement तो होगी तभी तो well-being होगा. So the definition of engagement here is different from bigger dedication and absorption that we have for employee well-being, employee engagement. तो इसलिए इसको यहाँ लिया गया. So the total on the horizontal, sorry, the total of the rows put together gave me my the total here gave me which dimension was most talked about. Are you there? So can you see 47, 14, 6, 2, 1? These were the how the different authors were talking about the different dimensions. Also, the column totals told me which was the most seminal author in my area. Are you there? जिसने सबसे ज़्यादा वेलबींग पे काम किया हुआ है, वो वाला ऑथर भी तो इम्पोर्टेंट ऑथर है, उसको लिखकर आप उसको फोकस ग्रुप में भी इंक्लूड कर सकते हो. That is also what you can do. But then we got our main authors, people who have given us different dimensions, and we also got the list of dimension authors. The second stage that we had to do was we needed to create now the questions on it. अब क्वेश्चन बनाने थे, तो हमने क्या किया इसके बाद? I will quickly. We created the list of questions and we had the final pool here. Initial pool ये था, हमने इन डायमेंशंस को फोकस ग्रुप में ले गए और उनसे पूछा कि कौन से लेने चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेने चाहिए, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेने चाहिए, कि सारे लेने चाहिए. तो उन्होंने हमारे को हेल्प किया डिसाइड करने के लिए. इट वॉज अ प्रॉपर डेल्फी टेक्निक वेयर वी डिसाइडेड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस सारे लिए थे, सम लीस्ट इंपॉर्टेंट वंस बट वर रेलेवेंट. फॉर एग्जाम्पल career resilience. We were talking about professional students, so career resilience was very important. So we included it. So we included few of the dimensions, we left few of the dimensions, and we created this initial pool. Initial pool had to be subjected to face validity. Face validity मतलब आपने फिर focus group किया, उनको दिखाया कि भाई ये पढ़ के देखिए सब ठीक है कि नहीं. तो उन्होंने हमारी बुरी हालत कर दी. उन्होंने बोला you have to drop 20 items. Despite a scale development expert sitting and I have a habit of rechecking and counter checking with multiple people, फिर भी 20 आइटम ड्रॉप हो गए और 3 आइटम ऐड हुए और 7 आइटम रीवर्ड हुए. So this completed our face validity check. We then took it to our pilot testing. Are you there? We also did content validity, but due to paucity of time, I am just missing on it. For a longer workshop, we will discuss content validity there. नहीं, जो हमने focus group. Focus group will have 2 researchers who are research methodology experts and all the stakeholders. For example, we had parents, we had students, we had teachers, and we had 2 research experts. Not to exceed 10. Number should not exceed 10. So all the stakeholders have to be included in this focus group. So then we went up to EFA. I am skipping on EFA totally because I want to give you a hands-on on Smart PLS. So we then conducted EFA and कुछ items और drop हो गई and finally we came to our robust question which now we had to go in for validation. So after face validity, content validity, scale refinement, we had to go in for validation. और validation के लिए reflective scale की अलग treatment है और formative scale की बिल्कुल अलग treatment है. तो अब जो हम आगे बात करेंगे वो हम करेंगे how to work on Smart PLS, how to deal with reflective scales, क्या क्या check points हैं और क्या क्या formative scale के check points हैं. So are you ready? So let's just close this down and open your Smart PLS. Are we game? Do you have your laptops with you? Since you wanted a hands-on, so I'm just introducing the hands-on to you. I will, you can just introduce, you can open up your Smart PLS. If you've not downloaded, you can just download it. Smart PLS 4, I have a licensed version, you may have a trial version, तो कुछ चीजें मेरे पे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, आप पे कम होंगी, but that is okay, that doesn't matter. Okay, so as you see, the Smart PLS screen gives you this kind of a window. Don't worry, आपकी screen यहाँ पे blank होगी.
that's because you're not having any project to it. This is my screen with all the projects that I have done so far on Smart PLS. And on the right hand side of the window you have the workspace. So the first thing that you have to do is create a workspace, create a folder somewhere on the desktop if you want, which will see, you can click on the new workspace and a new workspace of Smart PLS 4 will be created. So आपका जो भी saving होगा, जो भी आपका ये जो बनेगा आपका डायग्राम वो वहाँ जाके सेव हो जाएगा. You can retrieve, you can download, but you cannot send it. आप मेल नहीं कर सकते उसको, right? So it will be in the smart space only. It's in the workspace of the Smart PLS. So this is about sample project. Smart PLS today has given us lot of options. The first, I'm also thankful to Professor Christian Bringle, Marcus Astor for allowing us to train on Smart PLS 4. This is with their permission of Hamburg, Germany, that we are conducting these workshops. So I'm really thankful to the support Smart PLS for helping us do this workshop. So PLS-7 is one option, that is the option that we would select. PLS-7 is the option that works on the variance-based technique, okay? Apart from PLS-7, can you see CV-7 also here on one of the menu? ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट है ये, फिर इसके बाद है PLS-7. जो भी काम हमें PLS-7 में करना है, partial least square structural equation modeling as it is called, it is variance based. वो इधर से चलेगा. जो CV-7 में करना है, that is covariance based SEM based on MLE method. पहले ये नहीं था, but अब ये Smart PLS में incorporated है. तो आप जो AMOS में करते थे, वो यहाँ भी कर सकते हैं. The third is process macro. You remember Professor Hayes, Andrew Hayes. Professor Hayes has been my favorite because he makes things very simple. And process macro is my favorite on the entire menu list because जब आप advanced analysis पे आओगे, slope analysis and all, they are amazing with process macro. So if you get a chance to visit any advanced workshops, you will know how process macro works. And of course, simple regression. So Sumedha has written a paper on NCA, that is necessary condition analysis, which is working on simple regression. We have also coupled it with FSQCA, that is fuzzy logic. So we are combining qualitative, quantitative, mixed methods research, and we are using the triangulation methods to support whatever we are saying empirically. Are you there? So but हमारे लिए हमें क्या करना है? हमें एक नया project बनाना है. This is about the options, the programs, the algorithms that we talked about. Color schemes है, ये light mode है, ये dark mode है. I'm not a very it somehow dissipates me, so I go with the light mode. So you can select any of the modes which are you're convenient with. So let's create a new project now. I already have one project made. I will just show you. You can just take a click of the diagram कि आपको बनाना कैसे है. Just let me. This is the Smart City project. Yeah. So. ओके, इट्स अ सिंपल रिग्रेसिव मॉडल. हमारे को ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी. लेट्स कम टू न्यू प्रोजेक्ट. लेट्स ऑल क्लिक टू न्यू प्रोजेक्ट. गिव योर प्रोजेक्ट अ न्यू नेम. आई विल कॉल इट मेम्स स्मार्ट सिटी. आर यू ऑल विद मी? डू नॉट पुट अप दिस अपडेट. इससे आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है. Can you see Smart City, name Smart City, IJKLM. ये दिख रहा है आपको? Main Smart City, it is in gray. आपका बन गया है? Have you created this? आप लोग कर लीजिए साथ में. जब तक हैंड ऑन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा. आगे आ जाओ ताकि दिखता रहे सब. Is it visible? Ma'am, any problem? ओके, टिल देन जब तक हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये आपको दिख रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बन गया है. इंपोर्ट डेटा फाइल. आपको मैंने डेटा फाइल भेजी हुई है डेस्कटॉप पे. मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखी थी, आपने अपने उधर से डाउनलोड कर ली होगी. सो कैन यू सी द स्मार्ट सिटी डेटा फाइल ऑन माई डेस्कटॉप?
new site. Can you see this data sheet? Yes, ma'am. All of you, are you attaching the data file? Participants smart city. पार्टिसिपेंट स्मार्ट सिटी सेम डेटा सेट है जो मैंने आपको दिया है। आप ये देखिए इस डेटा सेट में यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं सारे। आर यू देयर विद मी? यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हैं। हम कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन वाली फाइल पिक करता है एक्सेल सीएसवी मैम आप नेम टाइप करो पार्टिसिपेंट्स, वो ऐसे ही वो वैसे ही ब्राउज करके आगे पार्टिसिपेंट्स लिस्ट टाइप करो हो जाएगा। आप उसको डेस्कटॉप पे ले आओ डाउनलोड मैम करके। फिर नहीं हो पा रहा पार्टिसिपेंट्स के नाम से, पता नहीं हो पा रहा। मैंने भी type ब्राउज किया। करके पिक नहीं कर रहा है ब्राउज उसको ना करके करा, मैंने भी तो type क्या किया। बोल किया नेम ऐसा ठीक है नेम आ गया? चलो आ जाए जिस मर्जी से। ठीक है, हमने इसको अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे? सपोज अब ध्यान से सुनिए, अगर इसमें मिसिंग वैल्यूज होंगी तो ये इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपका दो नाम होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्मार्ट सिटी 4 ही होता तो आप ये देख रहे हो ये रेड हो जाएगा और ये इंपोर्ट बटन डिसेबल हो जाएगा। सो यू हैव टू हैव यूनिक नेम्स फॉर ऑल योर इंडिकेटर्स एंड देन यू कैन क्विकली इंपोर्ट योर फाइल। As soon as it gets imported, it will show you this screen. Ma'am, actually we all are having student version and there is a notification कि professional license will उसमें नहीं आपने पहले स्मार्ट पीएलएस इंस्टॉल किया हुआ है? नहीं ना अरे यार प्रोफेशनल वर्जन भी आई थिंक 2 महीने के लिए फ्री होता है। 1 महीने के लिए तो वो कर लो। मैम फिर वो दोबारा नहीं, नहीं कर it's 2 पाएंगे minutes। हाँ 8 मिनट्स होना चाहिए। 2 मिनट लगेंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक मंथ ओवर होने के बाद फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे मैम क्योंकि वो आईपी एड्रेस ट्रैक कर लेता है। एक महीना खत्म हो उसके बाद काम नहीं हो पाएगा। तो आप और वर्कशॉप्स नहीं करोगे? हर वर्कशॉप में हम आपको लाइसेंस की देते हैं। ऑलमोस्ट ऑल और एडवांस वर्कशॉप्स वी गिव लाइसेंस की। मैम आई थिंक इसमें मिसिंग वैल्यू से ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं करना होगा पहले। मिसिंग वैल्यू है होनी नहीं चाहिए ना। अगर मिसिंग वैल्यू है तो रिपोर्ट ही नहीं होगा डेटा। मेरे डेटा सेट में नहीं है। एलम गिविंग के डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज थी, इसीलिए आपका इंपोर्ट ही नहीं होता और फिर आप परेशान होते। ये भी नहीं होगा। It's not importing. आपका स्टूडेंट वर्जन पे नहीं हो रहा, किसी का हुआ है Licensed version. they are not having license. नहीं है लाइसेंस मैम वर्जन। उसके बाद रिपोर्ट कर अंदर भी दे आर ऑल हैविंग डिड यू हैव अ लाइसेंस वर्जन? Ma'am, she is in before the step. She is in मेरा भी before एक step. step हुआ है। नहीं हो गया ना? कैसे हो गया? आपके हो गया? स्टाइल है लड़की और क्या कुछ होगा? हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। अरे इतना तो डिफिकल्ट नहीं है। आई टीच एवरी टाइम टू द स्टूडेंट वर्जन यार। हाँ जी, पकड़ बताओ। यू डाउनलोड द प्रोफेशनल वर्जन, मेरे पास लाइसेंस की आईडी मैं दे दूंगी आपको। ये हो तो गया? ऐसे देखो, the idea is that I don't have the capacity to share it unless there is, because it is allocated to the workshop. So you have to be a part of the workshop because this is checked by Smart PLS Germany. हाँ वो बताओ, वो आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। You should in fact attend all advanced workshops, all workshops happening on Smart PLS, all MUS workshops that are happening. अभी श्योर। मैं तो कह रही हूँ मुझे इसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, जब भी कोई वर्कशॉप हो गया रिपोर्ट डाल दो। That is how I do it with all my other wherever I go for taking a workshop. तो जहाँ पे भी हमारी कहीं और वर्कशॉप हो रही होगी, हाइब्रिड में ही होती है यूजुअली, आप हाइब्रिड में तो कर ही सकते हो। Mostly workshops with greater than 200 participants, yeah, 5-day only SEM workshops will give you This is my first Friday वाला ही करो। This is your first time, so it's a long way to go, don't worry. You will see us very often. यहाँ पे स्मार्ट पीएलएस वर्कशॉप्स 4 ही लोग कंडक्ट कर रहे हैं। This is Dr. Atul Shiva, I conducted. Then there is Anupurti, and then there is Professor Ajay Chauhan. 4 ही लोग कंडक्ट कर रहे हैं, किसी की भी कर। आपके साथ कितना किसका क्या समझ आता है वो आपकी रहती है। इट्स लाइक कौन सा ऑथर की बुक मुझे अच्छी लगती है वो डिफरेंट है। ऑथर सारे आपको जिसके समझ आए उससे करो। हाँ जी रेडी, आगे चले, मेन काम रह जाएगा। हो गया? No, ma'am. Continue. I'll see
Okay, so now we can see this screen where there are possibility of 4 things. You come here if your thing is not working. I can show you. Alright, ma'am. Thank you. The idea is to learn. ये मत सोचिए अपना नहीं चल रहा, किसी और का चल रहा है उसके साथ बैठे. हाँ. So whether you have a student version, license version. एक साल वाला जो हाँ. Are we ready? So this is the screen that comes up, and what we are doing is here you see. Please note up थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. This screen is giving you the entire descriptive statistics that you would get in SPSS. So if you are talking about mean values, maximum values, minimum values, standard deviation, cutoffs, skewness, everything is visible on this single screen. Mean, median, scale minimum, scale maximum, everything is visible on the screen. So entire descriptive analysis is done in one go. Also, if you want to see the correlations, you click on the second button and it will show you the entire correlation. So see this? It is going to give you the entire correlations. ये नीचे correlation है. Correlation table is always in diagonal. तो नीचे देखिए diagonal के नीचे ऊपर 0 दिखेगा, नीचे सारी correlations आ रही है. This is your raw data as you see it in your file. जो file आपने import की है, ये raw data है. हमारे को यहाँ indicated data पे जाना है. Now the first presumption, since it is a parametric test, we believe that there is no normality in the data, isn't it? तभी तो हम parametric कर रहे हैं. So when we are talking about this particular variance-based SEM, the normality का जो null hypothesis is data is normal. Are you there? That is how you write the normality null hypothesis. Data is normal. Data is normal is the null hypothesis, and I am going to check this hypothesis by virtue of the significance levels given by Kramer-Von-Mises p-value. Can you see the last column? This column, Kramer-Von's Mrs. p-value is giving you the normality testing on the first page itself. So significant 0.000, p less than 0.05. क्या मतलब है? Null hypothesis rejected. Null hypothesis क्या थी? Normal है. Data is normal. Normality की अलग होती है null hypothesis. Data is normal होती है hypothesis. ठीक है? तो significant difference exists. इसका मतलब क्या है? Null hypothesis rejected. So my data is not normal. Also, my data has multiple dependent variables and has a complex model. That is the reason I will use TLS SCM. Are we there everyone with me? So now this is how my normality is checked. Normality के और बहुत सारे तरीके होते हैं. शपीरो के विल्स टेस्ट वो सब सर ने आपको कल कराई दिए होंगे. So I'm not getting into normality discussions. We are believing अगर हमारा data normal नहीं भी है, कोई बात नहीं. We can use smart case. So this is absolutely robust even in case of not normal data. Now let's go back here. These are the few keys that you will have to use. This is for exporting to Excel. Directly पूरी की पूरी results as it is आपके Excel file बन जाती है. ये generate groups करने के लिए अगर मुझे मेल फीमेल कोई group create करना है, new category create करनी है, उसके लिए है. This is the setup and this is the back button. So we go back and we come to our the project. If you see the project, this was the smart city project here. The green stacked file is the data file. So this is the green stacked file. Now what we're going to do is, now we're going to create a model so it will give me a screen. Now which kind of model do I want to create? I want to create a PLS SEM model. Model name, I'll keep names smart, save, and it's given me a new screen. Now this is the canvas where I will be working. Are you with me everyone? हाँ जी बताओ कहाँ से आप? Where did you lose me? Screen stack आ गया? Create model है ऊपर? Yes. Click. Create model, click. आपसे पूछेगा कौन सा मॉडल? Drill down menu से PLS SEM और फिर आप अपना नाम दे दो जो आपको नाम दे. ठीक है? बन गया? ये स्क्रीन आ गई सबकी? Now, my earnest request to each one of you is please do the data coding properly. If your data coding is proper, it will take you 2 minutes to make the model. If your data coding is improper, you will face lots and lots and lots of problems. You see my data coding
here. S-Citizen. Now we are working on smart city database where we are talking about how can one make a smart city. What are the factors that are going to lead to a smart city? Whichever smart city, whether it is Gurgaon, whether every city, we are all aiming at making smart cities. Okay. So the model is smart citizen, smart economy, smart traffic, smart environment, smart governance, smart life, and utilities will make a smart city. It's a simple regression model. समझ आ रहा है आपको? तो ये सारे factors will make a smart city. Is that okay with everyone? So that's the simple model. तो इसका मतलब हमारा first कितने construct हुए? हमारे construct हुए citizen, पहला construct, yes or no? बना लेते हैं इसको. Select, shift and arrow key. ये 4 items जो है वो smart city के construct का part है. Are we there, everyone? So all you need to do is pick and drop and press enter. Can you see this? Now what you can do is through the select button. This is the menu that we are going to use most of the time. This is the back button. This is the save button. This is the main PLS algorithmic menu. So it's your settings menu. सारे काम जो भी होने हैं वो इसी मेन्यू पे होने हैं. And then of course you have the select button. You have the latent variable button. जब हमारे को higher order model बनाना होता है तो हमें latent variable create करना होता है तो वो यहाँ से create होता है. This is the connector for drawing the lines between the construct. This is for the quadratic effect. This is for the moderating effect. This is for the Gaussian-Coppola effect. अभी हम ये सारे छोड़ देते हैं, हम simple वाला कर रहे हैं, right? हाँ जी. सेलेक्ट करिए उसके बाद सेलेक्ट शिफ्ट दबा के रखिए. एरो की से जितने आपके आइटम्स उन्हें सिलेक्ट किया, पिक एंड ड्रॉप उठा के पटक दीजिए. कैनवस पे उठा के पटकना है, बस और कुछ नहीं करना. हाँ जी. स्टूडेंट वर्जन नॉट लाइसेंस आपका पूछा ना कि फाइल से ऊपर है. मैम सोचो बनेगा होगा ना. नहीं अब तो चल रहा है. पहले नहीं चल रहा था 100 से ऊपर. पहले नहीं चलता था, अब चलता है. आपका ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आपका चल रहा है. ओके आई गेस ये 100 से ऊपर का डिटेल का प्रॉब्लम होगा. आप फर्स्ट 100 को सेव कर लीजिए. उसके बाद भी नहीं चल रहा. एक्सटेंशन का कोई इशू नहीं होता. आप CST कर लो. एक्सेल नहीं खुलेगा. फाइल सेव बट आई हैव गिवन यू CSV फाइल. एक्सेल का फॉर्मेट होता है CSV. एक्सेल का एक टाइप ऑफ फॉर्मेट होता है तो आपको ऊपर एक्सेल ही दिखेगा बट वो है CSV. आप उसको सेव कर लो अगर नहीं खुल रहा तो. आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग. अदरवाइज हमें तो कभी भी नहीं हुई ये वाली प्रॉब्लम. नेवर एवर. आपका चल रहा है. आपका चल रहा है ना. स्टूडेंट का तो सही चल रहा है. हाँ देखिए. मैम शी स्पेशल केस. मैम वो 1 मंथ वाला है इसका शायद. मैम शी स्पेशल केस. फॉर अस नॉर्मली इज नथिंग. दे डोंट गेट दिस एग्जाम. यार यू डाउनलोड द प्रोफेशनल वर्जन एंड उस पे चला लो. राइट बोथ द वर्जन. नहीं दूसरे में तो देयर इज सम कुछ वो लगा होगा एंटीवायरस. हाँ उसके वजह से भी नहीं डाउनलोड होता है. स्टूडेंट में शायद ना चले आगे. ओके फाइन. सो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी टेकन केयर ऑफ लेटली. ये अब अगर मुझे इसको अब ये मुझे सुंदर नहीं लग रहा है ऐसे तो उसकी थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन करनी है. सो आई विल गो एंड सिलेक्ट. आई विल सिलेक्ट. दिस गेट्स एक्टिवेटेड. आई डू राइट क्लिक. दिस इज हाउ यू वुड अलाइन योर इंडिकेटर्स. इंडिकेटर क्या था? आइटम. आइटम को किस तरफ देखना चाहते हैं आप? टॉप पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे, राइट पे. मेरे को लेफ्ट पे देखना है. नाउ इट लुक्स गुड टू मी एंड इट इज सॉर्टेड. नाउ आई विल डू इट फॉर इकोनॉमी. स्मार्ट इकोनॉमी. 6 आइटम्स. पिक एंड ड्रॉप. एंटर. सेलेक्ट इंडिकेटर्स टू द लेफ्ट. ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है दिस इज फॉर योर अलाइनमेंट. व्हेन वी स्टार्टेड विद PLSM हमारे बहुत टेढ़े मेढ़े मॉडल बनते थे और वो छप भी गए हैं बट अब आपको अलाइन करके भेजना चाहिए. ट्रैफिक. स्मार्ट ट्रैफिक विल हेल्प यू डू दीज 5. सो लेट मी डू इट फॉर स्मार्ट ट्रैफिक. अगेन लेट मी अलाइन इट टू द लेफ्ट.
क्योंकि ये इतना बड़ा स्क्रीन नहीं है, so what I can do is ये जो 100% जूम है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, आप उसको थोड़ा सा छोटा कर दोगे तो आपकी वर्किंग स्क्रीन बढ़ जाएगी। कैन यू सी दिस? तो आप इसको इतना छोटा कर दो, आई थिंक यू कैन इंक्रीज योर वर्किंग स्क्रीन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। स्मार्ट ट्रैफिक हो गया, इसके बाद क्या है? स्मार्ट एनवायरनमेंट। सो लेट मी पिक अप स्मार्ट एनवायरनमेंट, and here we want to put up the smart environment. Let us align to the left, and another one that we have is smart governance. ये simplicity model है, इसलिए आपका रन करना easy हो जाएगा. So let me put it here, smart governance. Enter. So align indicators to the top. Let me put it here, and smart life. Align indicators to the top again. This is what it is. And अभी आ गया smart city. Smart city was my dependent variable. So this is where I put my dependent variable. This is the main variable that I'm married to. So this is my main variable. इस पूरे उसमें utility was a formative construct. बाकी सारा कुछ reflective था. ठीक है? Utility. Another thing that I forgot to tell you about the formative construct is फॉर्मेटिव कॉन्स्ट्रक्ट हम अपने आप बनाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि उसका कोई और एलिमेंट नहीं लिखा है। तो लिटरेचर सेज आपने तो बना लिया, हैप्पीनेस के 5 क्वेश्चन बना लिए और आपने कहा कि दिस इज फॉर्मेटिव इन नेचर, या टीचर फीडबैक के 5 क्वेश्चन बना लिए। व्हाट वी नीड टू सी इज वेदर इट कन्वर्जेस विद, if you were to ask this in one statement, are you happy? All your 5 questions, do they converge on the single statement or not? If it does, then whatever you have made is correct. 70% भी converge कर जाता है तो ठीक है। अगर नहीं करता तो इसका मतलब आपका formative scale robust नहीं। Are you there with me? तो हमने क्या करना है? When we are making our questionnaire, we have to Okay. When we are making a formative scale, only a formative scale, क्या requirement थी कि इस पे आप ना add कर सकते हो ना delete कर सकते हो। इसका मतलब आपने total all the number of items that are possible that you have taken. So how would one know that I have taken all the number of items that were possible in that particular construct? So what they say is, research says, ask a simple global question. What is a global question? Which has the soul of the variable. For example, if you are working on happiness, so the global question is, are you happy? Are you there? If you are working on satisfaction, the global question is, are you satisfied? If you are, it's a generic one-liner question which is encapsulating the real essence of the entire construct. Okay? Marcus Armstead has also given us a way in which we formulate the global question. वो पेपर में मैंने आपको डाल रखा है और मैंने हाईलाइट कर रखा है कि कैसे, तो डैश 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 करके आप अपना ग्लोबल क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उसमें बस अपना कॉन्स्ट्रक्ट का नाम डाल दो और वो बन जाएगा। ठीक है? तो वो भी पेपर आपके पास है, डोंट वरी ऑन दैट अकाउंट। So utility in this case was a global question. So if you see here, utility has 4 items and 1 item which is called as utility globe. That is the global question that I have asked for utility. So for testing formative scale, I will be needing utility globe. Is that okay? So in questionnaire we have to keep, क्योंकि हमें शुरू में नहीं पता होता कि formative बनेगा कि reflective. My suggestion is if you are creating a scale, एक global question सबका डाल दीजिए, ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। For future study, for all the studies that you do, whenever you are constructing a scale, put up a global question, generic question. उसको include नहीं करना scale items में, but उसको रखिए अपने पास, ठीक है? Okay, so last was smart city 5 and one more item was utility 4. I told you that utility is a formative scale. तो utility के arrows कैसे जाएंगे? Who's going to tell me? Reverse. So मैं कैसे करूँ reverse arrows? You double click, right click and it says invert measurement model. अब इसमें कितने measurement model बन रहे हैं? कौन बताएगा? गिन के बताओ कितने measurement model बन रहे हैं? Red boxes, कितने red boxes? What is the drill? As many constructs, as many scales, as many measurement models. So how many constructs here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many measurement models? 8. How many scales?
for governance, life, city and utility. Are you there with me everyone? Now, इसमें मार्कर वेरिएबल नहीं हाँ इसमें भी नहीं लिया. अगर हो तो कहाँ पे अटैच करते हैं? Marker variable will always be on the dependent variable. मैम उसमें कोई सीक्वेंस है या कुछ है उसमें नहीं। कहाँ डालना चाहिए? नहीं डिपेंड कहीं भी डाल. वो यूज ही नहीं होता, वो खाली R² के चेंज को यूज करने के लिए CMP के लिए यूज करना है, तो इसलिए ज्यादा उसका काम है. बट उसके बिना काम चलेगा भी. So it is that important yet it will not include it in the model right now. This data set does not have a marker variable. Is this okay everyone? Now that my measurement modeling is complete, how many LOCs does it have? This model? All 8 are LOCs? HOC तो कोई है ही नहीं. अच्छा, अब HOC नहीं है, इसका मतलब जितनी भी लाइनें सिटीजन से सिटी को जा रही है, यूटिलिटी से सिटी को जा रही है, लाइट से सिटी को जा रही है, ये सारे रिग्रेशन है, ये सारी हाइपोथेसिस है. Yes or no? Yes. They are the inner model. Remember the green line that I was showing between ASAT and ACB and AGB? So these are the same green lines which we are now going to draw. Are you with me? So how do I draw? I will press on connect. Is this okay? यहाँ पे सेंटर में ले जाइए अपने कर्सर को और बीच के सेंटर में सिटी पे छोड़ दीजिए. ब्लू हो गया, मतलब सब काम सही चल रहा है, बल्ले बल्ले है, सब ठीक चल रहा है, कोई टेंशन की बात है नहीं. इकोनॉमी टू सिटी, ट्रैफिक टू सिटी, environment to city, governance to city, life to city, and I'll just put utility थोड़ा ऊपर लगा देते हैं क्योंकि इसमें हमारे को और भी काम करने हैं अभी, and we have to make utility to city. Is it complete? People who are with me, are you making the model? कितना चल रहा है? Are you there with me? Now that this is the only picture that you have to draw. It is over. Okay. Now what we need to draw is we need to go to calculate and we need to go to PLS cell. दल बन गया तो select करो और delete. सुमेधा दत्ता वहाँ पे जाके select, use select, go and click जो गलत बना है और delete and remake it. Right? Are you with me everyone? So now we go to PLSM algorithm. The PLSM algorithm is going to give me what? What is it going to give me? It is going to give me all the measurement model scores. It is going to give me reliability, validity, discriminant validity. It is also going to give me my latent variable scores. Are you there with me? क्योंकि ये latent variable scores से ही तो बन रहा है ना, जो बीच में hypothesis हो रही है. चलिए आप में से एक जना बताएगा hypothesis कहाँ बन रही है. You already answered, just एक hypothesis बताइए बनाकर. I'll just click it here. एक hypothesis बताओ. S citizen to S city की hypothesis क्या है? Greater the number of citizens who are smart in a city, greater will be the possibility of calling it a smart city. Are you there? There is high correlation between smart economy and smart city. Greater the smart governance, greater will be the perception of respondents in terms of calling it a smart city. Are you there? How we are formulating these hypotheses? Why are they directional in nature? क्योंकि research से हमारो independent से dependent पे ले जा रहे हैं already. हमें ये नहीं कह सकते कि null है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है. We are giving the directional hypothesis. Hypothesis statement क्या होगा? Whether There exists a correlation between smart governance and smart city. There exists a relationship between smart city, smart citizen and smart city. आप किसी भी तरह बना सकते हो. 7 बनेंगे क्योंकि 8 तो डिपेंडेंट वेरिएबल है. बिल्कुल ठीक मैम, 7 बनेंगे. सही है, 7 हाइपोथेसिस बन रहे हैं. चलिए अब हम इसको रन करते हैं. कैलकुलेट PLSM algorithm. Okay, so it is running on the path model. You can run it on the factorized model. Standardized scores हमें चाहिए. क्यों चाहिए standardized scores? क्योंकि LSP standardized होते हैं. हमने latent variable create करना था ना, तो तभी तो हमारी normality की कोई पंगा ही नहीं है. हमारे तो standardized scores आ रहे हैं. So we have to start calculation. Done हो गया? आगे बड़े अच्छे से नंबर आ गए हैं. जो जितना डिफिकल्ट
PLS SEM एल्गोरिथम पाथ मॉडल में रन हो रहा है, स्टार्ट कैलकुलेशन। ब्लू हाईलाइट है राइट पे, उसको क्लिक कीजिए, इट विल गिव यू दिस। Now this particular screen is divided into different parts. First and foremost, I would like to save. ये पहले ही सेव कर लेना चाहिए था, अभी तो इसकी रिपोर्ट सेव हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम रिपोर्ट भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बॉक्स है, ये जो पार्ट ऑफ द स्क्रीन है, इट इज गिविंग यू द रिपोर्ट। द व्हाइट पार्ट ऑन माय स्क्रीन व्हिच आई एम स्क्रॉलिंग इज गिविंग यू द रिपोर्ट। आर यू देयर विद मी? सो योर रिपोर्ट इज अपीयरिंग हियर। द समरी ऑफ द रिपोर्ट इज अपीयरिंग हियर। Structure model summary, measurement model summary, whatever you want, construct का R square, highlight, path off और on कर सकते हो आप। This is the summary that is coming here for the graphical output. The detailed report is here. The white scroller is the detailed report. This is my diagram. Now when I talk about this diagram, you can keep it colored or you may even keep it black and white. Nowadays most of the researchers will prefer black and white, but अभी हम color पे ही चलते हैं, ठीक है? Now what is the first thing that you check in a reflective mode? The first thing that we check in a reflective mode is factor loadings. अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताती जाती हूँ ताकि आपको क्लियरली चेक पॉइंट्स पता चल जाए। द फर्स्ट चेक पॉइंट दैट वी हैव टू सी इन अ रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल। व्हाट आर द चेक पॉइंट्स इन अ रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल? फर्स्ट, आउटर लोडिंग्स, जो फैक्टर लोडिंग है या जो आर है या जो भी वैल्यू आपकी एरो पे आ रही है बिटवीन द आइटम एंड द कॉन्स्ट्रक्ट, उसको कहते हैं हम आउटर लोडिंग फॉर रिफ्लेक्टिव स्केल्स और आउटर वेट्स फॉर फॉर्मेटिव स्केल। वेट्स क्यों कहते हैं वहां पे? क्योंकि रिमेंबर द वेटेड मीन जो हम निकाला करते थे, हर एक जो फैक्टर है क्योंकि वो फॉर्म कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। आई देयर? तो वहां पे कह देते हैं वेट्स और यहाँ कह देते हैं लोडिंग। तो जब हमें रिफ्लेक्टिव स्केल दिख रहा है डायग्राम में तो हम लोडिंग चेक करेंगे, जब हमें फॉर्मेटिव स्केल दिख रहा है तो हम वेट चेक करेंगे। इज एवरीबॉडी विद मी? सो फॉर रिफ्लेक्टिव स्केल वी हैव टू चेक द आउटर लोडिंग। सो फर्स्ट थिंग that I have to check in an outer loading is outer loading should be greater than equal to 0.708. 0.708 का क्या मतलब है? I'll just open the just give me a second. Okay, so please see on the screen. If you want to take a screenshot, you can take a screenshot here. This is one of the important slides that I have for you. One is outer loading relevance testing. Less than 0.4, delete the item. क्यों? क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, बोलो। एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड अलग कहानी है। सिग्निफिकेंट की तो बात ही नहीं की, हम तो खाली लोडिंग की बात करें, सिग्निफिकेंट तो भी निकाली नहीं। कैसे पता चलेगा कि ऐड नहीं कर रहा? अब ध्यान से पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी क्यों 708। आउटर लोडिंग लेस देन 0.4, डिलीट, दैट्स द रूल। आउटर लोडिंग 0.4 to 0.7, you have to check the average variance extracted. AVE की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो रख लेंगे, नहीं तो डिलीट कर देंगे। ग्रेटर देन 0.708 is the precise number. If it is greater than 0.708, then we retain the item. अब यहाँ पे देखें ध्यान से क्या हो रहा है, कहानी क्या चल रही है। Suppose we are having a construct which is reflective in nature and it has question number 1. आप इसको ग्रुप पे डालते जाओ, आप जो यहाँ से खींच के ग्रुप पे डालते जाओ, नहीं तो मैं डालूंगा। I will put everything on the group, don't worry. This is for you only, not for me. Is everybody with me? Suppose यहाँ पे था question number 1, ठीक है? ये है question number 2 और ये है question number 3, ठीक? ये क्या है? आउटर
लोडिंग। सारी कहानी, सारी स्टैटिस्टिक्स में जैसे जिंदगी में रिलेशनशिप की होती है ना, सारा लोचा लाइफ में हैप्पीनेस, नो हैप्पीनेस, दुख, स्ट्रेस, एंजाइटी, इट्स ऑल रिलेशनशिप। सिमिलरली आई लव मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स बिकॉज उसमें भी सारा लोचा आर का है, हर जगह आर क्या होता है? कोरिलेशन, है ना? ठीक है ना? तो आउटर लोडिंग क्या है? यू रिमेंबर व्हाट वी सेड, सैटिस्फैक्शन, लाइफ सैटिस्फैक्शन में जितना सैटिस्फैक्शन मेरे पास है वो कितना रिफ्लेक्ट करता है इन माय क्वेश्चन नंबर 1। इज माय क्वेश्चन नंबर 1 गुड इनफ टू कैप्चर माय लेवल ऑफ लाइफ सैटिस्फैक्शन? सपोज ये लाइफ सैटिस्फैक्शन था, आर यू देयर? सो इस क्वेश्चन नंबर 2 गुड इनफ, तो इसमें आउटर लोडिंग आई 0.3, इसमें आउटर लोडिंग थी 0.708 और इसमें आउटर लोडिंग थी 0.8। सही है? ये आर है, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। रिग्रेशन तो ऐसे ही चल रहा है, इसका मतलब जो आर स्क्वायर आएगा वो यहाँ कैलकुलेट हो रहा है क्वेश्चन 1 लेवल पे। कितना होगा आर स्क्वायर? 0.3 का 0.09, राइट? इसका कितना आएगा? 0.5, 50 और इसका कितना आएगा? 0.64। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एबल टू क्वांटिफाई 0.09, that is 9% of what is the level of life satisfaction in you. Are you there? Second, question number 2 is able to quantify at least 50%. And question number 3 is a very robust question. It is quantifying 64. Are you there with me? समझ आ रही है सबको? राइट? मगर एक कहानी और है इसमें। वो कहानी क्या है कि एवरेज वेरिएंस अगर हमने इकट्ठे ले ले और देखें, क्योंकि हम ना डिलीट करना आइटम इज नॉट अ गुड थिंग, वी वांट टू refrain from deleting the item, so we will check that what is the average variance extracted. So if the average variance extracted, which is nothing but r1 square, r2 square, r3 square का mean divided by 3, average variance क्या है? r square, yes or no? So उसका mean अगर मैं ले लूं और अगर वो भी 50% से ऊपर है, 0.50 से ऊपर है, तो ठीक है। Let's go back to the slide. What does it say? Less than 0.4 delete, क्योंकि 0.3 तो कुछ भी नहीं है ना यार, 9% को कुछ भी कहानी नहीं है, ADE भी कुछ नहीं कर पाएगा उसका, डिलीट। अदरवाइज 0.4 to 0.7 चेक एंड ग्रेटर देन 0.708 इट्स गुड इनफ। एक ही क्वेश्चन से 50% मैप हो रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर रखना चाहिए। आर यू देयर विद मी? दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द इंडिकेटर। दिस इज आउटर लोडिंग, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू चेक एज अ चेक पॉइंट, which is called as outer loading greater than 0.708. The second thing that we are going to talk about is ADE. I just talked about it. We just said it should be greater than 0.5. Outer loading, if it is less than 0.4, delete. If it is 0.4 to 0.7, check ADE. If it is greater than 0.708, then we are good to go. Are we there, everyone? So these are the two things that are the two checkpoints that we have for outer loadings. Now we would like to check on indicator reliability. तो ये था हमारा outer loading relevance. Next we go to internal consistency reliability. Internally कितना consistent है हमारा scale? So this we will check through 3 statistics. Internal consistency reliability, that is internal consistency reliability is checked through 3 statistics. What are the 3 statistics that we check through? One is called as Cronbach alpha. ये जनाब जो है ना, ये थोड़े दिन में गायब हो जाएंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स पे। ये बहुत ही मिसनोमर जनाब है, मतलब जितने नंबर ऑफ आइटम्स जनाब है Cronbach alpha बढ़ता जाएगा। और एक चीज जो मैं अपनी एसआरसी में जरूर बोलती हूँ कि 0.95 से ऊपर Cronbach alpha इट्स अ वेस्ट। क्या मतलब है? आपने रिडंडेंट क्वेश्चन पूछ लिए हैं, सेम क्वेश्चन है, उसको इतना बड़ा क्वेश्चन कौन भरेगा आपका, उसको हटा दो। Are you there? So Cronbach alpha की जो रेंज होती है, that is it should be greater than 0.70 and less than equal to 0.95. Are you there with me? The next is called as
रो अल्फा, दैट इज हेंसलर्स रो अल्फा। हेंसलर भी एक बहुत अच्छे स्टैटिस्टिशियन है जिन्होंने रो अल्फा दिया। इट यूजेस द मेट्रिसेस टू कैलकुलेट द रिलायबिलिटी, सो दिस इज अ डिफरेंट मेथड। So one was rho alpha, Cronbach alpha, the second is rho alpha, it is called as Hensler's rho alpha। इसकी भी वैल्यू हमारे को क्या चाहिए, greater than equal to 0.70 and less than equal to 0.95। Are you there with me everyone? And the third is composite reliability। Composite reliability is the third measure, but it is an important measure because it includes the error variances also। Cronbach alpha does not include error variances। Composite reliability जो है, जो error create हो रहा है उसका कितना variance है वो भी ले लेता है। Okay, I don't have the time to teach you the formulas। If you happen to attend any of our workshops which are a little having more time, then I can teach you all this on Excel also। So right now just understand the formula, and again the drill remains the same, less than, greater than equal to 0.70 and less than equal to 0.95, that is between 70 and 0.95। So this was the third consistency check। This is how we complete the reliability check of an instrument। चलिए हम अपने सॉफ्टवेयर पे जाके देखते हैं कि हो क्या रहा है। Let's check here। So कहाँ पे देखना है हमें, सबसे पहले क्या देखना है, आउटर लोडिंग। आउटर लोडिंग पे क्लिक किया, ये आ गया आउटर लोडिंग की लिस्ट निकाल लेते हैं, लिस्ट इज इजियर। आपको दिख रहा है ये 0.642 है इसलिए रेड दिखा रहा है। रिमेंबर 0.4 to 0.7 it's under the difficult zone। You have to check AVE for this construct to see whether we should retain this item or not। बाकी सब 0.8, 0.90 है, 0.70 इससे ऊपर है तो हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी बस एक ही थी, किसमें था ये है इकोनॉमी में, राइट। तो हम इसका AVE चेक करके हम इसका बताएंगे कि कितना हमें ये रिटेन करना चाहिए। आप ही बताएंगे मुझे कि ये रिटेन होना चाहिए या नहीं। So let's go to now construct reliability and validity। Can you see it here? Can you see here? Construct reliability and validity। So I will go to average variance extracted। Sorry, let's go to the overview। Can you see this? Average variance extracted for economy क्या वैल्यू है? 0.597। Greater than 0.5? Retain कर ले? No problem। So despite it being red, I will still retain the item because the rule book says if the AV is greater than 0.575, even if the outer loading is less than is between 0.4 and 0.7, I will retain that item। We need to retain as many items as we want because we don't want to disrupt the scale। Okay? डिलीट करेंगे बिल्कुल डायर इमरजेंसी में। डिलीट का वैसे भी मतलब है कि आपने ये जो पीछे का काम किया है वो सारा यूजलेस है। Are you there with me? आपकी कंटेंट वैलिडिटी पे क्वेश्चन हो जाएगा, फेस वैलिडिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन डिजाइन पे क्वेश्चन हो जाएगा। सो हमें डिलीट नहीं करना है, मतलब कोशिश ये करनी है। नाउ Cronbach alpha, can you see these values? S environment का Cronbach alpha is 0.958। अगर मैं आपके उसकी रिव्यूअर हूँ तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी। 0.95 से एक ऊपर नहीं होना चाहिए, 0.951 भी नहीं माना जाएगा, 0.958 है। बट एक सेविंग ग्रेस ये है कि इनमें से कोई भी दो बता सकते हैं। तो अगर हमारी ये 0.96 है, ये तो और भी ज्यादा है, और ये 0.967 है। वाओ, सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड रोबस्ट कॉन्स्ट्रक्ट। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। इन्वायरमेंट, अच्छा अब आप ध्यान से देखो, इन्वायरमेंट में थी वो प्रॉब्लम कि इकोनॉमी में थी? इकोनॉमी में थी। इन्वायरमेंट के दो क्वेश्चंस। नाउ यू वांट टू गो बैक टू द क्वेश्चंस एंड चेक द कंटेंट वैलिड। हो सकता है कि कंटेंट वैलिडिटी में कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल रिडंडेंट है दूसरे क्वेश्चन। सो यू नाउ टू चेक द कंटेंट वैलिडिटी। अगर बिल्कुल रिडंडेंट क्वेश्चन है उसको हटाइए, दिस विल इम्प्रूव। आर यू देयर विद मी? हाँ जी मैम, थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेस क्वेश्चन No है, problem। बट बिकॉज ये डेटा सेट ऑलरेडी क्लीन था और ये शायद हाँ। पहले आपका देखा हुआ भी था। मैंने उसमें से 100 का डेटा सेट उठाया, मैंने अपने पे उस तरीके से रन किया तो भी सब कुछ ग्रीन ग्रीन आ रहा है। लेकिन जब मैं एक्चुअल डेटा सेट, मैम ऐसे बड़ी मुश्किल आता है। अब क्यों आता है? अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन मैक्सिमम रेड आते हैं 100%, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम? क्वेश्चन डिजाइन आइटम जनरेशन। पूछना कुछ चाह रहे हो, लोग समझ पूछ रहे हैं, आंसर कुछ और हो रहा है। इतना एरर है अगर डेटा में तो वो लोड ही नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हैप्पीनेस इन लाइफ, एक एक बंदा एक एक क्वेश्चन बनाए। व्हाट इज
happiness to you? जल्दी जल्दी से एक एक क्वेश्चन बोलिए. आप देखिएगा कैसे क्या. I will show you how you will get the red data. हाँ जी बताइए. Happiness. एक क्वेश्चन. Going to nature and feel the nature. That's a happiness. Going to nature or feel the nature? Feel the nature. Going to nature नहीं. दोनों चीजें. अब are you getting my point? उन्होंने बोला going to nature and feel the nature. क्वेश्चन भी बना दिया going to nature and feel the nature. मेरे को going to nature में तो होता है feel the nature मुझे समझ नहीं आता. How do you feel the nature? ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रहा है. बिल्कुल. तो इसका मतलब क्या है कि feel the nature was a more important variable. Going to nature could have been skipped. Feel तभी तो करोगे जब going करोगे. Unless you are in metaverse environment. Now that you are in metaverse environment, दो क्वेश्चन बनेंगे. Going to nature and feel the nature. मेटावर्स से पहले एक क्वेश्चन से काम चल जाता है, इसलिए रेड आएगा. हम कंटेंट Simple वैलिडिटी सी कर ली, पैनल से भी सब कुछ पूछ लिया, फोकस ग्रुप उसके बाद भी कुछ ना कुछ रेड आते हैं. और जब हम उसको ट्रीट करने जाते हैं ना, वी आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग आवर रिजल्ट्स. इट इज नॉट एक्चुअली manipulate. I have 10 PhDs already done with me. They are awarded. I have never ever manipulated a single statement. She knows it. मैम आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट माय क्वेश्चन इज जब रेड आ गया तो आपको क्या करें? सॉल्व बता रही हूँ ना. एक तो चीज़ है, एक मेरी स्कॉलर थी, शी इज वर्किंग विद जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, प्रज्ञा. सो शी डिड वी टुक स्टैंडर्ड स्केल्स और एक स्केल हमने खुद बनाया था. तो फॉर्मेटिव स्केल जिसका पेपर बहुत हाई साइटेशन पे, उसी लड़की का. शुरू में जब हमने स्केल बनाया तो उसमें वही रेड 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 रेड. सो आई टोल्ड हर दिस डेटा इज एब्सोल्युटली करप्ट, क्योंकि लोगों को वो समझ ही नहीं आया जो हम बताना चाह रहे हैं. लेट्स रीमेक द स्केल. उसकी पीएचडी एंड हो गई थी, प्री पीएचडी थी 2 महीने. उसने कहा मैम मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं फिर से कर सकती पीएचडी. आप मुझे कह रहे हो फिर से करो पीएचडी. तो मैंने कहा हाँ मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा, ये रन ही नहीं होगा. शी सेड नो मैम आई वोंट डू इट, आई विल गो लाइक दिस. शी वेंट टू प्री पीएचडी, वहाँ उन्होंने रोक दी. मैंने कहा नहीं ये नहीं चल रहा, ये आपकी रिडंडेंट है, स्टेटमेंट्स ही गलत है, कंटेंट वैलिडिटी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, सब खराब है. तो शी केम बैक क्राइंग एंड उन्होंने उसको 6 महीने का टाइम दिया कि अभी खत्म कर. वी स्टार्टेड अगेन, कलेक्टेड डेटा अगेन. आपका डेटा करप्ट है, आपके क्वेश्चन करप्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है. शी कलेक्टेड 300 का डेटा अगेन, टुक 3 months. Today her paper is in Taylor and Francis highest cited journal, and it is one of the best formative scales paper referred to in research game. For that paper she got an accolade from Fred Luthans himself. So don't worry, if you're doing good work, if you have to redo it, don't worry. अगर red आ रहा है manipulate मत कीजिए. questions को with me, and because खराब आ रहे थे रिजल्ट्स, and I had to go back because my guide also, you know, he also was pushing me कि नहीं दोबारा कीजिए, and मैंने दोबारा किया, but it took me 1 year to do that. That's okay. But you've done a good PhD. So what? So what? I'm lost. Write a paper on it and you will see how it shines. I'm lost बहुत हुआ है इसमें. आपको मैं बता रही हूँ, कुछ गिमिक्स होते हैं जो आप मेरे को डेटा दिखाओगे, मैं आपको ठीक भी कर दूंगी. मैनिपुलेट नहीं कर रहे, मैनिपुलेट नहीं कर रहे. वो कैसे निकलेगा? नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस लोडिंग. अब एक चीज बताती हूँ कि कौन सी आइटम, सपोज पॉइंट इसमें सब 0.9 से ऊपर है, आपने देखा कोई भी 0.9 से नीचे नहीं है, फिर भी हमारा सपोज रेड 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 आ रहा होता, सपोज आ ए बी खराब आ रहा होता, सब कुछ खराब आ रहा होता जैसे आपने बोला, तब क्या करें? सो नाउ यू चेक द डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. अब तक हमने इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी चेक की थी, अब हम वैलिडिटी चेक करें. क्या मतलब है कि जब हम स्मार्ट सिटी को से इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करें, क्या ये अलग अलग है या स्मार्ट इकोनॉमी और स्मार्ट गवर्नेंस एक ही चीज़ है? क्या मुझे एक लेना चाहिए या दोनों लेने चाहिए? या ऐसा तो नहीं कि स्मार्ट इकोनॉमी के क्वेश्चन स्मार्ट गवर्नेंस में और स्मार्ट गवर्नेंस के क्वेश्चन स्मार्ट में. आर यू देयर? अगर ऐसा होगा तो सारे रिजल्ट उड़ गए. सो व्हाट यू नीड टू चेक इज डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी. कैन यू सी इट हियर? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में आपको सबसे पहले दिखता है हेट्रोट्रेट मोनोट्रेट रेशियो. HTMT रेशियो हैज टू बी लेस देन 0.8. आर यू देयर? 80% तो फर्क होना चाहिए, 20% सिमिलर नहीं है तो कोई बात नहीं. फॉर एग्जाम्पल हैप्पी मैरिड लाइफ, ट्रस्ट एंड लव लीड टू हैप्पी मैरिड लाइफ. अब ट्रस्ट, कई लोग बोलते हैं ट्रस्ट होगा
कोरिलेटेड, हाईली कोरिलेटेड कॉन्स्ट्रक्ट, आइटम्स भी ओवरलैप करेंगे, तो वहाँ आपको HTMT चेक करना है। जहाँ पे हाईली कोरिलेटेड कॉन्स्ट्रक्ट है, जैसे अगर हमारे को करना है हैप्पी मैरिड लाइफ इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड लव, तो ट्रस्ट एंड लव और हाईली कोरिलेटेड, उस केस में गोल्ड एट ऑल की साइटेशन 2020.9 से कम की HTMT भी अलाउड है, 0.9 तक की HTMT भी अलाउड फॉर सिमिलर साइकोलॉजिकली सिमिलर कॉन्स्ट्रक्ट्स। आर यू देयर विद मी? You can also check the HTMT by checking the cross loadings. ये देखिए cross loadings क्या कहता है? S citizen के 1 2 3 4 है, इसकी लोडिंग कितनी है? मतलब S citizen के जो बच्चे हैं, अब ये देखिए एक कॉलोनी में 4 घर है और 4 घर में 4 बच्चे हैं। अगर पहले घर का बच्चा तीसरे घर में जाके खाना खाने लगे सुबह शाम, तो टेंशन होगी कि नहीं होगी घर वालों को? Yes or no? That means my bacha should load on me only. He or she should be a part of my family only. So your bacha, S citizen का क्या बच्चा है? Citizen 1, 2, 3, 4, 0.94. ये देखिए S citizen 1 की loading on S city 0.3, on S economy 0.4. कोरिलेशन तो सबके साथ है क्योंकि मल्टी कोलिनियर है, मगर इसकी कोरिलेशन अपने कॉन्स्ट्रक्ट के साथ मैक्सिमम होनी चाहिए। जहाँ रेड वाले केसेस है वहाँ पे आप यहाँ देखोगे कि 0.8 यहाँ पे भी है और 0.7 यहाँ पे। Are you getting my point? तो आपको एक जगह से डिलीट कर दो सारा ठीक हो जाए। So that question is redundant. You are using it in 2 places and it is actually confusing the reader and it is giving you multicollinearity in your data. So what you need to do is या तो आप citizen का पार्ट मान लो उसे या environment का पार्ट मान लो, दोनों का पार्ट नहीं मानोगे despite a better factor. Have you got it? So on this basis also you can delete the item when the discriminant validity is fluctuating. Have you got it? Are you there with me everyone? हाँ जी पूछो। AV की इतनी वैल्यूज कभी आती थी 0.8 हमारी सारी आती है। 0.8 आती है। आपको मैं रैंडम अपना कोई प्रोजेक्ट खोल के दिखा दूँ, कोई सारी आती है अगर आपका क्वेश्चनर अच्छा बना। अगर क्वेश्चनर में प्रॉब्लम है, और वो क्वेश्चनर की प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, मोस्टली आप लोग लेते हो स्टैंडर्डाइज के और अडेप्ट कर नहीं पाते उसे, वहाँ आती है मेन प्रॉब्लम। जहाँ आप स्टैंडर्डाइज स्केल लोगे वहाँ प्रॉब्लम। मैम व्हाट आई फील जो स्टैंडर्डाइज स्केल्स होते हैं वो अपने पहले निकालने को उन्होंने देखी होती है, वो AV ना 0.6 से ऊपर वैसे भी जाने नहीं देते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनके शुरू से ही हर डेटा के ऊपर 0.6 से आती है। इट्स जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू अडेप्ट। होता ही नहीं है। अब मेरे को अपना डेटा दिखाना, आई टेल यू वेयर द प्रॉब्लम इज, आप खुद ठीक कर पाओ। We are not going to manipulate, that's my promise. But we will see what is the problem in it. How the item is cross-loading to different items. HTMT से भी निकल जाती हैं items, आपको पता है? I have made a scale जहाँ पे पूरा का पूरा 5 factor model में एक factor उड़ रहा था, इतनी high correlation. But with HTMT, we could see which were the items which were loading high on the other items, drop them from one of the other. And the entire explanation was given to the reviewer in one paragraph. So you can do it, that's no problem. ठीक है जी, so we have come up to HTMT cross-loading. So we have just finished reliability and validity check. That means क्या होता है measurement model? क्या मेरा scale reliable है? क्या मेरा scale valid है? Yes or no? Reliability validity check के लिए 5 check point थे हमारे. There are the check points written. हमारे 5 check point क्या थे? हमने बोला था there are the check points. Outer loading greater than equal to 0.708, AB greater than 0.5. Internal consistency reliability के लिए 3 outputs थे, Cronbach alpha, rho alpha and composite reliability. Fourth was discriminant validity through HDMT and cross loading. You can also show for a corner lacquer, but now it is obsolete, so we usually show these two. Are we there? Corner lacquer आजकल यूज नहीं होता. All A category journals will drop corner lacquer and ask you to show HTMT. So heterotrait monotrate ratio is what is going to be the final discriminant validity check. Is everybody with me? Right? Cross loading में हम ये check करते हैं कि ये जो है cross loading. अब S citizen में S citizen 1 जो है, S citizen मेरे घर का बच्चा मेरे पास ही है, बाकी सबसे रिलेटेड रहे, हेलो हाय सारी घर वालों से हो,
by the respondent. So you need to see whether it should be put under citizen or it should be put under governance and you take up on it. हाँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे ही चाहिए होते हैं यार, पति से क्या करना है? Are we there? Are we there with it? So that finishes the reliability and validity checks, or in other words, the measurement model for reflective scale. Now we come to formative scales. Let's go up to the formative scales. I'm just coming to you. हाँ जी बताइए. मैम जो इसमें एस इकोनॉमी में जो एक स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था जहाँ फैक्टर लोडिंग 0.6 कुछ आ रहा था. हाँ. तो नीरज कौशिक सर ने किसी अपनी वीडियो में बोला था कि अगर हम उस स्टेटमेंट को डिलीट करते हैं और उससे हमारा एवी और रिलायबिलिटी अगर इम्प्रूव हो जाता है तो हम उसको डिलीट कर देना चाहिए. तो मैंने अभी वो डिलीट करके देखा तो उसमें हमारा एवी को पहले 0.5 कुछ आ रहा था, वो 0.644 हो गया. और क्रॉनबैक अल्फा? इट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. हमारा ऑलरेडी 0.96 पे है. आप ध्यान नहीं दे रहे, आपको तीनों चीजें देखनी है, कॉम्पोजिट रिलायबिलिटी भी और रो अल्फा भी और क्रॉनबैक अल्फा. मैंने सिर्फ एवी चेक किया, एवी इम्प्रूव हो रहा है. हमें पांचों चीजें, वो टेबल इकट्ठे आती है ना रिलायबिलिटी वैलिडिटी की, वो चारों चाहिए. अच्छा वो अगर वो चारों अगर इम्प्रूव हो रहे हैं तो कर डिलीट कर सकते हैं. इसका मतलब वो रिडंडेंट है, उसका मतलब उसकी यूज नहीं है ना. बट आई वुड सजेस्ट, मतलब आई गो विद द टर्मिनोलॉजी, सर भी यही बोलते हैं वैसे कि डिलीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हाँ, कोशिश नहीं करनी. अगर वो रिटेन हो रहा है तो कर लीजिए. Are you there? अच्छा, अब आप अपन आते हैं फॉर्मेटिव स्केल मेजरमेंट पे. सो हाउ विल वी मेजर ऑन फॉर्मेटिव स्केल? अभी हमने किया था रिफ्लेक्टिव स्केल. सो फर्स्ट थिंग that we check in formative scale is, the checkpoint is redundancy analysis. What is redundancy analysis? Redundancy analysis checks the convergent validity of a formative scale. Remember I told you कि utility जो था वो 5 स्टेटमेंट से बन रहा था. Yes or no? मगर रिसर्चर तब मानेगा जब हम यूटिलिटी का एक ग्लोबल क्वेश्चन पूछेंगे. दैट इज वी हैव अ सिंगल आइटम विच इज corresponding to utility in a reflective mode, and the beta here, the relationship is greater than equal to 0.70. Are you there with me? समझ आया आपको? तो रिडंडेंसी चेक एनालिसिस क्या कहता है कि या तो यूटिलिटी के 5 आइटम से यूटिलिटी डिफाइन कर लो या बेशक एक क्वेश्चन पूछ लो, 70% आंसर इट इज कन्वर्जिंग इनटू अ सिंगल क्वेश्चन. सो इसका मतलब मेरा फॉर्मेटिव स्केल ठीक. Are you there with me? Is that okay with you? So it is converging into the single question in such a manner that means my creation of scale is global item. Yes, this is my global item. This is called as utility global. Right? तो इसीलिए हम global item लेते हैं. So first is you check on the redundancy analysis where your beta has to be greater than 0.70. Let's go to the software and check. This is our software. Let's go back to the edited version. अब यूटिलिटी यहाँ पे फॉर्मेटिव है. आप देखोगे कि इसकी आउटर लोडिंग नहीं चेक करनी हमें. यस और नो? यूटिलिटी में क्या क्या चेक करना होता है? आउटर वेट्स, रिडंडेंसी और कोलिनियरिटी, DIF वैल्यूज. 3 चीजें चेक करनी है बस. फॉर्मेटिव स्केलिंग इज वेरी वेरी इजी. आर यू देयर? बस बनता नहीं है वो स्केल कभी भी. बट चेक क्या करना है हमें? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू गो बैक. I will save the changes, go back. अब इसमें जो ग्लोबल आइटम था यूटिलिटी ग्लो, I will pick and drop this utility item. Are you there with me? और मेरे को कनेक्ट करना है यूटिलिटी को यूटिलिटी ग्लो से. जो ग्लोबल आइटम था, रिमेंबर हम ये करना चाह रहे हैं, हम रिडंडेंसी एनालिसिस करना चाह रहे हैं. मैंने सॉफ्टवेयर में जाकर यूटिलिटी ग्लो को पिक एंड ड्रॉप किया और उससे लाइन ज्वाइन कर दी क्योंकि मुझे ये वाला बीटा चाहिए. ये वाला वो वाला बीटा कहाँ से आएगा? व्हेन आई विल रन दिस मॉडल आई विल गेट दिस बीटा व्हिच शुड बी ग्रेटर देन 0.70. आर यू देयर विद मी एवरीवन? हां जी. फॉर्मेटिव स्केल तो फिर टेट्राड एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे. Tetrad analysis is basically an analysis which checks whether it should work better with reflective or formative. But PLS7 के developers themselves say कि उसमें भी एक लोचा है. तो जो आपको Jarvis बोलता है 4 rules, उसी को apply. That is, they are the golden rules. They are good. You may or may not. Some reviewers may ask you for Tetrad, but I would suggest. But I have written 2 formative papers
अगर आपका जार्विस के चारों रूल आपने डिफाइन कर दिया तो वो सही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको रन करें। हमने क्या किया है, ये यूटिलिटी ग्लोबल को मैं डिलीट कर देती हूँ सेलेक्ट करके, और मैं फिर करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये था हमारा यूटिलिटी ग्लोबल, ये रहा यहाँ पे, राइट। पिक एंड ड्रॉप, एंटर, आ गया। अब किसको किससे कनेक्ट करना है बताइए। यूटिलिटी शुड कन्वर्ज टू द ग्लोबल आइटम, yes or no? Now let's run the algorithm. हाँ जी, यूटिलिटी टू यूटिलिटी ग्लो, क्या आप देख सकते हैं इसको? 88% it is converging. 88 the relationship between what I have created as my formative scale and the global item is 88%. They are 88% similar, which is good enough. It's a very good thing. It is converging into the global item. So my formative scale का पहली चीज redundancy analysis is taken care of. Redundancy analysis is done for checking the convergent validity of a formative scale. So by virtue of redundancy analysis, we are checking the convergent validity of a formative scale. Are you there with me? तो पहला वाला हमारा काम खत्म हुआ. Let's go to the next rule. VIF. Yeah. इसमें जो हमने ग्लोबल स्टेटमेंट लिया है, so we are just asking whether you are happy or not. तो क्या यहाँ पे हम कोई स्कोर भी ले सकते हैं कि हमने 10 पॉइंट पे कुछ लिया और हमने उसका स्कोर कैलकुलेट किया। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लिटरेसी में होता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी स्कोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर 10 में से कुछ स्कोर्स आए और हम स्कोर को यहाँ पे लेकर वैल्यू चेक करें तो वो तभी वर्क करेगा। बट आप कैसे बताओगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी का स्कोर रिस्पोंडेंट के स्कोर से मैप कैसे करोगे? मुझे समझ नहीं आया। उसमें ना फाइनेंशियल लिटरेसी है कि नहीं है? है कि नहीं है, तो उसमें हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू द नॉलेज। किससे पूछते हैं? रिस्पोंडेंट से। हाँ ठीक है। तो उसमें अगर वो क्वेश्चंस ठीक होते हैं तो हम उसको पॉजिटिव स्कोर देते हैं, अगर गलत होते हैं तो 0 स्कोर करते हैं। तो आउट ऑफ 10 उसका एक स्कोर बनता है, जैसे हैप्पीनेस स्कोर हो गया या समझ गए फाइनेंशियल लिटरेसी स्कोर हो गया। आप ये देखो, अगर मैं इसको 5 क्वेश्चन से मैंने फॉर्मेट वो फाइनेंशियल लिटरेसी मैप किया था, ठीक है। अगर मैं इसका एक कन्वर्जेंट वो रिफ्लेक्टिव स्केल बना दूं फाइनेंशियल लिटरेसी का जो एक मेन था, और इसको कन्वर्जेंट वैलिडिटी हमारे फॉर्मेटिव स्केल से मैप कर दूं तो भी हो जाएगा। आप स्कोर से भी कर सकते हो, क्योंकि हम रियल वैल्यूज को करें ना, LSP स्कोर्स को मैप कर सकते हैं। अगर आपने इसी मेथड से किया है तो ठीक है, क्योंकि खाली कोई स्कोर जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का स्कोर होता है उससे नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कोई और बात कर रहा है। हाँ जी, ये हो गया redundancy done. Next that we have to check is collinearity statistics. VIF दिख रहा है आपको? क्या कहना था हमारा? जार्विस का कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। So कितनी होनी चाहिए VIF value? Variance inflation factor should be less than 3. Here at all 2022. Diamond-Topolus says less than 5. चलो 3 to 5 पे हम मान जाते हैं। Diamond-Topolus ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाला है, सॉरी। Diamond-Topolus is less than 3 and here at all थोड़े हमारे साथ चलते हैं तो less than 5 बोलते हैं। 5 is satisfactory but 3 is good. For a formative scale I would suggest go by 3 क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। So less than 3 or less than 5. Let's check collinearity statistics. VIF values हमें किसकी चेक करनी है? कौन बताएगा? खाली यूटिलिटी की। Yes or no? यही तो था फॉर्मेटिव स्केल, दिख रही है? ये 4.148 है, बट चलो 5 से बच गए, इसीलिए ये ब्लैक दिखा रहा है। Are you there? ये सारी 3 से ऊपर है, ये सारी 3 से ऊपर है मगर 5 से कम है। अगर ये 3 से कम होती तो ये ग्रीन दिखा रहा, तो हमारा बहुत रोबस्ट होता स्केल। मगर अभी हम एवरेज पे हैं, हम थोड़े से लीनियंट अप्रोच पे हैं। Are you there with me? So according to here at all, we are still safe in the safe zone, and that is why it is showing black. Otherwise, it should have shown you red. Okay, so VIF outer VIF is going to be, it should be less than 3 according to Diamond-Topolus and less than 5 according to here at all. So ये भी हम अपने उसमें लिख लेते हैं।
So second is you talk about the environment पे formative scale की बात कर रहे हैं ना हम तो. CIF values less than 3, diverticulis. इसका पेपर दिया हुआ है मैंने, तो परेशान मत होइएगा. Less than 5, hair et al. 2022 primer. सही है? Are you there with me? आज के दिन पर लिंक भेज दो. Now the third. The third aspect that we have to talk about and the most important aspect. Outer weight की loading. Outer weight की loading. Outer weight. तो ये तो वहाँ खत्म हो गया था. इसको जल्दी जल्दी, ये तो reliability उसका है. Handling measurement model का है. हम formative को खोल लेते हैं. Convergent validity through redundancy analysis, indicator collinearity by BF outer less than 5, here it also बनी नहीं है तो इसलिए less than 5, जैसे diverticulis says less than 3. Statistical significance of indicator weights, outer weights should be significant. अब significance कैसे चलेगा, कैसे check करें significance? Bootstrapping. What is bootstrapping? कौन बताएगा what is bootstrapping? नहीं, वो तो ठीक है, मगर होता क्या है? Yes, you are right. Now what we do is, किसी भी बात को robustly कहने के लिए we have to say इधर भी check कर लो, इधर भी check कर लो, इधर भी check कर लो, multiple samples पे check कर लो. So 10,000 sub samples पे we run bootstrap such that 10,000. It is 10,000 that you should run on. 10,000 bootstrap का क्या मतलब है? वो आप ही के sample size से 10,000 sub samples create कर ले और 10,000 times उसे run करके check करेगा. अगर तब वो significant आ रहा है तो वो significant है, otherwise नहीं. Are you there with me? तो हम क्या करेंगे? हम bootstrap करके ये statistical significance of weights को check करेंगे. Okay, now let's go back to the software. This was our software. We now need, आपने देखा यहाँ पे significant values नहीं आ रही हैं कहीं पे भी. क्यों? क्योंकि अभी हमने significance check नहीं किया है. खाली loadings आ रही है और यहाँ पे हमारे utility में weights आ रहे हैं, right? But हमारी significance values नहीं आ रही है. कहीं नहीं आ रही है, अभी तो रन ही नहीं किया मैंने. Bootstrap के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा. Significance is whether the result is significant or not. You understand what is significance? 100 में से 95 लोग मान रहे हैं कि जो आप कह रहे हो वो सही है. ठीक है? जैसे स्मार्ट सिटी और उसके आइटम से जो आ रही है वो फैक्टर लोडिंग है. सपोजिंगली जो फर्स्ट वन है 0.790 वाला, दैट इज द फैक्टर लोडिंग. इतना उसके ऊपर लोड कर रहा है. और जो मैम जो कॉन्स्ट्रक्ट टू कॉन्स्ट्रक्ट यूटिलिटी से स्मार्ट सिटी के तरफ आ रहा है 0.1 वाली सीट है सब याद, मगर हमने क्लैरिफिकेशन करने के लिए इसको बीटा कह दिया. एक बड़ा आ रहा है, एक छोटा आ रहा है. ठीक है? आर स्क्वायर जो है वो यहाँ आ रहा है इस गोले में. 37% स्मार्ट सिटी को ये आपके साथ वेरिएबल डिफाइन कर रहा है, डिटरमिन कर रहे हैं. डिटरमिन. Are you there? So it is called as multiple coefficient of determination. 37% तो हम इसी से डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आप ये सब काम कर लोगे तो स्मार्ट सिटी बन जाएगी. Are you there with me? That is R square. This is beta. कितनी लोडिंग है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना लोड कर रहा है, कितना रिलेशनशिप है, सिटीजनशिप का कितना रिलेशनशिप है, गवर्नेंस का कितना रिलेशनशिप है, इकोनॉमी का कितना रिलेशनशिप है. रिमेंबर हाइपोथेसिस बनाई थी हमने. There is a positive and significant relationship between smart economy and smart city. Now you have to check the positive and significant. Significant कैसे चेक करेंगे? Bootstrap. Are you there with me? So क्या करना है हमारे को? First calculate bootstrap. ये 5,000 पे है, आपको 10,000 पे रन करना है. मैं अभी 500 पे कर रही हूँ और जल्दी हो जाएगा. आपको 10,000 पे रन करना है. आपको ये दिख रहा है?
वैल्यूज मुझे दोनों चाहिए, मेजरमेंट मॉडल की भी मुझे आउटर वेट्स, लोडिंग्स एंड पी वैल्यूज दोनों चाहिए। आगे ये है आपका समरी शीट, इसमें आपको जो चाहिए वो फिगर पे दिख जाए। दिस इज बेसिकली टू मैनेज द ग्राफिकल आउटपुट, क्योंकि अल्टीमेटली हमने ग्राफिकल आउटपुट लगाना है, तो उसको आपको जैसा रिव्यूअर चाहता है वैसे करना है। सो दिस इज टू मैनेज द ग्राफिकल आउटपुट एंड दिस इज योर रिपोर्ट। सो नाउ हमने बाकी सबका तो चेक कर लिया था, आउटर लोडिंग वगैरह सब चेक हो गया, हमारा खाली रह गया यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या चेक करेंगे? लोडिंग की वेट। क्यों? वेरी गुड। सो वी हैव टू गो टू आउटर वेट्स। किसी और का नहीं देखना, खाली यूटिलिटी का देखना। आर यू देयर विद मी? ग्लोबल वेरिएबल का एनए देख रहे हो आप? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनालिसिस। ये सारा सिग्निफिकेंट है। NAN is because it's a global variable and one item variable, NANEI. That's the software's response to it. हम तो साथ में ही दिखाते हैं, बट रीड नहीं करते। जैसे यहाँ पे NA नहीं दिखाना, यहाँ पे यही 5 का टेबल है। पहले दिखाया करते थे, मेरे पेपर में भी अलग से है। हाँ, कोई बात नहीं, जिस तरह आप कंफर्टेबल, जिस तरह रिव्यूअर चाहे, आप अलग से भी दिखा सकते हो, इकट्ठा भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये तो है बहुत ही बढ़िया डेटा। ये जिसने भी वो कराया फिल्म, ये एक आर्किटेक्ट का डेटा है एक्चुअली, तो भगवान उसका भला करे, उसके क्वेश्चन भी अच्छे थे, सारा ग्रीन डेटा है। बट एक्चुअली कई बार आउटर वेट्स जो है, अगर यहाँ पे रेड वैल्यू सिग्निफिकेंट ना आए तो क्या करेंगे? के लिए वी हैव टू गो टू दिस स्लाइड। इसकी भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आउटर वेट, ये आप एक स्क्रीनशॉट में इसको छोटा करके आप ले लीजिए एंड पुट इट ऑन द ग्रुप so that everybody can see it in their mobile phones also. अभी हमारा तो डेटा बहुत ही बढ़िया था, सारे आउटर वेट सिग्निफिकेंट थे, तो कहानी हो गई खत्म, फॉर्मेटिव स्केल खत्म। मगर अगर आउटर वेट सिग्निफिकेंट ना आए, जैसे आपने कहा रेड आए, then what do we do? If the outer weight is significant, you can continue with the interpretation as is. If the outer weight is not significant, okay, suppose there is red after running the bootstrap, you need to go to analyze the outer loading. Outer loading कहाँ मिलेगी? Let's go to the scale. यहाँ पे outer loading भी है। आप formative indicator की outer loading देख सकते हैं, आती है ना loading? ये आ रही है utility की outer loading? Are you there with me? So if the formative weight is not significant, go and check the outer loading. पहली बात, अगर आउटर लोडिंग लेस देन 0.5 है तो डिलीट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। मतलब कोई खास फॉर्मेटिव बन नहीं रहा है आपका स्केल, ये जबरदस्ती की खींचातानी हो रही है, खास फॉर्मेटिव नहीं बन रहा है। आर यू देयर? देयर इज समथिंग व्हिच इज रिडंडेंट, जिसकी वजह से आपका कोरिलेशन जो लोडिंग है वो हाई आ रही है। इज इट इट? You also test the significance of outer loading. If the outer loading is less than 0.5 and significant, still consider removal. मतलब less than 0.5 है तो चाहे significant है चाहे नहीं significant है, remove भी करना है। समझ आ रही है? अगर greater than 0.5 है, you keep the indicator though it is not significant. मतलब loading का खेल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होनी चाहिए। अगर लेस देन इक्वल टू 0.5 है मगर सिग्निफिकेंट है तो भी डिलीट। देखो ये दिस इज हेयर एट ऑल प्राइमर 2022, इसमें आपका वो ये दिया होगा। आई विल जस्ट पुट इट ऑन स्लाइड शो बिकॉज़ कैन यू सी दिस? ये ना 100% से ऊपर हो रखा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है।
तो आउटर लोडिंग का खेल, आर यू देयर? ग्रेटर देन 0.5 इज द कट, दैट्स इट. That's the third aspect for formative indicators, and that finishes our validation of measurement model for reflective indicators and formative indicators at the LOC level. जब हम HOC पे जाएंगे तब और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही साथ एक ही दिन में बहुत कुछ है. तो क्विकली रिकैप करते हैं, ठीक है? क्विकली रिकैप करते हैं. रिलायबिलिटी, वो रिफ्लेक्टिव इंडिकेटर क्या होता था? पहले एग्जिस्ट करता था, और जो आइटम्स हैं दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाटएवर इज ऑलरेडी देयर. वी टॉक्ड अबाउट लाइफ सैटिस्फैक्शन. रिफ्लेक्टिव इंडिकेटर कोरिलेशंस आर हाई. रिफ्लेक्टिव इंडिकेटर you can delete or add a item whenever you want. Are you there with me? Nomological network is same. Now you talk about formative scales. Formative scales are formed. Items will form. They don't pre-exist. They are calculated after the phenomenon. Second, the arrow key will always be towards the construct. Are you there with me? Third, collinearity is low, very very low. That is why BIF check करते हैं less than 3 and less than 5, right? And fourth thing in that case is that you check that the nomological network will be from different areas. For example, alumni giving behavior, social giving behavior is coming from sociology, financial giving behavior is coming from finance, charitable giving behavior is coming from philosophy. Different nomological domains, different nomological network. Are you there with me? Now, to check it empirically on the software, what do we do? For reflective indicators, what is the cutoff list? 1. Check the outer loading. Greater than equal to 0.708, perfect, keep it. Less than 0.7, greater than 0.4, between 0.4 and 0.7, check AV. AV greater than 0.5, keep it. Less than 0.4, delete. ठीक है? आउटर लोडिंग की कहानी यहाँ खत्म हो गई. इसके बाद आती है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी. किससे चेक होगी? 3 चीज से. क्रॉनबैक अल्फा, कॉम्पोजिट रिलायबिलिटी एंड रो एल, हेंस द स्लो एल. सबकी रेंज सेम है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.70, लेस देन इक्वल टू 0.95. इफ इट इज ग्रेटर देन 0.95, दैट मींस देयर इज सम रिडंडेंसी. एक ही क्वेश्चन को बार-बार पूछा गया है. प्लीज चेक द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ योर क्वेश्चनर एंड कम बैक अगेन विद द डेटा. Are you there? It may have a very high loading, but probably you asked the same question twice in different forms. So you need to delete a question. अपने आप कॉन्ट्रैक्ट अल्फा वगैरह ठीक हो जाएगा. Now we talk about the discriminant validity. Discriminant validity is हमारे बच्चे हमारे पास, ठीक है? हम किसी और के घर में अपने बच्चों को नहीं जाने देंगे. So citizen के बच्चे citizen के पास, economy के बच्चे economy के पास, governance के बच्चे governance के पास. अगर citizen का बच्चा governance में है, तो किधर लोडिंग ज्यादा है वो चेक कीजिए. 3 ऑप्शन, या तो वो स्टेटमेंट ही ड्रॉप कर दीजिए, दोनों तरफ से सॉल्यूशन हो. उस बच्चे को तुम चले ही जाओ, तुम ना ये घर के हो ना उस घर के, तुम जाओ. या बोलो तुम उसी घर में रहते हो, हमारे घर से करो खत्म, तुम आ रहे हो. या डांट डपट के अपने घर पे बिठा लो, वहां से नहीं. आर यू देयर? Have you got it? वहाँ पे कितने और किसी आइटम से लोडिंग कैसे चेक करेंगे? कैसे? वहाँ तो वो आइटम है ही नहीं, तो लोड तो नहीं हो रहा, तो क्या चीज करेंगे? आप देखोगे उस आइटम की कोरिलेशन बाकियों से कितनी है. मेरे बच्चे की दोस्ती उस घर की कौन सी बच्ची के साथ सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से वो वहाँ का हो गया है. Are you there with me? So you need to delete that item to get your baby back in your house. It's simple. It's a relationship fundamental. Are you there? How would you check the cross loading? Check the cross loading in such a manner that आपके बच्चे आपके घर में रहें. अगर किसी और बच्चे के साथ उनकी बहुत दोस्ती बन रही है और आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो या तो वो बच्चा हटा दीजिए या अपना बच्चा हटा दीजिए, किसी एक को हटा दीजिए. There, cross loading sorted, discriminant validity done, in place. Now we come to formative skill. Formative तो बहुत सिंपल है, 3 स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट इज रिडंडेंसी एनालिसिस. मैंने बहुत सारी कहानी कह दी कि मैं फॉर्मेटिव बना रही हूँ, इसके आगे जी कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये तो टोटलिटी का स्केल है. तो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, एक स्टेटमेंट में पूछ के देख लेते हैं क्या ये कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है. कन्वर्ज कर गया 70% से ऊपर, मेरा स्केल रोबस्ट है, रिडंडेंसी एनालिसिस एस्टैब्लिश्ड. जार्विस ने कहा था कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए. CIF वैल्यू BIF वैल्यूज लेस देन 3.
5 से लेस है तो भी चल जाएगा, थैंक्स टू हेयर इट ऑल। थर्ड चीज क्या है, here we check the outer weights. If they are significant, robust, good to go. Not significant, check the loading. If it is less than 0.5, delete. If it is greater than 0.5, whether significant or not significant, keep it. That's about it. Thank you all so much for patient hearing. I am really thankful. Since morning, you've been really, with me and with the kind of questions that you have asked. I hope I've been able to do justice to at least introducing the software, what is reflective, what is formative, how construct concepts are different, and how we deal with them. Today we know of the measurement model, and we also know of, I have not touched on structural equation modeling at all, because the time does not permit. Agar hota, we would have gone one step ahead, where we would have done all hypothesis testing and we would have done the variation moderation. But अभी वो पॉसिबल नहीं है, ना मुझे देखनी है कि आप भी कर जाओ और हमें भी। तो we stop here. Thank you all the. एक क्वेश्चन है। या बताइए। ये सारे जो थे, ये सारे हमारे स्केल्स हमने लिए हैं, तो कुछ इससे पहले अगर हमें कंफर्मेटरी करना है तो उसमें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना, हमें जितने भी स्केल्स हैं हम अपने आइटम्स खुद बना सकते हैं ना, अगर हमें एक्सप्लोरेटरी करना है उससे पहले। अगर हमें एक्सप्लोरेटरी कब करोगे, जब एक्सप्लोर करना है, जब आप न्यू स्केल बनाते हैं। हाँ तो EFA प्लस CFA कहाँ आएगा, जब स्केल कंस्ट्रक्ट होगा। हाँ अगर अडैप्ट कर रहे हो, डायरेक्ट CFA, अडॉप्ट कर रहे हो, डायरेक्ट CFA। नो EFA फॉर द फर्स्ट टू ऑप्शंस, नो EFA, I repeat, no EFA for the first two options. Only in case of construction would you take the, बट देन वी कैन क्रिएट आवर ओन आइटम्स ना, अगर उसके ऊपर चाहे ऑलरेडी स्केल है हम अपने आइटम्स खुद बना सकते हैं ना, तब भी कंफर्मेटरी। Ma'am, Only CFA। ma'am, 2 standardized scales, 1 self-constructed scale, right? And then you In the model, in a single model, and then you make एक सेकंड A needs to B leads to C, suppose मॉडल है, तो कितने A standardized, A standardized, B standardized, and C हमने करा। self-constructed one. ठीक है। Right? टोटल मॉडल में 3 हुए, जिसमें दो ऑलरेडी Standardized है और एक हमारा है। जब इसको कॉम्प्रिहेंसिवली इसको रन करेंगे तो एक बार दोबारा से EFA करने को नहीं बोलते हैं। नहीं, ये गलत है, नहीं करना। नहीं, EFA किस पे होगा? अब मैं आपको बताती हूँ EFA लोग कैसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन कैसे बना था? डेमोग्राफिक्स, स्केल A, स्केल B, स्केल C, ऐसे ही बना था, प्लस कंट्रोल वेरिएबल प्लस मार्कर वेरिएबल। EFA इन्होंने, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। A स्टैंडर्डाइज्ड है, क्या ये फिर रन करना चाहिए? नहीं। B स्टैंडर्डाइज्ड है, क्या ये फिर रन करना चाहिए? C हम बना रहे हैं, क्या ये फिर रन करना चाहिए? हाँ, खाली वो आइटम्स जो C के अंडर है उसको ले जाओगे आप EFA में, पूरे क्वेश्चनेयर को नहीं। मैम एक चीज़ और, जब उस पर EFA रन हो गया, जब जो नया बनाया पहले है, नहीं होगा ना, नया बनाया तो EFA पहले रन करना है, पायलट तो करोगे। EFA भी हो गया कंप्लीट। अब जब 3 इकट्ठे हैं, जब वो एक एनवायरनमेंट में इकट्ठे रन हो रहे हैं, तो एक का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ता ही पड़ता है, तभी तो वो एक सिंगल कॉन्स्ट्रक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो इसका सिंगल कॉन्स्ट्रक्ट में नहीं आ रहे, सिंगल मॉडल में भी एक सिंगल मॉडल में आ रहे हैं, क्योंकि एक का इफेक्ट दूसरे पे है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है, तो उस पर EFA क्यों नहीं रन करना चाहिए? व्हेन यू आर डेफिनेटली एक्सप्लोरेटरी फैक्टर है ना, क्या मतलब? when you are identifying and extracting factors for a particular For what? For a particular construct. Particular construct. Exactly. Particular construct हमारा C था जो न्यू था, उस पे हमने EFA रन कर दिया। अब जब हम CFA रन कर रहे हैं तो EFA का तो डेटा भी नहीं है, रिपीट नहीं होता डेटा, आपको पता है ना? EFA CFA में डेटा अलग होना चाहिए। जब डेटा ही नहीं है तो आप तो थर्ड स्टेज पे तो सभी को वैलिडेट कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? आपने स्टैंडर्डाइज के लेवल पे ले आए ना आपको, तो उसको आप EFA कर चुके, स्टडी रन कर चुके, स्टडी 2 में तो आप फिर से डेटा कलेक्ट कर रहे हो जहाँ पे तीनों को वैलिडेट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। मतलब जब तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, जो पूरा मॉडल है उस पर सिर्फ CFA जाएगा, उस पर EFA का कोई सेंस ही नहीं है। EFA खाली कॉन्स्ट्रक्ट पे होता है, आप मॉडल पे EFA थोड़ा रन करते हो, आपने खुद ने कहा ना कंस्ट्रक्ट पे होता है, वो आपका पहले का काम है, प्रिलिमिनरी वर्क है फॉर स्केल कंस्ट्रक्शन। EFA आपने C पे किया, आपकी फैक्टराइजेशन शेड्यूल आ गया, 3 बच्चे बने उसके 3 आइटम, फाइनल होगा, पायलट स्टडी में फाइनल। पहले 2 का तो पहले से फाइनल था, उसके लिए टेस्टिंग जरूरी नहीं थी, इसके लिए जरूरी थी, हमने कर ली। नाउ
तो भी EFA खाली और खाली scale construction. When you are exploring new factor, it is exploratory factor analysis. Only in case of new dimensions, अपने question बनाए, अपने item हैं, तब आप उन्हें factorize करें. In no other case would you apply EFA. वो गलत हो जाए. Because बाकी तो वो कर चुका है author. वो EFA CFA करके आपको दिया उसने question. अब आप उसे डायरेक्ट वैलिडेशन करनी है आपको, राइट? ठीक है जी. आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स बिकॉज यू वर आंसरिंग मेनी ऑफ माई क्वेश्चन, बट आई एम सॉरी आई कुड नॉट चेक योर क्वेरीज. आई डोंट नो व्हाट यू फाउंड फास्ट. अगर कुछ आपको रूपाली नहीं समझ आया, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन बिफोर वी कॉल इट अ डे. किसका डाउट है? Outer loading is like CFA now. आउटर लोडिंग, आउटर वेट और CFA. ये जो हमने सारी कहानियां भी बोली सारी फेयर. मेजरमेंट मॉडल मेजरमेंट इज CFA, अदर इज R. ये रह गया बताना. जो ये लाल बॉक्सेस है जो मेजरमेंट मॉडल है, दिस इज CFA. इनर ग्रीन एरोज दैट इज सेल. पाथ मॉडल. एक्सट्रैक्शन. When will be your second workshop? I will just add it to the group. Whenever we have a new workshop, I will send the invite to all of you. तो उसमें डाल देना. Ma'am, we are not in that group. We will inform you. You are in 933 now. We take snacks over there, no problem. Guys, I will try and help wherever it is possible. I will give you intimation of all workshops. Actually, thank you that you shared this with me. You have made my day, genuinely. You have made my day. Only I listened to today's session. Sorry to tell this, everybody knows. I am so thankful. आप सोच ही नहीं सकते आपकी ये बातें मुझे कितनी खुशी देती हैं और कितना energize करती हैं for the next workshop. I promised Neeraj sir that I will try my best to disseminate whatever I know. I don't know everything. Whatever I know, I will try and help you, not just through this workshop, through any data analysis groups that you are attached to. If you are attached to data analysis group, जो नीरज सर ने float किया हुआ है, Smart Success group, जो डॉक्टर अतुल शिवा एंड दी अदर्स ने float किया हुआ है, जिसके भी आप पार्ट हैं, MUS groups जो चल रहे हैं रिसर्च के, जहाँ पे भी आप हैं, we all are helping with papers, with data analysis, with whatever help we can do wherever you get stuck. So don't worry, you are, we did it very in great difficulty. हमने बहुत मुश्किल सीखा है. हमारे पास सच्ची में नीरज सर के अलावा कोई भी नहीं था, and I am genuinely thankful to him and Atul Shiva for PLSM, and beyond this सच्ची में कोई help नहीं. But आपके पास बहुत सारे लोग हैं, so don't worry, you're in safe hands and all of us can do really good papers. So